this match. Two captains, kindly line up your players. Request you to use the dugouts. Premier Techno Media proudly presents another season of Asian Cricket League with 24 franchises. That's the biggest in the country. There will be one champion after 13 days. Got players from various countries, including India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal. Towards the pitch. Captains, please note your players, please line up. We'll be walking towards the pitch to meet all the players along with our guests for this evening.
Yes, Mr. Mansoor and Mr. Niaz, two umpires, please join.
Cricket Ground, Ryan MS Dhoni Cricket Academy. Premier Techno Media proudly presents another season of Asian Cricket League. It's coming up right here in Al Rayan Absolute Cricket Ground. The first match is going to take place between Black Cat and GWC. In a while, we're going to have the tossing for the very first match of Asian Cricket League right here. Stay tuned, and we'll have two teams walking to the middle. Black Hat on my left side and GWC on my right hand side. Along with the team officials, Mr. Najmuddin and Mr. Amjad, to meet the teams. We'll be having the toss and the opening ceremony of Asian Cricket League, brought to you by Premier Techno Media and our title sponsor Just As an Auto. The season 3 of Asian Cricket League is going to start in a while at this beautiful cricket ground here, Absolute Cricket Ground, MS Dhoni Cricket Academy. Two teams, Black Cat and GWC, will be playing the first match. We have Mr. Amjad and Mr. Najmuddin, chief guests for this evening, along with officials. We'll be meeting the players one by one. Here we go. Yes, let's start. We have the two guests. Let's start from the team on my right hand side. Starting with the captain, Black Cat, Rashik, Riyaz, Sahad, Zuhaib, Siddiq, Hathi, Nisu, Ashif, Siab, Feroz, Ashik Sabzal, Anand, Vipin, Anis, Ishaq, Nabil and Jitu. So on my left hand side, GWC Arrows, Sujish Unikrishan and his boys. Starting from the captain, followed by Vijesh, Amarjit, Tony Archer, Omar, Sohail, Abish, Sri, Safrin Fahad, Shaheen, Arshi, Safwan. All the best two teams. Now request two captains. Let's go for the toss. Yes, here we go. The first tossing ceremony of Asian Cricket League Season 3. Sujish Unikrishna and Rashik of Black Cat, please be here for the toss. Sujish and Rashik.
Here we go once again, ladies and gentlemen. This is one of the biggest tournaments in the country, Asian Cricket League Season 3. And this is being brought to you by Premier Techno Media and our title sponsor, Just As an Auto. This is one of the best when it comes to a cricket tournament. 24 franchises is competing with each other in this biggest tournament in the country when we move to the end of 2024. And have a look at this ground. It's absolutely magnificent. And we'll have 16 teams vote to the next round. And they will have the pre-quarter 8 to the semi-final 4 and to the grand finale. 2 teams will be competing and there will be one champion out of 24 teams who is going to compete in this big tournament. We'll have the tournament first match, the tossing ceremony, GWCU Arrows and Black Cat. The captains of 2 teams along with Mr. Riaz from Victoria Travels, please be here. Sujish and Rashik, if you can please come forward for the toss. Rashik is going to spin the coin and Sujish is going to call. Yes, Rashik, you can spin the coin. Sujish, you have to call. Tail is the call. And tail it is. First match, Sujish, you won the toss. What would you like to choose? Yeah, we are going to ball first. Any particular reason? And absolutely no wind flowing in this ground at this moment. So you'll be putting up a decent score for the opposition team. Yeah, we have a very balanced side, so I believe like we'll ball first and we'll try to restrict them as low as possible and we'll chase it. That's what we are planning. All the very best for your first match. Rashik, first match, you are batting first. What is the score you will be looking at? 50 to 60? Inshallah. Rashik is a little disappointed with that losing the toss, but they are going to bat first. All right, thank you so much and all the very best. News from the center is, after winning the toss, GWC Arrows Sujish Unnikrishnan has elected to ball first. So over to the commentary box, Mr. Chirag. थैंक यू शैलजाल सर। आए हुए सभी खिलाड़ियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एशियन क्रिकेट लीग के सीजन 3 का ये पहला मुकाबला जहां पे दोनों टीमों ने कमर कस ली है एक बड़े बैटल के लिए, और ये बड़ा बैटल थोड़ी देर के बाद अब शुरू होने जा रहा है। हम इस पूरे टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण आपके साथ लेके आ रहे हैं MS धोनी क्रिकेट ग्राउंड दोहा कतार से। आप सभी को ये सारे लाइव एक्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। हमारे साथ ACL दोहा यूट्यूब चैनल और दूसरी जगह ऑल द वे फ्रॉम इंडिया श्री लाइव आपके साथ जुड़ चुके वालिद 11। स्वागत है सर तुमसे ही, वेलकम। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि पिछले साल की बहुत सारी हमने जो इंजॉय की और उसी के साथ अब ये जो सारी मैचेस है आपको लाइव देखने को मिलने वाले। पहला मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रहा है, तो आप कहीं ना जाएं, आप लाइव एक्शन इस पूरे मैच का देख सकते हैं श्री लाइव वीडियोस। और दूसरी जगह आप देख सकते हो इस पूरी टूर्नामेंट को ACL दोहा कतार यूट्यूब चैनल पे। शिलजार भाई आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपको मिलकर बहुत खुश हुआ है। वेलकम बैक टू कतर। 1 साल के बाद आया है, आप बिल्कुल नहीं बदला है, लेकिन यहाँ का मौसम तो बदला है, ग्राउंड भी बदला है। यू हैव अ फैंटास्टिक ग्राउंड, इट लुक्स मैग्निफिसेंट अंडर द लाइट्स। Absolute sports ground, one of the best arena to conduct cricket tournament, and we're going to have 2 very strong teams. First match of Asian Cricket League Season 3, brought to you by Premier Techno Media and our title sponsor, Just Us and Auto. And you have so many sponsors for this. We're going to come back on, but we're going to reveal something very, very special for those players who will play an important role in this tournament right after this match. Stay tuned and welcome everybody to Absolute Cricket Ground, Al Rayyan, Qatar, to watch the first match of Asian Cricket League Season 3 between Black Cat and GWC Arrows.
News from the center is Sujish Unnikrishnan has won the toss and he elected to bowl first. There's a 6 overs match. We'll be starting the proceedings few minutes from now. Sujish, please gather your players, and Rashik, the captain of Black Cat, get ready with your opening batters. He will have some prizes as well. We'll announce that when we move on with this, the first day of Asian Cricket League Season 3, brought to you by Premier Techno Media. And our title sponsor, Just Us an Auto, have 24 teams participating in this 6 overs match. Let's have a look at the sponsors for this. Apart from the title sponsor, we have associate sponsors, plenty of it. Justice in Auto as the title, and you have the associate sponsors, BK Freight, Mabu Trading, Icon Training Center, Gulf Plant Trading, Creative Edge, Sixer Supremo, Symphony, Printech, strategic partner Red Apple, supporting sponsor A Plus Contracting Trophy, being brought to you by Tandura King Restaurant. A venue partner Absolute Sports. Star of the day, Ibad Sports will be giving away to one man from every day who's going to be the stars of today, the Star Performer Award. It's going to be very first time in Qatar in a tournament. Is going to be rewarded as Star of the Day, which is brought to you by Ibad Sports. Gift partners, EcoFresh, Wada Trading, Al Noor Trading, Food Art Restaurant, Gift Shop, MJ Sports, Motorola, ID Optics, Pranav Sports, Ibad Sports, DY Sports, Calicut Rahmat Restaurant, and Nayab Indian Athar. Thank you so much, all the sponsors. Kindly have a look at the time allotted per innings on the screen right in front of the commentary box. And alongside with me, my co-commentator, Mr. Samiullah Kevi. Welcome to Asian Cricket League Season 3. Thank you, Shelzar. Once again, welcome all to the
prestigious cricket tournament. Over here, Qatar Premier Technomedia presents Asian Cricket League 2024 ACL Season 3, sponsored by Justice and Auto. Yes, all set to go. Once again, a very good evening, Mr. Chirag on the com box. We're starting the proceedings a minute from now. Two opening batters are all set to go. Yes, umpire, please give us a moment to start the first match. At 7:38 p.m. Yes, all set to go for the first match. Black Cat batting for 6 overs. Matt Ashif on strike and Rashik captain on non-strike end, and GWC Arrow is going to start the bowling with Sohail. Main umpire Mr. Manzoor, and on square Al Qatar. Let's make a part in ACL Doha as brings the live action of all the cricket matches right from the very first match. And the lefty, Rashik. That's a good shot, straight to the man, just maybe mistimed it at the first boundary of Asian Cricket League Season 3. It's from the captain of Black Cat. He saw the little bit of half volley and
Let's continue with this very good line and length. Sohail. So Black Cat with that boundary. They move to 6-4 no loss. 1 ball to go to complete the power play. Over number 1. 2 opening batters, Ashif and Rashik. As pace off, no signal from the umpire. That's the end of the power play number 1. And Black Cat moves to 6-4 no loss after the very first over. And those people just walked into this ground. The news during the toss was Sujish Unnikrishnan, the skipper of GWC, had won the toss and he had no hesitation to bowl first against the Black Cat. Two umpires was controlling this game, Mr. Niaz and Mr. Manzoor. I request all volunteers, officials, please be on the boundary line. You can watch the live action. ACL Doha brings all the live action of this cricket tournament. Just started here, 6:40 p.m. 4 matches to be played, being the first day of this tournament. At this moment, it's 25 degrees Celsius. Beautiful weather. Just the beginning of the winter in Qatar. And we're going to watch another 13 days of cricketing action to find the best team out of 24 teams from all over Asia. We'll have 4 different countries, including India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, and in fact in Nepal as well, 5. And Black Cat after the first over, 6-4 no loss, and Rishad to bowl the second one. यस मैच को स्टार्ट किया जाए. ऋषाद दूसरा ओवर लेके आप देख रहे हैं एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये पहला मुकाबला जहाँ पे टॉस जीता था जीडब्ल्यूसी ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया था टीम को. तो ये ओवर नंबर आता हुआ दूसरा. गेंदबाजी के लिए तैयार. राइट साहब, ओवर द विकेट. नवाज भाई स्वागत है आपका भी. ऋषाद ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इसे ऑन साइड में ढकेला जब तक फील्डर वहां से फील्ड करे. 1 रन. दोनों प्लेयर्स ने जिस प्रकार से अपने छोर को बदला, 1-1 रन से गाड़ी आगे बढ़ती हुई. स्कोर की बात करें, स्कोर जा पहुंचा 7 रन. 7 ऑन बोर्ड. नो लॉस. आसिफ और ऋषाद. थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है. इसी कारण हमेशा हम बात करते हैं कि थोड़ा सा हर बार फील्डिंग को चेंज करना पड़ता है. 6 ओवर के मुकाबले 30 मिनट आपको दिए गए. इस 30 मिनट में आपको 6 ओवर कंप्लीट करने हैं फर्स्ट इनिंग में. इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश. गेंद हवा में, कीपर नीचे आएंगे. बॉलर को विकेट कीपर का सहारा मिलता है और विकेट नंबर 1. पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ. आसिफ बैक टू द पवेलियन. विकेट नंबर ये पहला. देखिए आप देख सकते हैं ये गेंद की अगर लाइन देखे, थोड़ा सा ब्लाइंड स्ट्रोक के लिए गेंद की लाइन को ना देखा और गेंद ऊपर चली गई, विकेट आता हुआ. और ये पहला झटका. थोड़ा सा अपने आप से नाराज होंगे बल्लेबाज, क्योंकि गेंद को अच्छी तरह से खेल सकते थे लेकिन नजरें हटा दी थी. हम हमेशा जब हाईवे पे जाते तो हमेशा पढ़ते, नजर हटी दुर्घटना घटी. Absolutely, that was the leading edge and he had to go for that shot
And little bit of timing mistake, he has to be back to the pavilion. At the first wicket of day number 1, Rashid still there, the captain, and new batter joined there in the middle. Jersey number 9, Anand. आनंद आए नए बल्लेबाज, अब क्या ये आनंद अपनी टीम के लिए आनंद दे पाएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि पहला झटका लगा। आइकॉन प्लेयर है इस टीम के, और आइकॉन, जब हम आइकॉन की बात करते हैं चंद्र भाई, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को लेके वो आगे पकड़ जाना पड़ता है। तो उस जिम्मेदारी का बोझ अब उठाना होगा, क्योंकि पहला झटका, शुरुआती झटके जब जल्दी लगते हैं तो थोड़ा सा वहां से उभरना आसान नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में जब अच्छी गेंदबाजी होती है तो शुरुआती झटके ये होते हैं। ओवर नंबर चलता हुआ ये अब तक दूसरा, ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन पहले मन बना लिया था कि गेंद को कहां पे खेलना है। हम हमेशा कहते हैं कि पहले मन बनाने ला ये क्रिकेट में शोभा नहीं देता, क्योंकि जैसी गेंद वैसी नसीहत। हम हमेशा कहते हैं अगर खराब गेंद है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन बल्लेबाज ने पहले ही ठान लिया था कि भाई सिंगल के लिए जाऊंगा। गेंद और बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, डॉट गेंद आती हुई, प्रेशर अभी भी बरकरार। इस बार सीधा जड़ में, ये अच्छी गेंदबाजी है। हम हमेशा कहते हैं जब गेंदबाज विकेट ले लेता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है, वो आसमान वाला कॉन्फिडेंस होता है, और यही दिखाते हुए गेंदबाज कि मैंने विकेट लिया है तो मैं अब हावी होने वाला हूं। तो अब यहाँ पे गेंदबाज की तारीफ करूंगा, जिस प्रकार से लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे, तारीफ। इस बार ये फुल टॉस, लेकिन नो बॉल, ओ नो नो वाली ये कहानी। इसका मतलब है, जैसे हम कमेंट्री में हमेशा कहते हैं कि भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना, ऐसी वाली ये गेंद होगी। इसका मतलब फ्री हिट, और ये क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि प्रेशर जो बढ़ रहा है। सर हमेशा कहते हैं जब ये प्रेशर किचन में होता है, कुकर में, तो सीटियां बजती है, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्या इस गेंद पे बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाएंगे? स्कोर की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 8 रन। जो लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, उस प्रेशर को थोड़ा सा हल्का करने का प्रयास बल्लेबाज आनंद कर सकते हैं। आनंद के लिए ये गेंद आनंद देने वाली हो सकती है। शिलदार भाई सही बोला आपने। नाउ दिस गोइंग टू बी द फर्स्ट फ्री हिट ऑफ दिस टूर्नामेंट, लेट्स सी। इस बार पैर को पकड़ना चाह रहे थे और गेंदबाज को आशीर्वाद दिया है आनंद ने, कहा जुग जुग जियो मेरे लाल, और ये गेंद आउट ऑफ द पार्क। ये पहला सिक्सर है इस टूर्नामेंट का, और देखिए एक चौका भी लगा, सिक्सर भी लगा। इसका मतलब है ये सिक्सर सुप्रीमो के बॉल बहुत दूर 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 तक जाने वाले हैं। केतन सेठ ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो सिक्सर सुप्रीमो के बॉल हम यूज कर रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। स्कोर कार्ड की बात की जाए, 2 ओवर यहाँ पे नहीं अब तक समाप्त हुए, आखिरी गेंद आनी अभी भी शेष है। 14 लॉस ऑफ 1, और गेंदबाज ने यही गलती की कि वो पैर पकड़ना चाह रहे थे, और बल्लेबाज ने कहा थैंक यू वेरी मच। सिलदार भाई Yes, I was just going to say that Chirag, he said thank you so much. It was drifting towards his leg side and Anand complete use of it. इस बार अब ये बल्लेबाज कह रहे हैं कि मैं बड़े स्ट्रोक की तलाश में जाना चाह रहा हूं, लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन, विकेट। न्यूटन का लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन, और यही हुआ। पहले गेंद पे आपने मुझे छक्का मारा, नो डाउट, लेकिन अगले गेंद में आपको मैं टाटा बाय बाय कहने वाला हूं, और यही हुआ। आनंद की पारी, यहाँ पे एक शॉर्ट एंड स्वीट पारी समाप्त होती है शैलजार भाई, और एक विकेट लगता हुआ, विकेट नंबर दूसरा, 14 लॉस ऑफ 2। Yes, they got couple of big blows, and Anand is one of the finest player. He got a big 6. He wanted to clear that long on region. Just safe pair hand of Tony Archer, making no mistake. He got the second wicket as they decided. The captain, as soon as they won the toss, Sujesh says, I'm going to bowl first. And if you look at the weather condition here, Chirag ji, absolutely no wind flowing. Yeah, kuch hawa nahi nazar aa raha hai abhi tak nahi hai. So we'll have to wait and see. So they'll have to really work hard to clear the mid wicket and long on to get those big sixers. जरूर हम सिक्सर्स भी देखना चाहेंगे बहुत सारे, लेकिन मैं फिर से एसीएल कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले साल जो उन्होंने भरोसा जताया था हम पे, इस साल पे वही भरोसा जताते हुए जयसल भाई टीम, रमजी भाई, रियाज भाई एंड ऑल टीम, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि यहाँ इंडिया से यहाँ पे जो न्योता मिला है उसके लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आसान नहीं होता। और देखिए एशियन क्रिकेट लीग का ये
भव्य दिव्य आयोजन और जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, मजा आने वाला है नो डाउट। ये टूर्नामेंट एक बड़े लेवल पे ले जाने का काम जिस प्रकार से एसीएल कमेटी हर बार करती है, कुछ ना कुछ अलग देने का काम वो करती है। पिछले साल की हम बात करें तो आइडल क्रिकेट ग्राउंड पे थे, लेकिन इस साल ये ग्रीन लश ग्राउंड ये थोड़ा सा मन भाता हुआ सर, मजा आने वाला है। एब्सोल्युटली, बहुत मजा आ रहा है। जब आप ये ग्राउंड को देखा था चिराग भाई, जस्ट लुक्स लाइक चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बैंगलोर। Oh, that's very wide, and Mansoor said it's an wide. So we'll have to wait and see what is the pass score in this 6 overs match. We just mentioned about the wind. It's pretty quiet here. It's beautiful atmosphere. Just 26 degrees Celsius in Qatar. The players are going to enjoy it out there in the middle. Oh, Arshid, you beauty. That was a perfectly executed delivery. Left-hand batter wanted to play towards the mid-wicket. A typical left-hand batter score, but it's beaten with the pace. It's probably looked like an outswinger. Around the wicket. Oh, in the air. Who wants this? One of the spectators can catch that. Oh, have you dropped it, buddy? It was into the stand. Stand and deliver. What a good shot. Just talking about the left-hand batter. Flick of the wrist. There's not enough pace in the deli. Still he was managed to deposit through the mid-wicket. What a big six it was. We saw one from Anand. Flick of the wrist towards the fine leg. This occasion, it's a left-hand batter. The glorious one. Rashid, 12 from 5. As we want to go for the similar towards the mid-wicket for the left-hand batter now. Beaten. It's a good comeback by the bowler after being punished towards the mid-wicket. Huge six. As we know, there will be one player, star of the day, which will be announced after the 4 matches every day, and he'll be rewarded as well. So watch out for this big sixes, watch out for the big batters. Oh, that's a beauty. Chanson's beaten the man in mid-wicket. Just looked like it was going to go into his hand, and umpire raised his hand. That's another 6. He's feeling the pressure. Arshid, 4 deliveries, 13 runs already conceded. And Rashid, the skipper, is in the role now. He has lost a couple of big wickets here, but have a look at this one. If you're watching the screen there, there's nothing wrong with the delivery. The timing was perfect, right in the middle of the bat. And absolutely superbly executed. Another shot. सर राशिक जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक गेंदे के लिए 7 रन बनाए, 18, 257 के ऊपर इनका स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब ये तोड़फोड़ करने वाले बल्लेबाज है। 6 ओवर का मुकाबला है तो 6 ओवर के मुकाबले में कम से कम 60 प्लस ये स्कोर होना चाहिए इस ग्राउंड पे। यस, अशद की ये गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने। इस बार थोड़ा सा ये गेंद को पीछे रखा, बल्लेबाज के रीच में नहीं दिया। डॉट गेंद आती हुई। गेंदों की बात की जाए तो गेंदे हुए अब तक 5, और इन्होंने जिस प्रकार से गेंदबाजी की अब तक 13 रन खर्च किए अर्शीद ने। ये ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे तीसरा स्कोर कार्ड पे लगे 27, लॉस ऑफ 2। इस ओवर के बाद टाइम आउट आएगा, ये ध्यान में रखिए। टाइम आउट रहेगा 2 मिनट का। और ये अंदरूनी किनारा था, लेकिन गेंदबाज यहाँ पे लकी नहीं रहे। लेकिन ये क्रिकेट में फुटबॉल ये मोए मोए हो गए। जिस प्रकार से गेंद को फील्ड करना था, लेकिन ये गेंद जाता हुआ। ये देखिए अंपायर कह रहे ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, और ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा। इसका मतलब यहाँ पे अब स्ट्रेटेजी बनने वाली है, क्या प्लान है, गेम प्लान है,
वो डिस्कस होंगे। लेकिन सर जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, पहला मुकाबला जहाँ पे ब्लैक कैट्स और GWC एरोज आमने सामने है, टॉस जीता था GWC एरोज ने और पहले फील्डिंग करने का न्योता लिया था और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए ब्लैक कैट के लिए। तो ब्लैक कैट ने अब तक 3 ओवर में 31 रन बनाए, हालांकि 2 विकेट जल्दी खोए, लेकिन अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम राशिक की बात करें तो 9 गेंदों में 22 पे खेल रहे हैं। दूसरी जगह उनके पार्टनर सहद तो अभी अभी आए, वो उन्होंने अब तक खाता नहीं खोला है। इसका मतलब है ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। Absolutely well said, Chirag. And having a look at the first half of this game, 31-4-2. So you're talking about 3 more overs. They can easily score another 30 runs, 35 runs शायद हो सकता है। सर ये देखिए, आज ये पहला दिन है टूर्नामेंट का, लेकिन दर्शक खचाखच भरा हुआ ये MS धोनी क्रिकेट ग्राउंड, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें, दर्शकों का हमेशा ही सपोर्ट ACL को रहा है। क्योंकि हम बात करते हैं सारे जो दर्शक इंजॉय करते हैं, ये एक हम कहें कि क्रिकेट का उत्सव है और इस क्रिकेट के उत्सव के लिए हमेशा ही काफ़ी सारे दर्शक यहाँ पे आते हैं। जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पे जाके बैठते हैं और इंजॉय करते हैं इस क्रिकेट के महाकुंभ को, और मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये पहला दिन है, पहले दिन में बहुत सारे बड़े बड़े मुकाबले आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो मज़ा आएगा। और 3 ओवर की समाप्ति 31 रन, ये देखिए हमारे सीनियर खिलाड़ी भी यहाँ पे आके मज़ा ले रहे हैं, जो नन्हे मुन्ने वो ले रहे हैं, फैमिलीज आई है वो भी यहाँ पे इंजॉय कर रही है। और ये टेक्नो मीडिया का स्टैंड हर बार कुछ अलग होता है, हम हमेशा कहते हैं, वो वहाँ पे होता नहीं है, बनाते हैं, और जब ये बनता है तो वो भी हाउसफुल हो जाता है, मज़ा आता है। और ये अब ये तो शुरुआत है, आगे आगे तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारे सरप्राइजेस है, वो सरप्राइजेस को भी हम ओपन करने वाले हैं। वो सरप्राइजेस क्या होंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं एशियन क्रिकेट लीग। अब ये टाइम आउट खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 53, 52 ये अब ये जहाँ पे काउंटडाउन है, इसका मतलब है अब फील्डिंग को आपको सजाना होगा। 3 ओवर 31 रन, ये कमेंट्री बॉक्स आप देख सकते हो हमारा, जहाँ पे शिलदार भाई हमारे साथ है और समीउल्लाह सर हमारे साथ है, हमारे रौब भाई आपको देखने को मिल रहे हैं, और मैं चिराग मेहर, मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि हमें थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहने की आदत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये बहुत सारे हम देख रहे हैं, हमारे सारे ये टेक्नो मीडिया के सारे हमारे ACL कमेटी के सारे मेंबर्स जो काफ़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करके इस टूर्नामेंट को एक बड़े लेवल पे जाते हैं। तो मैच शुरू होने जा रहा है। ओवर नंबर 4 शिलदार भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर 3 ओवर 31 रन, आपने कहा था कि 35 ओवर जोड़ेंगे तो मज़ा आएगा, 6 ओवर का मुकाबला है, मज़ा आने वाला है इस मैच में। Absolutely. Now we'll have to wait and see for the next 3 overs whether they're going to come back strongly. Now after this 3 overs halfway down, now the new bowler has been introduced. It's Umar over the wicket. That is a brilliant ball. It's not allowed to freeze his arm. He was looking to target. Sahat is one of the very, very experienced campaigner. I have seen him playing in plenty of tournaments, in ideal ground and many tournaments. He is one of the player who can change the momentum of any matches single-handedly. Now this is a big game for him. It's the first match. They would be looking forward for the big victory against GWC Arrows. Here we go. Not enough power and timing, just grabbing a single on this occasion. Brings back the man in form is Rashik. 22 from 9, 2 magnificent sixes and boundaries under his belt. He is the one who would be looking to stay there right till end of this innings to make some decent score. And let me tell you, Chirag Bhai, if they'll manage to score 60 to 65 runs, this will be very, very tough to chase. सर ये पहला मुकाबला है, हमने इस ग्राउंड पे इस बॉल से मुझे लगता है पहले कभी खेला नहीं है, तो आज हमें थोड़ा जो कुछ अलग कुछ देखने को मिल सकता है। हम यही सोच रहे हैं कि एक अच्छा मुकाबला, दोनों टीमें पहला मुकाबला खेल रही है तो थोड़ा प्रेशर होगा, नो डाउट, क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं आमने सामने। फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद थोड़ा सा धीमा था, गेंद को सिर्फ दिशा दे दी और गेंद नहीं रुकने वाली है। आता हुआ ACL चौका, 4 रन मिलेंगे, रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ये गेंद थोड़ा सा धीमा करने की कोशिश गेंदबाज उमर ने की, लेकिन उमर की ये गेंद थोड़ा सा बल्ले पे आगे चली गई और राशिक ने कहा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि 10 गेंदे खेले यहाँ तक राशिक ने 10 में 26 बनाए, 260 के ऊपर इनका
अब जिस प्रकार से ये स्ट्राइक रेट है वो आगे बढ़ता हुआ. Brilliant hit. Typical left-hand batter shot. फिर से पैर पकड़ने की कोशिश, वहां पे फील्डर है लेकिन मौका चूका. 4 रन. इफ्जल भाई आपका भी स्वागत है. इफ्जल भाई हमारे हमेशा ही खास रहे, उनका भी स्वागत है कमेंट बॉक्स में. इफ्जल भाई आपका स्वागत है. लेकिन देखिए उनका स्वागत कैसे किया. एक बड़े प्लेयर है, ये बड़े स्ट्रोक के लिए ही जाने जाते हैं इफ्जल भाई, और उनका स्वागत भी चौके के साथ किया. इफ्जल भाई आपका स्वागत है. वेलकम सर. स्कोर मूव्स ऑन 40 रन. अब ये जिस प्रकार से आग के गोले बरसाए जा रहे चौके के साथ. अब 11 में 30 पे खेल रहे राशिक. स्कोर की बात करें 40 रन इस ओवर की कहानी. 4 गेंदों में अब तक 9 रन अब तक आ चुके हैं सर. तो मजा आने वाला है, मुकाबला तगड़ा होने वाला है, नो डाउट. Yes, here we go. Change the angle. ये थोड़ा सा गेंद जिस प्रकार से खेला, अंपायर ने कहा इट्स अ नो बॉल. ओ नो नो, इसका मतलब ये बीमर है. गेंद जिस प्रकार से कमर के ऊपर थी, अंपायर ने कहा ये खराब गेंद है और ये बीमर, नो बॉल. स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब 42. The second free hit chance. It's going to be Sahad on strike. Can he clear the boundary? It's quite capable shot man. It's plenty of timing. It's a very good batter up front. For any team, you have 24 teams participating in this big tournament. Here's the first match. And welcome everybody once again to Absolute Sports Ground. Here we go. Free hit. I got to reload this one. It's been called wide. I've seen some spectacular cricket actions already. Now we're just going to finish the first innings. Free hit continues. The last delivery was wide. You can have a look at the huge LED screen on the left hand side. Oh, beautifully done. Just talking about the timing of this man. Sahad, thank you so much. Slightly drifting towards legs and is pulled away in style towards the deep square leg region. What a good shot. This is how you punish. It was well driven, but maybe he missed his line on this occasion. Drifting towards his leg side and is very, very strong on an outside. Shahad at the team 50. 49, now 1 to go. Just thought for a while चिराग जी उसने 50 हासिल किया, लेकिन 1 more to go. सर सहर ने भी कहा है कि मैं भी अभी इस पार्टी में ज्वाइन होना चाहूंगा, क्योंकि राशिक जिस प्रकार से बल्लेबाजी करे, लाजवाब बल्लेबाजी नो डाउट. 49 लॉस ऑफ 2 ओवर नंबर 4 बीच मैदान पे. ये लोअर फुल टॉस गेंद और इस बार गेंद जाती हुई 4 रनों के चौका. 53 ऑन बोर्ड. ब्लैक कैट्स ने कहा कि हम अब रुकने वाले नहीं. 4 ओवर की समाप्ति, 13 के ऊपर औसत है और मजा आने वाला है इस मुकाबले में. सर हम 65 तक जा रहे थे, अब ये 70 प्लस की तरफ जा रहे हैं. Absolutely, it's raining 6s and 4s at this moment. That's perfectly executing this partnership between two very strong players. Sahad, as we know, is one of the dangerous when it comes to the middle order. I've seen him playing in many matches, different franchises. Now is batting there as one of the Black Cats. They may be batting first as the opposition team captain went to go for the bowling, and they are completely taking the advantage. It looks like they're going to go much more ahead than the past score on this ground. As Chirag mentioned earlier, this is too early to say. It's the first match of this tournament. We'll have to still wait and see what is going to be the past score here. We've got professional players. We're talking about 24 teams. We'll have to count the number of players who are playing in this tournament. 4 to 5 different countries. And this is the biggest in Qatar when it comes to tennis ball tournament. And we will have a biggest surprise for a tournament. Right after this game, we are going to reveal something very, very special.
And 2 dugouts for teams. Please make use of it. Oh, it looked like helicopter. He was trying to go mid-wicket. Oh, maybe missed few inches. He was dangerously running towards that. Has already finished the team 50. They moved to 54 for 2 from 4.1 overs. And this partnership is threatening. So Rishad into his second over. As expected, Sujis to bring his strongest weapon. Tall man, he needs to break this partnership. Oh, beautifully done. It's a magnificent save. Oh, what a good catch. The spectator there. It was aerial, it was handsome, and it was well executed. Stand and deliver. Another 6 from this man. Beautifully done, Chirag. सर अब लग रहा है अब ये दिवाली खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये दिवाली के फटाके मैदान के अंदर फूट रहे हैं. जिस प्रकार से ये छक्के लग रहे हैं, सिक्सर का बॉल रास आया है बल्लेबाजों को और बहुत बड़े बड़े सिक्सर देखने को मिलते हैं. 60. ये इस बार गेंद थोड़ा सा दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके. स्कोर की बात करें, स्कोर कार्ड पे लगे अब 61 लॉस ऑफ 2 ओवर नंबर 5. सर हम 65 तक जा रहे हैं, 70 अब ये 75-80 तक जाएगा स्कोर, ऐसा लग रहा है. It looks really threatening, really threatening. Sujish Unnikrishnan, the opposition team captain, would be thinking now. Oh, who wants it? Who wants this? It's over the man. It's over the long on. It's a beautifully executed another 6. What a good timing. It created a beautiful sound from his bat as well. सर एसीएल टीम के लिए अब ये थोड़ा सा काम बढ़ता हुआ, क्योंकि गेंद काफी दूर दूर जा रही है, काफी बड़े बड़े छक्के लग रहे हैं और ये सारे एसीएल के अब कमेटी मेंबर गेंद को जल्द से जल्द मैदान पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर, क्योंकि इनके लिए अब ये बहुत बड़े बड़े सिक्सर लग रहे हैं. It's raining sixes and boundaries, and this partnership, captain needs to think differently. He needs to break this part. They're going to go some big score. What has done is he really disturbed the focus of the bowler. Sahad he was already changed, or he was decided to go for a reverse sweep maybe. He's trying to do something very different. He has been successful in terms of executing those shots towards the mid-wicket. Sahad is playing really well. This moment at 23 from just 6. Another very good delivery. Equally well played by Sahad. Is he going to come back? Is he going to come back? Bit of fumble there. And completed a couple of more runs. Good running. Creating a lot of pressure. Lot of pressure for the bowling team now. सर अब सहर ने भी अपनी पार्टी अपनी गेयर को चेंज किया है, क्योंकि 32 पे खेल रहे हैं राशिक और अब 7 गेंद में 25. सहर खेल रहे इस बार बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा. विकेट नंबर आता हुआ ये तीसरा, लेकिन भाई ने अपना काम कर लिया. एक छोटा सा पारी, लेकिन टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण वो पारी था. अब इन्होंने रन बनाया अपनी टीम के लिए. 8 गेंद में 25 और क्या वो लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब 30 में 3 सिक्सर वहां पे उन्होंने लगाए और एक चौका. क्या ये पारी है, लाजवाब. वेल प्लेड सर. इन्होंने जिस प्रकार से गेम को चलाया तारीफ करनी होगी. ब्लैक कैट्स की बात करें 69 लॉस ऑफ 3. 5वां ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद आनी बाकी है. अब ये आखिरी गेंद पे क्या कर सकते देखना होगा, लेकिन जिस प्रकार से पारी के लिए तालियां बजने वाली है, नो डाउट. व्हाट अ बैटिंग. यही तो शुरुआत है. हम हमेशा कहते हैं सर कि पहले 2 ओवर अच्छे से खेलो और उसके बाद जब खराब गेंद मिले तो उसका फायदा उठाओ, और यही बल्लेबाजों ने किया. Yes, well done Sahad, and he deserved a big round of applause from everyone. The damage has been done, as he really mentioned. Chirag Bhai ne apna kaam kar liya. Now we'll have to wait and see how they're going to finish this one. They got runs. They got plenty of runs. Jitu has just joined there in the middle. Another big strong batter. He can become a cameo towards the end as well. ये फिर से पैर पकड़ने की कोशिश. गेंद को इस बार टर्न किया ऑन साइड पे, जहां पे है बैकवर्ड स्क्वायर लेग से फाइन लेग तक का रास्ता पूरा किया. अब यहाँ पे ये विकेट खराब दोनों में कॉलिंग और बल्लेबाज आए
और बल्लेबाज चले गए। जीतू अभी अभी आए थे लेकिन अच्छी कॉलिंग नहीं थी। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में 3 शब्द का हमेशा प्रयोग करो, यस, नो एंड वेट, हाँ, ना या फिर रुको, ये कॉलिंग होनी चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क का और क्रिकेट में कॉलिंग का काफी बड़ा महत्व है। Well said, very well said, Chirag bhai. The call बिल्कुल नहीं था. That's exactly the reason, Jitu. It's too late. It's a death over now. There's few more deliveries left in this innings. But you have to give a lot of credit to the man who just returned before this. Shahat has done a brilliant job. The outstanding performance. They got runs on the board now. To wait and see how they're going to finish this innings. Jitu is back and the new batter just joined. There is Rise. 70 for 4 after the completion of 5 overs. They are already above the pass score. I request two teams kindly use the dugouts. And you can enjoy this cricket match. A very dedicated, specially made for Asian Cricket League pavilion. Setting up a real high standard. Techno Media has always impressed everyone here. When it comes to the tournament, the execution is world class. And there's a 3rd season of Asian Cricket League. The officials, the organizers have done another brilliant job in terms of executing this. Plenty of supports from the sponsors. Just Us Anato, the title sponsor of this tournament. Thank you so much. Back to Rashik. 32 from 13. He got 6 balls to deal with. Can he get another couple of big shots? The left-hand batter all set to go. And Ranish, the final 6 legal deliveries. The first one-handed shot, biting the man. And it's racing towards the boundary. Mid-wicket had absolutely no chance. As you can see in the screen also, there were 2 fielders, deep square leg and deep mid-wicket for the left-hand batter. Still beaten them, and it's a boundary to start. It's always good to see, to start the over with the boundary. Now he got the rhythm. He got the complete freedom. He got 5 deliveries. You need to punish the rest of the deliveries. He's talking about the death over. They have all the chance to get another 10 to 15 runs here. 74 for 4. Ranish to Rashik. Another one, not enough timing on the Zuki. Still he'll be able to run. Is he going to call? Call is very important. Yes, no, and finally settle down for a single. स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 75 रन, 75। हम 60 के लिए जा रहे थे, 75 हुआ है। और अभी भी इस ओवर की बात करें तो इस ओवर की अभी भी गेंदें आनी बाकी है 4 गेंदों में 80 हमने कहा था 80 तक जाएंगे, तो 80 तक जाने की कोशिश यहाँ पे लगातार होती हुई और मजा आने वाला है इस मुकाबले में। ये रनों का अंपायर खड़ा करते हुए टीम ब्लैक कैट्स, व्हाट अ बैटिंग, मजा आता हुआ इस मुकाबले में। गेंदबाज फिर से तैयार। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है, अंपायर ने कहा यस इट्स अ वाइड, और 1 रन खाते में जुड़ेगा टीम ब्लैक कैट्स की। स्कोर मूव्स ऑन 76, लॉस ऑफ 4, 76, 4 विकेट के नुकसान पे। शुरुआत धीमी थी लेकिन उसके बाद जैसे हम डीजल इंजन कहते हैं, डीजल इंजन जब होता है तो फिर उसके बाद मजा आता है, यही देखने को मिलता हुआ। 76, लॉस ऑफ 4। इस बार गेंद को खेला है, फील्डर है और उन्होंने कहा झुक झुक जियो मेरे लाल, ये कैच को छोड़ दिया है। बल्लेबाज को एक मौका और मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 77, 77 रन, 4 विकेट, और विकेट खोए हैं 4 लेकिन 3 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। क्या राशिक अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं? क्योंकि 3 गेंदें बाकी है सर, और वो खेल रहे 37 पे, और बड़े स्ट्रोक उन्हें आते हैं खेलने, तो क्या वो वहां पे तलाश में जाएंगे? लेकिन रानिश क्या यहाँ पे रनों की गति को कम करेंगे या फिर विकेट की तलाश जाएंगे? रानिश के बीच का ये बैटल। 3 to go. इस बार घुटना टेक तमाशा देखने वाला वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं, डॉट बॉल, बिंदी गेंद आती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर चलता हुआ ये आखिरी, ये तोड़ फोड़ वाला ओवर जहां पे रानिश अच्छा कमबैक करते हुए 4 गेंदों में 7 रन खर्च किए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब तक। So far so good
for Ranish. We'll have to wait and see now. फिर से खराब शॉट सिलेक्शन, ना देखा ना परखा, सिर्फ आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में जैसी गेंद वैसी नसीहत, गेंद को देखो परखो, लाइन तक जाओ और उसके बाद वो स्ट्रोक खेलो। लेकिन यहाँ पे ये मैं कहूँगा, ये टेनिस क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि वो वाले स्ट्रोक नहीं देखने को मिलते। ऑन साइड को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश हमेशा की गई है और यही हुआ। अच्छी बल्लेबाजी की है राशिक ने, नो डाउट, लेकिन अब ये आखिरी ओवर्स में रन नहीं आ रहे सर। Absolutely, that's something, it's not a great news. He played across the line. Need to go for straight bat. Come on, buddy, you have been batting really well. 37 from 17. One good shot from your bat will change the momentum. Here we go. Oh, beautifully done. It's flying outside this ground. It's disappeared. Hey, Palish, he was looking for that. It was a full toss, but still he had to deposit right in the middle of the bat. That's how you finish things off in style. They have got runs in the board now. Black Cat, after decided to ball first against opposition captain, they have been asked to bat first. Still managed to get 83. Chiragji, I would say around 10 to 15 runs more than the par. हाँ, जो हमने यहाँ पे पहले कहा था, हमने जो भविष्यवाणी की थी वो 60-65 की थी, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है राशिक, तालियां बजनी चाहिए। 10 गेंदों में 43 की पारी, पहले मुकाबले में तारीफ तो बनती है यार। व्हाट अ बैटिंग, क्या मजा आ गया इस मुकाबले को देखते हुए। अब स्कोर बना 83, लॉस ऑफ 4, 83 पे 4। अभी भी ये जिस प्रकार से मुकाबला घटा है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर आना बाकी है। ये तो सिर्फ हम कहते हैं कि कॉइन की एक ही बाजू देखी है, अब दूसरी बाजू हमें देखनी है, क्या किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगी। 83, 84 इस टारगेट, इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड रन है वो 14 का है। तो ये 14 का रिक्वायर्ड रन रेट किस प्रकार से पूरा करेगी यहाँ पे टीम GWC एरोज, ये देखना होगा। लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं ना जाए, देखते रहे एशियन क्रिकेट लीग। ये 2 मिनट का ऑफिशियल इनिंग्स ब्रेक होगा, उसके बाद मुकाबला शुरू होगा। धन्यवाद। Yes, we'll be back very, very soon after this innings break. And also we request two teams for the next match, kindly get ready for the tossing. So 84 to win from the allotted 6 overs. We'll be back very soon. And over to Mr. Sabihullah as co-commentator. Thank you, Mr. Shelzer and Chirag. Premier Talk and Media presents Asian Cricket League Season 3, sponsored by Justus and Auto, and associate sponsor BK Fright, Marabou Trading, Icon Training Center, Gulf Plan Trading, Creative Edge, Ball Partner Sixer Supremo, Media Partner Symphony, Printing Partner Printech, Strategic Partner Red Apple, Support Sponsor A Plus Contracting, Trophy Partner Tandoora King Restaurant, Venue Partner Absolute Sports, and Star of the Day. One player will select from all 4 matches will get awarded here, sponsored by Ibad Sports, Gift Partners EcoFresh, Wada Trading, Al Nool Trading, Food Art Restaurant, Gift Shop, MJ Sports, Motorola, ID Optics, Pranav Sports, Ibad Sports, DY Sports, Kalikit Rahmat Restaurant, and Nayab Indian Attar. Thank you all the sponsors. And today the first day of Asian Cricket League Season 3. Today the first match between GWC Arrows and Black Cat.
Please note the impact player for Black Cat, Firoz in, Siddiq out. Since Asian Cricket League Season 3, the first match between Black Cat CC versus GWC Arrows. GWC won the toss and elected to bowl first. They restricted Black Cat 83 runs in 6 overs, 83 for the loss of 4 wickets. And the captain Rashik, who scored 43 not out from 18 deliveries with 5 fours and 3 huge sixes. And Sahad accompanied with him. He scored 25 in 8 bowls with 3 huge sixes. And Shaheen and Tony are the openers for GWC Arrows, and the bowler Ashif from Pavilion End into Shaheen. Once again, Ashif into Tony, the opening batsman inside of GWC Arrows. The previous ball, Shaheen took single. Excellent piece of bowling. Just defend the ball and ball back to the bowler. Once again, Ashif from Pavilion End. What a beautiful strike by Tony to the square leg region. There's the first boundary. Score moves to 5. 5 without loss. Huge hit by the batsman, but straight to the hands of fielder. There's no mistake. Tony back to Pavilion. What a piece of bowling by Ashif. Anand, the man who took the catch, the icon player of Black Cat CC. Great piece of bowling by Ashif and the man Tony, who hit the boundary, and he returned back Pavilion with 4 runs in 3 balls.
New man walking to the crease. Safrin. Joining with Shaheen. Ashif again from pavilion end into the new batter, Shafrin. Shafrin just defend the ball through the mid-off region. Single added, one more at the total, and total moves to 6 for the loss of 1 wicket. Last ball of the first over. GWC required 84 runs from 6 overs. Ashif, the opening bowler, into Shaheen. Last ball of the first over. Superb. Very good piece of batting. Straight to the hands of fielder in the square leg region. And they complete single. After the first over, 7 for the loss of 1 wicket. Today's match number 2 is Udupi Cricketers and Walid 11. I'm requesting both captains, please come to the mic point for the tossing. Udupi Cricketers and Walid 11. Salman of Udupi and the South Patel of Walid, please come to the mic point. Thank you, Mr. Samiullah. Now the chase is on. It's going to be tough, as Chirag mentioned. It's above the par score. 10 to 15 runs. Got a wicket. I need to capitalize on this now. It's all about the momentum, how they're going to go. It's one man, as you can see on his jersey. On strike now. K12, Rauf, what is there in your jersey? That is none other than one of the very popular player in Qatar in the tennis ball. That is Shaheen Qatar. He is going to be the man who needs to play an anchor innings. Very capable. It's 7-4-1 and Firoz 2. Ball this one to Qatar. Oh, he said thank you so much. First ball, stand and deliver. The way he looked at the ball as soon as he played that shot, he knew it's going to cover a lot of distance. As long of region, one of the very longest 6. It was handsome. It's maximum and first ball, punished in style. As Shaheen started off. This innings 13 now. They're chasing a big score. It's 84 runs to score in 36 delivery. It's not going to be easy. But the kind of start they got, GWS Arrows, will have to trust on this man and this partnership. Another one. Thank you so much. It's back-to-back sixes. That has been disappear. You'll have to take a taxi and go and get the ball from there. Has immense power right in the middle. Very strong man. And strong on his own side. He would be targeting. Wait for those balls will be disappearing. He got the rhythm. He got the kind of start he got in this tournament. We've seen this man playing in plenty of tournaments. This is a new beginning.
It's a new tournament, and he says, I am one of the best in the business. Oh, trying to go for a pull shot again on this occasion. It's a good comeback. After being punished for 2 6 sets, it's a good comeback by the bowler. And Feroz, these guys knows each other really well. You know the strength of Shaheen Qatar. Anything which is straight or driven towards the leg side, he's going to punish. South Patel, the captain of Walid 11, please be here for the toss. Ah, that's offside. That's a wide as called by the umpire. What is he trying to do is he's trying to bowl to his offside. That's the only way he can keep him quiet. Anything which will be on his pads he's going to punish. And he is targeting. He's got a packed leg side field. The long on. Deep mid wicket. A deep square leg. 3 fielders. Boundary riders. And you have the short fine leg there. Just trying to flick it towards the square leg. He's got a single for sure. Brings back his partner. And the leg by call by umpire. The score moved to 22 for 1. 21 for 1, make a pardon. runs conceded in this over so far. Right on the block hole. It's not allowed the batter to go. It's a fuller one. After being punished, 2 huge sixes by Shaheen. And Feroz is a good comeback. There's 1 ball to go to complete this over. As expected Shaheen to have a word with him. Just keep a cool head. You have got the runs which needed in this over. So 14 runs was the required run rate. Much above that now. Oh, was asking for trouble. Another one. That's the Yorker length, and they're sneaking a sink. In fact, 2 runs from the last delivery. Leg by call by umpire after the completion of 2 overs. GWC Arrows moved to a 23 for 1. And what they need now is 61 more runs from the remaining 24 deliveries. Requesting South Patel. Yes, we just had the toss for the next game. The only one icon player in this Asian Cricket League. He had just flown from India only to participate in this tournament at South Patel. Oh, don't go anywhere. Right after this match, we'll have a cracking contest between Udupi and Walid Sports, 2 very big teams. As we know, 24 franchises are participating in this big tournament. They have the game number 1. 2 overs completed. GWC are pretty much in the chase. 23 for 1. चिराग जी, आपको कैसे लग रहा है? सर ये मुकाबला हम अगर पहले इनिंग की बात करें तो ऐसा ही चल रहा था जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी टीम ब्लैक कैट्स, इसी प्रकार से बल्लेबाजी हो रही थी. उसके बाद 2 ओवर के बाद कहानी बदली थी. अब यहाँ पे भी ये हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से शाहीन कट्टा है, हमने पिछले साल भी इन्हें देखा है, ये बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए काफ़ी फेमस क्रिकेटर है, तो इनके ऊपर वो बड़ी जिम्मेदारी होगी. क्या वो जिम्मेदारी का बोझ संभालेंगे? ये देखिए, ये है शाहीन कट्टा. जब ये आते हैं तो ऐसे ही धूमधाम वाली बल्लेबाजी करते हैं. मजा आ गया. ये गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार. शाहीन कट्टा ऑन
फायर। शिलजार भाई ये मुकाबला समाप्त नहीं हुआ, मैंने पहले कहा कि ये तो सिर्फ जाके पिक्चर बाकी है, क्योंकि 2 ओवर में जिस प्रकार से रन बने थे 23, अब रिक्वायर्ड रन 15 के आसपास था, पहली गेंद पे सिक्सर। इसका मतलब है मुकाबले में जान डालनी होगी शाहीन कट्टा को। Oh, what a good shot. He is the man. He is the powerful striker of tennis cricket ball. Chirag, trust me, if he is in his turn, he set the tone for this match. He is setting the tone for this tournament. None other than one of the best in the business. And Shaheen Kata move to 26 from just 8 with 4 magnificent chakkas. सर वो 2007 की मुझे रवि शास्त्री की कमेंट्री, इस नंबर 2 नंबर 3 ऐसा कुछ क्या होने वाला है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करे 2 गेंदों पे लगातार 2 सिक्सर। इसका मतलब है कि अब ये शाहीन को रोकना, किस ये छोटी गेंद थी, थोड़ा सा नीचे रही, बल्लेबाज को समझ नहीं आया, उछाल नहीं थी, इसी कारण वो गेंद पे बल्ले पे आई नहीं। लेकिन इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में रन आए हैं 13। स्कोर मूव्स ऑन 35 रन अब तक स्कोर कार्ड पे। It's 35 for 1. Here we go. Swing and a miss. It's one of the rare dot balls you can see in this innings. Shaheen 26 from 10, 35 for 1. 2 legal deliveries left in this over. And what GWC arrows need now is just 49. All of a sudden this equation have changed. As Rise 12 runs conceded so far in this over. स्कोर मूव्स ऑन 36, लॉस ऑफ 1। सफरीन, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी कि क्या ये मैच को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस बार छोटी गेंद थी, फुल टॉस थी, इस गेंद को ढकेला वहां पे मतलब कि खिलाड़ी ने गेंद को उठाया और गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने चोर को बदला। शाहीन कट्टा को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्ट्राइक पे लाना ये सफरीन का काम हो सकता है सर, क्योंकि जिस प्रकार से शाहीन कट्टा खेल रहे, बल्लेबाजी कर रहे हैं। Absolutely, his job is very simple, as you rightly mentioned, Chirag. Safrin has simple job to do here. Bring as much as he can Shaheen into the crease. Here we go. स्कोर मूव्स ऑन 37, 37 पे एक ओवर नंबर चलता हुआ यहाँ पे ये तीसरा। आखिरी गेंद थी। शाहीन कट्टा भाई आज जहां पे भी खेल रहे हैं, रन इनके बल्ले से आ रहे हैं। द रन मशीन। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, 3 ओवर की समाप्ति, 38 रन लगे हैं। और अब ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ये स्ट्रेटेजिक एशियल टूर्नामेंट का यही हमने खासियत देखा है कि जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है 3 ओवर के बाद थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिलता है टीम को। तो अब 3 ओवर की समाप्ति, 38 रन। और आने वाली गेंदों की बात करें तो 18 गेंदों में 46 की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 15 के ऊपर है सर, लेकिन अगर शाहीन कट्टा रह गए तो ये कोई बड़ा टोटल नहीं है सर उनके लिए। It's all up to how he's going to continue from where he started. He's got 28 from 10. As soon as he walks in, everything has changed. Now, it's very simple for the bowling team how to get rid of this big batter. If he can get a big wicket of Shaheen, they will be coming back to this game. On the other side, he is looking really good. He is looking in red hot form. Shaheen at this moment is a pick of the player. They have all the possibility now to chase this down. Thank you, Shalzar. GWCR has scored 38 runs in 3 overs now. The target is 84 from 6 overs. Now they scored 38. 46 required in 3 overs. Shaheen, the man who's hit 4 huge sixes, and he scored 28 from just 10 deliveries. I think he can take the match towards GWC. Now, the new bowler,
Anand, the icon player of Black Cat. Shaheen, the big man on strike. Anand from Pavilion end into Shaheen. Once again, a huge hit. Try for a big hit, but it not connected well straight towards square region, and fielder took the ball easily. 1 run added, and one for Shaheen and one for the team GWC. 39 for 1. Anand again into Safrin. Full toss ball, umpire called it is no ball over the waist, and it's resulted free hit for Safrin. Let's see what Safrin can do. .44 required and 2.5. That's free hit. Far outside the off stump, umpire calls wide, and free hit continues. Anand again into Safrin. Once again it's outside the leg stump this time, and result the same. One more extra added. Total moves to 42. Anand once again into Safrin. The free hit continues. Wow, what a piece of bowling. Super bowl. That's bouncer one. Batsman completely beaten. Well collected by the keeper. Anand again into Safrin. Full toss ball, hard hit, the huge one that's out of the park. Humongous hit by Safrin. And scoreboard moves to 48 for the loss of 1 wicket. Just 36 required only from 2.3 overs. सर ये मुकाबला बदलने वाला है, क्योंकि अभी भी अगर इस गेम की बात करें 15 में 36 चाहिए, तो मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है. दोनों टीमों के लिए 50-50 चांसेस. इस बार गेंद स्टंप के बाहर थी. बल्लेबाज उस गेंद को देखना चाह रहे थे, और जिस प्रकार से गेंद की लाइन तक पहुंचना चाह रहे हैं. हम हमेशा कहते हैं, मैं जब भी कहीं पे भी कमेंट्री करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि बल्लेबाज को उसका काम करना चाहिए, अंपायर को उनका काम बखूबी आता है. और यही कहना चाहूँगा कि क्रिकेट के प्रति हमेशा ही सद्भावना रखें, क्रिकेट के प्रति हमेशा ही रिस्पेक्ट रखें. अंपायर हमेशा ही अच्छा काम करने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं, और यही अंपायर ने कहा कि भाई आप जिस प्रकार से अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें देखी जाती है. सही है. वाइट की हम जब बात करते हैं सर, इस बार गुस्सा है बल्लेबाज को, और ये गेंद को आउट ऑफ द पार्क. ये छक्का नहीं अट्ठा, ये सिक्सर की गेंद है. और जिस प्रकार से ये ट्रैवल हो रही है, हमारे सारे जो एसीएल कमेटी के जो अब सारे मेंबर्स हैं, उनके लिए सरदर्द बन चुका है, क्योंकि गेंद काफी दूर दूर तक जा रही है. ये सिक्सर सुप्रीमो की गेंद है. केतन भाई सेठ जो इंडिया से है, इन्होंने इस गेंद को स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट के लिए. और स्कोर की बात की जाए 54 रन हो चुके हैं. आप रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो आने वाले 13 में चाहिए 30. 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है. मजा आने वाला है, मुकाबला तगड़ा होने वाला है, नो डाउट सर. As what you said, पिक्चर अभी बाकी है. 30 required only from 2 overs. Once again, a huge hit from Safrin. Third one in the row. Superb batting by Safrin. That scoreboard moves to 60.
अब सफरीन ने कहा कि भाई मैं शाहीन कट्टा के साथ अब जुड़ने जा रहा हूँ। शाहीन कट्टा की बात की जाए 11 गेंदें इन्होंने के लिए 29 रन बनाए, सफरीन ने 11 गेंदें खेली, इन्होंने 20 बनाए। दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो सफरीन ने 3 छक्के लगाए और शाहीन कट्टा ने 4। इसका मतलब है इस मुकाबले में सिर्फ छक्के के ही बात बोली जा रही है, छक्के का पाड़ा पड़ा जा रहा है, 6 का पाड़ा पड़ा जा रहा है और मजा आया। ये पहला मुकाबला है, लेकिन जिस प्रकार से रन बरस रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, अब हमारे रोप भाई हमें बताएंगे कि किस प्रकार से रन बनने वाले हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट सिक्सर के लिए ही जाना जाएगा, सिक्सर सुप्रीमो बॉल के लिए भी जाना जाएगा और बल्लेबाजों के सिक्सर के लिए भी जाना जाएगा। सर Absolutely, Chirag. As you said, like the match is going in the hands of GWC Arrows now. 24 requests, 12 per over. The match was 14 runs required per over. Now it's reaches 24 in 2 overs. Yes, thank you, Samir. We are talking about the sixers. Let's talk about the vehicles which is parked outside this park. So please make sure you utilize the maximum parking space. You shouldn't have crowded the cars there. The reason is Shaheen Qatar is producing all the sixers. It might damage your cars. So please park your cars away. I tried to flick this one, probably missed the timing on this occasion, and they don't really mind it. As soon as he got this run, he was very happy to go towards non-strikers. And क्योंकि जो अगला खिलाड़ी है on the other side, Safrin is also started hitting the ball. ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को हम कह रहे हैं कि वो लय मिली है, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक की तलाश में दोनों ही जा रहे हैं। अब यह ऐसा नहीं कि सिर्फ शाहीन बल्लेबाजी कर रहा है, सफरीन भी जा रहा है, वो भी बड़े स्ट्रोक खेल रहा है। इसका मतलब है आग दोनों जगह लगी है सर, और इसी का कारण है कि बल्लेबाज अब स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। सफरीन ऑन स्ट्राइक। इस बार यू मिस मी, आई डेफिनेटली हिट यू, गेंद अंदर और दंडी काफी बाहर। Wicket. Absolutely prompt. That is, you have a look at this lights coming from that stumps. You miss and I hit. That's a Firoz, a much needed breakthrough. 1.2, 13 runs considered and a big wicket of Safrin. And when he walks back to the dugout, he's got already job is done. He just need 23 runs from 10 balls. And Shaheen Qatar is still there out there in the middle. Has got some beautiful sixes. We have seen him 29 just from 12, 4 magnificent sixes already from Shaheen. What GWC Arrows require now is just 23 from 10 deliveries. सर पिछले साल की भी हम GWC एरोज की बात करें, बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। ये सिंगल डबल्स को ज़्यादा नहीं खेलते, लेकिन बड़े स्ट्रोक इनकी खासियत रही है। इस मुकाबले में भी यही देखने को मिलता हुआ। 12 गेंदों में 20 की पारी, सफरीन के लिए तालियां बज रही है और मजा आने वाला है। अब आने वाली गेंदों की बात की जाए, 10 गेंदों में 23 चाहिए। शाहीन कट्टा अभी भी नॉन स्ट्राइक पे है और फिरोज अब तक 13 रन दिए और 1 विकेट इन्होंने हासिल किया है। मजा आने वाला है मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला अब बदलने वाला है। उमर नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, अब ये नए गए हैं। It's all up to the new bowler now. Now how we can deal with the new batter just joined, Umar. Firoz has got a wicket which was really required at this point. Shaheen is on non-strikers end. Good news for the bowling end is you got a new fresh feed there. I'll try to stop the single. They'll definitely want to stop the single. They don't want Shaheen Qatar into the batting crease. Black Cat are into the chase. Right in the block hall, and umpire is calling that's another no ball. It's going to be another free hit. They overstepped, yes. This is going to be a bit of worry for the bowling team. Sujish Unnikrishnan, the skipper, will have to try and do something very different. They are trying to defend a decent score, more than the par score in this ground, but have a look at the batting performance. Shaheen, the one man who stood out there like a rock, he is in very good form. And the alarm for the free hit. And it's going to be Shaheen. Try to pull that towards, it's one of the favorite region in this ground, but probably missed.
Got 4 sixes already. Now was looking forward to get that 5th one under his belt. Having a look at this chase now. It's going to be an absolute thriller. This is not going to be easy. And one dot ball, another dot ball if Firoz can produce, he can really take up this challenge. Now this is an important, very, very important delivery is coming up. That was a full toss, all right, well grabbed by the keeper behind the stump, but it's a wide has been called by the umpire, so you need to reload this one. Sahad behind the stump, the man who strikes really well in this last innings. He was one of the batters who got into this huge score for Black Cats. They managed to get 83 from 6 overs. Now GWC Arrows are up to this challenge. 64-4-2. 3 legal deliveries left in this over. Firoz, can he come back strongly? 1.3, 15 runs conceded, a wicket. Played very carefully. It finds the man in short fine leg. And just grabbing a single on this occasion. 65-4-2. Umar faces first ball. Had to score his first run in Asian Cricket League Season 3. Coming up next, it's a big match. Udupi and Walid Sports, and one of the icon player. He flew all the way from India to participate in this tournament. South Patel, who are waiting for this man to walk in to the middle in this. That's a big one. That's a biggie. Has he got enough? Has he got enough? I reckon it's a maximum. Distance, height, and what else you need? Power. Superbly executed. He was just waiting to go to the middle. Captain, please note the time. It is 3 minutes and 46 seconds. Now 71-4-2 for 4.5. 13 runs required from 7 deliveries from where the match started, how this match is going to end. That's the story so far. It's all up to the momentum. How only you need to capitalize on that wicket, but they were not able to capitalize on the wickets they got. Umar came and played on the shot. Yes, set straight to the man in long on. I'll get a single, bring back Shaheen onto the crease. As a completion of this, he need to return the strike. 72-4-2 after 5 overs, talking about 12 runs from the remaining 6 deliveries. Chirag, what do you think? सर मैंने पहले ही कहा था कि ये मुकाबला जिस प्रकार से गया था कि ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर आना बाकी है और यही पिक्चर दिखाए बल्लेबाजों ने, खास करके शाहीन कट्टा जिस प्रकार से वो आज जिम्मेदारी वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक के, क्योंकि सर शाहीन कट्टा को आप पहले 2 ओवर तक देखते, उसके बाद वो ज़्यादा अगर रह गए तो मुकाबला खत्म करके ही आते। लेकिन आज जिस प्रकार से वो पारी के लिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सर के ऊपर बर्फ आपको रखना होता है, और यही दिखाते हुए कि जिस प्रकार से वो आज मैच्योर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम को एक बड़े टोटल, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये टोटल चेस हो पाएगा, ये टोटल तक जाएंगे। 72 बने, 2 विकेट, 5 ओवर खत्म हुए, अभी भी आखिरी 6 गेंदें बाकी है और रन चाहिए 12। किसके 12 बजेंगे ये तो वक्त बताएगा सर। Absolutely, किसके 12 बजेंगे? Now we'll have to wait and see. Good news for the Black Cat is the man who just came to the middle and is as good as Qatar. At 72-4-2, 12 to win. Jitu has taken the responsibility to bowl a very, very important over. This is a final one. Still he needs to bowl 6 legal deliveries. Full toss, thank you so much. And ball has disappeared from the park once again. Seen some brilliant sixers. This was an absolute gift and he has taken it. Just a matter of 6 runs, 1 more hit away. It has been a brilliant chance. GWC Arrows, as maybe looked in the beginning, they were chasing a huge target. But that's all of a sudden, after brilliant innings for Shaheen Qatar. Here we go. As he's feeling the pressure there.
He need to defend 6 runs from the 5 deliveries. Says it's going to be very, very tough. Bowling to the man who got already 2 sixes. From 4 deliveries, he faced 13 runs for Umar. And Shaheen is on 30 from 14. Here we go. Good shot. Straight to the man. 1 bounce. And he'll bring Shaheen to the crease. 5 runs to win from 4 deliveries. We expected this match to be a little more tight. I got to give credit to the man who just walked into the middle. And he played his part. Those 2 sixes completely changed the momentum. And Shaheen was waiting for that man and gave him an absolute company out there in the middle. Just 5 to win. Oh, that's his favorite region. He is looking for that pull shot. He has delivered many, many times. On this occasion, Jitu says, hold on, buddy. This is one of the dot ball I ball to you. Can you come back? 5 to win from 3. Oh, what is going to happen here? He'll have to wait. The very, very important delivery is coming up. If Jitu can bowl a dot ball. Ah, that is very low. That is very low. Kept it very, very low. That's the key. You are bowling to one of the men who produced 4 sixes. He was in full swing when he got those 6s. And Jitu says, I am the better cricketer here. Kept low, and that's only 1 run conceded. 4 to win from 2 ball, Chirag. Now we are going to witness one of an absolute thriller from the very first match of ACL Season 3. सर यही तो देखने के लिए यहाँ पे दर्शक आए, इनको वही चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, और यही हुआ है. जिस प्रकार से ये बैटल चल रहा है, ऐसा लग रहा था मुकाबला काफी बड़ा है, लेकिन उसे छोटा बनाया गया. बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर दूर से दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, 2 रन तो पूरे करेंगे. तीसरे की क्या मांग होगी? नहीं, 2 पे ही समाप्त. अब रन चाहिए, 1 में 2 या फिर लो या फिर 2. Absolutely. Ek chahiye or do chahiye. That's up to them now. It's 1 ball and 2 runs to win. We are going to witness an absolute cracker. Down to the wire this match. Time taken this innings, please. Not the time taken per innings, captain and umpires. Who is going to win? It's all about the temperament. It's all about how he's going to keep his cool head. Jitu is a very experienced campaigner. He is bowling to Umar. And if you manage to get just 1 run, there's going to be 2 points shared for each team. There's no super over. Remember this. Here we go. Last. Left it over. Good presence of mind from the batter. That's Umar. Is as good as he hit the 6. He left that ball outside the off stump. It's 83 for 2. And 1 ball, 1 run. If Jitu can bowl 1 golden dot ball, they will share the points. सर अब यही तो होना चाहिए, क्योंकि अब 1 में 1 चाहिए. अब थोड़ा सा फील्डिंग को भी आप तो सजा सकते हैं. देखिए फील्डिंग में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि 1 में 1 है. गेंदबाज ने थोड़ा सा, उन्हें यही लग रहा था कि मैं ऑप्शन के बाहर रखूं और थोड़ा सा बल्लेबाज को सरप्राइज करूं, लेकिन गेंद ज़्यादा बाहर चलेगी. अब 1 में 1. क्या फील्डिंग में यहाँ पे कुछ बदलाव होंगे? जिस प्रकार से ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 1 ही चाहिए और इसीलिए 38 सर्कल में खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है. और अच्छी गेंद है, लेकिन मिड ऑन पे कोई नहीं है, और इसी कारण जीत जब ब्लू सी एरोज ने ये पहले मुकाबले को चौका, यस, 1 के साथ यहाँ पे जीत लिया और ये मुकाबला यहाँ पे समाप्त होता है. वेल प्लेड शाहीन कट्टा, वेल प्लेड उमर. और ये मुकाबला याद रखा जाएगा, क्योंकि ये पहला मैच था और जिस प्रकार से मुकाबला हुआ, मजा आ गया. शिलजार सर हमारे साथ जुड़ेंगे वहां पे, जहां पे इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच सेरेमनी में होगा, वहां पे टॉस होगा, उसकी तरफ हम बढ़ने वाले. वेल प्लेड. Thank you so much, Chirag. That has been a very, very good chase.
All right, guys, I'm going to announce something very, very special right here. Those guys was sitting in the pavilion. If you can please come down because you will miss something very special. आपके लिए रखा हुआ है एक जबरदस्त, very, very special moment as far as the cricket tournament is concerned in Qatar. We are going to reveal something very, very special. Towards the end of this tournament, 3 players will be rewarded with something very special. I request everyone to kindly be here to pay attention to this podium. This is Asian Cricket League Season 3, presented by Premier Techno Media, our title sponsor, Just Us and Auto. Can I have your attention here, everyone? Towards the end of this tournament, out of 24 franchises, we'll have 2 best teams to play in the grand finale. And from that match, we will choose 3 best players who will get a lot of rewards. But nothing better than this, what we are going to reveal right here. Premier Techno Media is setting up the real benchmark. World-class facilities when it comes to cricket tournament. 3 players who are going to get something very special. And these 3 players are going to be the man of the series, the best batter, and the best bowler. Now we will wait and see few minutes from now what they are going to get towards the end of this tournament. Something very, very special. Please have a look at this. We are going to reveal a magnificent prizes, rewards for those 3 players. Man of the series, best bowler, and the best batter of Asian Cricket League Season 3. Usko kya milne wala hai? 2 minutes from now. Count down what they are going to get. We are going to reveal right here. That's the best of the tournament in Qatar. Asian Cricket League setting up the real high standard. When it comes to the rewards, you cannot ask better than this. Have a look at this one. 1 minute from now, please pay attention everybody in this cricket ground. It is just not inauguration. He is not going to cut the ribbon, but he is going to break all the hearts here. In terms of getting a big prize, yes, we are going to reveal this very, very soon. Now you can see the poster. Player of the tournament, best batter and best bowler. And I request Mr. Najmuddin, Mr. Amjad and Mr. Jaisal. 3 of them are going to cut this ribbon. And as soon as they cut the ribbon, we are going to see something very special. These are for the 3 best players in this tournament. Here we go, ladies and gentlemen. Put your hands together. One of the best prizes in the tournament. 3 sports bikes. Wow. These are the rewards for 3 best players in this tournament. Who is going to be those? Player of the tournament, best batter and best bowler. 3 sports bike. The last season it was just 1, and this season we are bringing 3 bikes. So make sure that you have the bike license in Qatar, and you have to play your best cricket as well to get this hands on this 2 + 1 3 sports bikes for the very first time in the history of cricket tournament in Qatar. It's all being presented by Premier Techno Media when it comes to Season 3 of Asian Cricket League. Title sponsor Just As an Auto. And we want to take some pictures. It's all yours.
And for the players, you will have to really work hard to hands on these 3 bikes. It's all up to how you're going to play it for the next 13 days, including the first day. We just had the game number 1. Waiting for the game number 2. We'll wait for more cricketing action, more individual performances, and you can't ask better than this. We're going to give away 3 sports bikes for 3 individual best performers in this tournament, which includes player of the tournament, best batter and best bowler. It's being brought to you by Premier Techno Media. It is season 3 of Asian Cricket League. We'll be back very soon for this match number 2. Walid Sports taking on ODP cricketers. Let's have a look at the sponsors. So the main sponsor, title sponsors, as an auto, associate sponsor, Mabu Contracting Company, Icon Training Center, Center for Education and Training, Gulf Planet Trading and Contracting, PG Freight Cargo, Relocation Services and Creative Edge. You have the supporting sponsors, A Plus Contracting, Printech, Red Apple Events and Media, Absolute Sports, Tandura King Restaurant, Sixer and Symphony Events and Production. Thank you so much, all the sponsors. We over to you, Chirag, for the game number 2. Yes, we are back to the back. Game number 2. It's going to be between would-be cricketers and Walid Sports. We'll have one of the best players who have just flown up from India, South Patel. Is going to be playing in this game, so do not miss this. We just witnessed one of the best prizes and rewards in a cricket tournament. Techno Media is setting up a real high standard when it comes to the rewards. 3 players, man of the series, best batter and best bowler are going to get 3 sports bikes. So keep an eye on these 3 bikes. The players, if you are a good batter, if you are a good bowler, if you can perform in this tournament, these bikes belongs to you. I will quickly get to the game number 2. Umpires, officials and 2 opening batters right there in the middle. I'll have the official scorer, Mr. Rauf. I had a fantastic chase. It's 84 runs were chased down convincingly. And some glorious batting by Shaheen Qatar. Is an outstanding performance. He just made it so easy towards the end. Just pushed for the single and they won the match against GWC Arrows. The Black Cat been successfully completed the chase. We move to the game number 2. 2 umpires walks into the middle. Will have to be another 2 matches. The 4 matches to be completed the day number 1. Thank you so much everyone, all the spectators who came in very good numbers, being a Super Thursday in Qatar to watch the cricketing action. It is Asian Premier League, Asian Cricket League Mega Power in Season 3, brought to you by Premier Techno Media. Can I request all of you to please move from front of the stage? Can you please clear that area, and all the
players, fielders are get ready. We just had the toss earlier. Udupi cricketers had won the toss and elected to bowl first as Walid is going to be batting. You have the two opening batters. South Patel, as expected, this man to come and open the innings for Walid 11. Please note, umpires and team captains, have a look at the time allotted per innings is 30 minutes. So if you are exceeding 30 minutes, you will get the punishment in terms of removing one fielder. So please make sure, umpire and captains, the time allotted per innings is 30 minutes. Walid 11 is batting first, have been asked to bat against Udupi cricketers. Two stock teams. We have 24 franchises and to open the innings. As expected, this man who just arrived from India to participate in this tournament. Icon player, South Patel is on non-strikers and Nawaz is on a strikers end, and from the Udupi cricketers it's Nizar. To start the proceedings, we go to the first over, game number 2 of ACL Season 3. Here we go, umpire. Let's go. And Nizar to start the proceedings. For Udupi cricketers, it's ball number 1. Oh, straight away. Up and over, racing towards the boundary. This is how you start your innings. As a magnificent shot, just driven beautifully to the long off. The right-hand batter, as soon as he saw a little bit of half volley, and it's driven nicely. You have the power play. You have only 3 players outside the 30-yard circle. There's only 1 power play over 6 overs match. This is once again reminding the captain to have a look at the screen, the time allotted per innings, 30 minutes. Oh, that's a good comeback. It's snipped back into the right-hand batter. You missed that. He was going to go for an expensive drive towards the offside. Completely beaten. It's 4-4 Nolos, Walid 11. As Nawaz has taken him from the very first ball. The second one, Nizar, came back strongly. That's the back of the length. He finds the field at backward point. A good variation. That will bring Saud Patel. Very first time in this tournament. Is going to face his first ball. Icon player. The only player who flown all the way from India to participate in this big tournament. The Asian Cricket League Season 3. Brought to you by Premier Techno Media. And welcome Saud Patel to Qatar, to Al Rayyan Absolute Cricket Ground. Here we go. I expected a class player, how he off the mark, driven to the covers and single. A little bit of shuffle across the crease. It looks pretty solid out there when he faces first ball. A long way to go. It's a big tournament, 13 days. Jersey number 5, and he is opening batter for Walid 11. That's nicely played. He'll find the field and long off. Just a single. A 7-4 Nolos. And 1 delivery left in this power play, number 1.
Was right in the block hole. He wanted to go towards that fine leg in reverse sweep attempt, leg by call by umpire. That's a completion of the power play. 8-4 Nolos. Once again reminding everyone, have a look at the screen. About the time taken per innings, 30 minutes. If you exceed 30 minutes, you will have the punishment. Your fielder will be removed if you exceed more than 30 minutes to complete the innings. So while it's 11, moving on quite nicely, two opening batters over to Chirag Nawaz and Saud Patel, just off the mark in style. नक्की इकडे मात्र एक मोठा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला वालिद 11, दुसऱ्या बाजूला उडपी क्रिकेटर्स मध्ये हा सामना सुरू आहे. आणि नवाज म्हणजे रायगडचा छोटा टायगर म्हणून खरं तर त्याची ओळख आहे. दुसऱ्या बाजूला साउथ पटेल इंडियामधून खास आयकॉन प्लेअर म्हणून त्याची ओळख आहे आणि तोही खूप मोठा प्रवास करीत इथपर्यंत आलाय. त्यामुळे या सामन्यात मायबाप प्रेक्षकांचं खूप मोठं मनोरंजन होणार आहे. कोकणमधून मला वाटते आज भरपूर प्रेक्षक ऑनलाईन आहेत आणि त्या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. कारण वालिद 11 आपण नेहमी म्हणतो की वालिद 11 कोकणमधून येतो आणि त्यामुळे कोकणातील अनेक क्रिकेटर्स आम्ही खूप जवळून क्रिकेट पाहतो कोकणातला. त्यामुळे कोकणातलं क्रिकेट आणि खास करून आपण म्हणतो नवाज खानचा विचार केला तर अनेक वेळा मोठमोठ्या क्रिकेट स्पर्धेत ज्यांनी ज्या पद्धतीने खेळ केला आहे त्याचंही कौतुक केलं जात आहे. छोटा टायगर म्हणून खरं तर ओळख आहे. उस्मान पटेलला आपण रायगडचा टायगर म्हणतो, तर दुसऱ्या बाजूला नवाज खानला आपण छोटा टायगर म्हणून ओळखतो. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, धावसंख्या फलकावर 8, वालिद 11. तर दुसऱ्या बाजूला उडपी क्रिकेटर्स, कौतुक करावं लागेल. व्हॉट अ बॉलिंग. निझार ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, कौतुक. सलमान अब गेंदबाजी के मोर्चे पे. सलमान के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी. सलमान भी इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी है, तो आइकॉन वर्सेस आइकॉन ये बड़ा मुकाबला है और मज़ा आने वाला है. दोनों भी टीमों की बात करें तो दोनों टीमों में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं. तो वालिद 11, दूसरी तरफ उड़पी क्रिकेटर्स. सलमान के काफ़ी चहीते यहाँ पे आए हैं और आवाज़ भी उनकी बढ़ रही है डकआउट से. मज़ा आने वाला है. गेंदबाजी के लिए सलमान, सामने है पटेल और इस बार एक आइकॉन को दूसरे आइकॉन ने कहा टाटा बाय बाय. और पटेल की यहाँ पे जो पारी है वो समाप्त होती, सीधे गेंद को स्टंप पे किया और ये आइकॉन वर्सेस आइकॉन की इस लड़ाई में यहाँ पे सलमान ने कहा भाई हम तो यहाँ पे ऐसे ही स्वैग से करेंगे स्वागत, तो ये विकेट से स्वागत किया सर इनका. Yes, and I got to feel sad for him. Yeah, that is an absolute superb delivery. And Salman Bhai ne kya kamal kiya hai aaj. You have the best batter who just walks into the middle and he has to return back now. As Walid 11 moves to 8-4-1 and Salman strikes a big fish. He got. इमसल भाई, अब इनको कौन बोल पाएगा. इमसल भाई की बात करें तो जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी करते हैं, हमने पिछले मैच में शाहीन कट्टा को देखा, ये वैसे ही बल्लेबाज है जो बड़े स्ट्रोक में काफ़ी विश्वास रखते हैं. और इफजल भाई हम बात करें जब कतर क्रिकेट की तो कतर टेनिस क्रिकेट में इनका नाम काफ़ी ऊपर है. मोस्ट सीनियर खिलाड़ी है और हमेशा जब भी आते हैं तो बल्ले से बल्ले बल्ले करते हैं, हमने देखा है. मजा आने वाला है सर. Absolutely, he is a kind of cricketer. He can single-handedly change the momentum. He can control the game. He's a very senior campaigner, and he is going to play an anchor role here after losing an important wicket for Walid 11. If Zal Bhai just walks into the middle, we'll have to wait and see. Salman. Oh, beaten. That is an absolute very, very good delivery. Right up front to Ifzal Khan. He was just going to play towards the covers. जिस प्रकार से गेंद को खेला, थोड़ा सा गेंद पे निगाहें नहीं थी और चलते चलते टहलते इस गेंद को खेलने की कोशिश वहाँ पे इफजल भाई की थी, लेकिन पहली गेंद थी, गेंद को साइड नहीं कर पाए और ये बिंदी गेंद विकेट जाने के बाद सर ये प्रेशर बनता है शिलदार भाई. Absolutely. Now there's the pressure, as you rightly mentioned, Chirag. Ifzal Bhai has to play an important innings here. Nicely played towards the square leg. He finds the fielder. Off the mark in style, Ifzal. Ifzal and Nawaz. They hails from the same place. और जिस प्रकार से गेंद को खेला, 1 रन यहाँ पे मिलेगा. थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करते हुए नवाज के ऊपर आज काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी और नवाज खान किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पिछला साल इनका अच्छा नहीं रहा था, लेकिन
हम कहते हैं कि वो पिछला साल था, ये नया साल है। नए साल में नई कहानी लिखने के लिए क्या नवाज खान तैयार है? क्या नवाज खान वालिद 11 के लिए वो आज कारनामा कर पाएंगे जो कट्टा ने किया था? शाहीन कट्टा ने जिस प्रकार से पारी खेली थी, वो मैच विनिंग वो पारी, वो भी काफी महत्वपूर्ण थी। क्या यहाँ पे आज नवाज खान का वो जलवा हमें देखने को मिल सकता है सलमान के सामने? Yes, Nawaz Khan, very important player for this team. Last year was not that great for him, but as you rightly mentioned, Chirag, this is all brand new year, and he is going to be another match-winning innings like exactly Shaheen Kata has played in the last game. 9 for 1. Salman. Driven nicely. He finds the field, a deep extra cover. Will cut it off just for a single. सॉरी, प्रेशर है। हम हमेशा कहते हैं अब ये दोनों बल्लेबाज यही सोच रहे हैं कि भाई ये सलमान का ओवर कैसे तो खेल जाए, क्योंकि अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 10 रन, डबल फिगर में स्कोर पहुंच चुका है। लेकिन जो महत्वपूर्ण विकेट था, जो आइकॉन खिलाड़ी थे वो लौट चुके हैं पवेलियन, तो ये थोड़ा सा प्रेशर होगा। इफ्जल भाई ऑन स्ट्राइक, और इफ्जल भाई अपने स्टाइल में खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार वो स्ट्रोक इतना अच्छा नहीं। आज सलमान अपना जलवा दिखा रहे, 2 बड़े विकेट, 2 big wickets. Big fish. Rightly you mentioned 2 big fishes. And Ifzal Bhai is very strong on long off. But at this occasion, not enough timing. Safe pair of hand. He didn't have to move at all. The fielder just made sure that kept the eye on the ball. And a straightforward catch. And Ifzal Bhai, 2 big wickets. Walid 11, middle order has to be tested. Ifzal Bhai was just not able to perform in the first game. But it's a long way to go. It's a big tournament. Walid 11, 10 for 2 from 1.5 overs. इफ्जल भाई ने 3 गेंदें खेली, 1 रन बनाए, और स्कोर कार्ड की बात की जाए 10 पे अब दूसरा झटका लगाए, और दूसरी ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है। लास्ट बॉल ऑफ द सेकेंड ओवर, स्कोर अब तक का 10 रन, और जिस प्रकार से मुकाबला है मजा आने वाला है। शफीक ऑन स्ट्राइक, शफीक आए नए बल्लेबाज, शफीक और नवाज कि अपने टीम को यहां से उभर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 10 पे 2 ये अच्छी सिचुएशन नहीं है टीम वालिद 11 के लिए। शफीक और खास करके सलमान की तारीफ करूंगा। सलमान ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए, 2 विकेट महत्वपूर्ण लिए हैं, ये भी इस ओवर की कहानी है। सलमान अब राइट आर्म राउंड विकेट आए शफीक के लिए। इस बार ये गेंद छोटी थी, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डॉट बॉल। स्कोर अब तक 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। What a fantastic over from Salman. Just given only 2 runs and he took huge wickets. 2 big wickets, big fishes of this innings. Saud and Ifzal back to pavilion. And Walid 11 on pressure. Only 10 runs for 2 in 2 overs. Shafiq and Nawaz on crease. Salman, who bowled very well, he gave only 2 runs in the last over. He took 2 huge wickets also. The big man Saud Patel came from India. सर पटेल लवकर गेला आणि मला वाटतं इथून मात्र सामना बदलावा लागणार आहे। 2 षटकात 10 धावा। आज नवाजला मात्र त्याच्या नावासारखा खेळ करावा लागणार आहे आणि तो खेळ होणार का याकडे लक्ष असणार आहे। गोलंदाजीमध्ये थोडासा बदल होतोय। गोलंदाजीसाठी फरहान येतोय गोलंदाजी मार्कवर। सलमानचं कौतुक करेल, 2 धावा देऊन 2 गडी बाद केले। आज रायगडचा टायगर, हा छोटा टायगर किती काय डरकाळी फोडणार याकडे प्रत्येकाचं लक्ष आहे। 2 षटक 10 धावा 2 गडी बाद। षटक क्रमांक 3 फरहान गोलंदाजीसाठी, समोर मात्र नवाज आहे मात्र सरळ बॅटनी केलाय। सरळ बॅटनी चेंडू मात्र येतोय आउट ऑफ द पार्क, चौकार येतोय। हीच खरी नवाजची ओळख आहे आणि नवाज सांगतोय की मीही या स्पर्धेत खेळण्यासाठी आलोय, मीही या स्पर्धेत माझ्या नावाचा दबदबा करणार आहे। Superb hit by Nawaz, straight towards the long off region. Fielder can't do anything, resulted 4. Nawaz on 11 with 2 boundaries. Farhan the man from pavilion end. 14 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात षटक क्रमांक 3 सुरुवात झाला आणि आलेल्या नवाजनी चौकाराने स्वागत केलंय। यावी मात्र मोठा पटका, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि विकेट। नवाज खान मात्र परततोय, खूप मोठा विकेट। बिग फिश इन नेट,
Walid 11 struggling. They lost third one. The big man Nawaz Khan back to Polian. Farhan, who took brilliant bowling by Farhan and the easy catch for the fielder on the long cover region. 14 वर दुसरा झटका. खरं तर नवाजला थोडासा थांबावा असं वाटलं होतं, परंतु चेंडू तेवढा चांगला मिडल झाला नाही. चेंडू सरळ जातो हातात. धावसंख्येचा विचार केला. धावसंख्या आतापर्यंत फलकावर आहे 14 धावा आणि 3 गडी बाद. वालिद 11 साठी आता खतरे की घंटी बज गई आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. 14 वर सध्या 3 आणि षटक क्रमांक मैदानाच्या आत चालू आहे. तिसरं 3 विकेट्स गेलेत. त्यामुळे वालिद 11 इथून काही कमबॅक करणार का? 3 मोठे विकेट्स मात्र इकडे पाहायला मिळतात आणि तिन्ही विकेट खूप महत्त्वाचे होते. आणि आमचे या सामन्याचा विचार केला तर हा सामना खूप महत्त्वाचा आहे. फैजल नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत, फैजल खान आणि दुसऱ्या बाजूला शफीक ही जोडी मैदानाच्या आत आहेत. आपण MS धोनी क्रिकेट ग्राउंड दोहा कतारवरून या संपूर्ण सामन्याचा थेट प्रक्षेपण घेऊन येतोय श्री लाईव्हवर आणि त्याचबरोबर ACL दोहा कतार या यूट्यूब चॅनलवर. आमच्याबरोबर आमचे अनेक मित्र जोडले गेले आहेत. खूप वेगळा हा सामना आहे आणि प्रेक्षकांचं मनोरंजन होणार नो डाऊट. फरहान ऑन स्ट्राईक. फरहान गोलंदाजी मार्क. इथे मात्र चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन पाहायला मिळतोय. हात बोटं फिरवली जात आहेत चेंडूवर आणि सिक्सर चेंडू या आधीच्या सामन्यात धावांचा पाऊस पडला होता आणि आता मात्र धावा रोखल्या गेल्यात. धावसंख्या फलकावर आहेत 14 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. Farhan from Pavilion end into Faisal. A huge hit from Faisal. One bounce. The fielder can't do anything and the result at 4. Boundary added to the total and total moves to 18 for 3. Captain, please note the timing. There is only 30 minutes for 6 overs. If it's exceeded, one fielder should go inside the circle. There is a punishment. Once again, the ball is there. Fielder running towards. Yes, just missed the catch. Misjudged. It was an easy chance. इकडे मात्र प्रत्येक संधीचं सोनं करावं लागणार. इकडे विकेट्स गेला असता परंतु नशिबाची चांगली साथ फैजलला. धावसंख्या फलकावर 19 धावा. 19 लॉस ऑफ 3. षटक क्रमांक मैदानाच्या आत तिसरं सुरू आहे आणि तिसऱ्या षटकातील अजूनही शेवटचा चेंडू बाकी आहे. स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट साठी आता एक चेंडू बाकी आहे. लास्ट बॉल खूप महत्त्वाचा असणार आहे. फरहान मोठा फटका घ्यायचा होता. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आहे आणि विकेट. विकेट नंबर 4. हजेरी लावतात फलंदाज एका पाठोपाठ एक. विकेट. शफीक बॅक टू द पॅव्हिलियन. जाऊया स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट कडे आणि पुन्हा येऊया मैदानाच्या आत. वालिद 11 शोधण्यासाठी सध्या खूप मोठं संकट त्यांच्यावर आहे आणि 2 मिनिटाचा स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट आपल्यासाठी भेटतोय. After completion of 3 overs, Walid 11 19 for the loss of 4 wickets. They're struggling now. They lost big wickets, 4 big wickets in 3 overs. And there is a strategic timeout of 2 minutes. And captains of both teams, please note there is only 30 minutes for an innings. 6 overs should complete in 30 minutes. If it's exceeded, one fielder should go inside the circle. There is a punishment like that.
प्रकार से ये गेंदबाजी हुई है, तारीफ करूंगा गेंदबाजों की, जिस प्रकार से 19 पे 4 ये स्थिति अभी भी। अब बशीर और फैजल ये दो बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, गेंदबाजी के लिए फिर से सलमान, इनको कौन भूल सकेगा, सलमान। पहली गेंद, सलमान का स्वागत इस बार सिक्सर के साथ। आपने विकेट लिया था पिछले ओवर में, ये भूल चुका मैं। 6 रन, सिक्सर, स्कोर मूव्स ऑन 25. What a huge hit bump by Faisal. That's a humongous one. The ball goes out of the park. Salman, the स्कोर मूव्स ऑन 25. 25 पर 4. आणि फैजलला असंच खेळावं लागणार आहे. फैजलने आतापर्यंत 4 चेंडू खेळले, 11 धावेवर आहे, त्यामुळे सामना रंगतदार पाहायला मिळणार आहे, नो डाऊट. आणि सिक्सर सुप्रीमोचे चेंडू आहेत केतनबाई सेठ. ओहो, बॅक टू बॅक, हा दुसरा या सामन्यातला चित्र पालटणारा षटकार आहे. फैजल सांगतोय की या सामन्यात मी मात्र जीव ओतणार, चेंडू मात्र आउट ऑफ द पार्क, सीमा पार षटकार. स्कोर मूव्स ऑन 31. 31 धावा. आपका स्वागत है इस साल भी. स्कोर मूव्स ऑन 31. लॉस ऑफ 4. 31 पे 4. सामन्यात मजा मात्र येणार आहे, नो डाऊट. सलमानवर आतापर्यंत 2 षटकार खेचले गेलेत. याही मात्र बुंद्यात टाकलेला चेंडूला मात्र दिशा दिली. पहिली धाव मात्र पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाही. स्कोर मूव्स ऑन 32. 32 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. वाली दिलेवान दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय टीम उडपी क्रिकेटर्स, दोन्ही संघ आमने सामन्यात, आणि त्यामुळे या सामन्यात काहीतरी वेगळं पाहायला मिळणार आहे. 300 पेक्षा जास्त प्रेक्षक सध्या ऑनलाईन आहेत आणि त्यांचंही केवढ्या मनापासून हार्दिक स्वागत. जय मैदानाच्या पुन्हा एकदा सलमान. मोठा फटका खेळायचा होता, चेंडू बराच खेळ येत आहे, उंची जास्त, अंतर कमी आणि विकेट नंबर 5. गरज होती का बशीरला मात्र स्ट्राईक रोटेट करायची होती आणि सलमानला मिळते अजून एक सफलता. 3रा विकेट मात्र इकडे मिळते सलमानला. beautiful comeback by Salman. He took 3 wickets. In first 2 balls, Faisal hit 2 huge sixes, but he come back and he took the wicket. Salman got 3 wickets in 1.4 overs, 15 runs for 3. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर लागले ते आता मात्र 32 वर 5 सध्याची स्थिती. अजून या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. वाली दिलेवाल दुसऱ्या बाजूला उडपी क्रिकेटर्स, हे दोन्ही संघ आमने सामन्यात. आपण पाहत आहोत एशियन क्रिकेट लीग चा हा महासंग्राम. MS धोनी क्रिकेट ग्राउंड दोहा कतार वरून तुमच्यापर्यंत याचं थेट प्रक्षेपण श्री लाईव्ह व्हिडिओज आणि बरोबर ACL दोहा कतार ही दोन्ही यूट्यूब चॅनलवर सध्या त्याचं प्रक्षेपण चालू आहे. तुम्ही नक्की दोन्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या आत. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत फरीद तर सलमान. व्हॉट अ बॉलिंग, काय गोलंदाजी केलाय. 15 मध्ये 3 विकेट, त्याच्यामध्ये 2 षटकार याच षटकात आलेत. पहिल्या षटकात फक्त 12 धावा दिल्या होत्या, 2 धावा दिल्या होत्या आतापर्यंत. या मात्र चेंडूला येऊन दिला, दिशा दिल्या, 1 धाव मात्र मिळेल. चांगली गोष्ट आहे, आपण नेहमी म्हणतो की स्ट्राईक रोटेट खूप महत्वाचे आहे. स्कोर मूव्स ऑन 33. 33 ला 5. 1 more balls to go in this over. Salman into Faisal. Faisal, the informed batsman on strike. He scored 18 with the 2 huge sixes and 1 boundary. Last ball of the 4th over. 33 for 5. या मात्र चेंडू खेळ आहे, सिंगल मात्र मिळेल. षटक क्रमांक 4 मिळत आहे. धावसंख्येचा विचार केला 34 वर 5. 34. लॉस ऑफ 5. 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन 5 विकेट के नुकसान पे. अभी भी 2 ओवर का खेलाना बाकी. Please note car number 594651 and 306272. These cars blocked over there, please remove.
Number 594651 Toyota car and one van. He has, I think, 306272. കാണികൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ട് വണ്ടികൾ 306272 594651 അവിടെ മറ്റു വണ്ടികളെ ബ്ലോക്ക് ആക്കി കിടക്കുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക. പ്ലീസ് നോട്ട് കാർ നമ്പർ 594651 306272. And this is a four over completed 34 for 5. Walid 11 slow and steady. They are back to the match. Now the new bowler Naeem from Pavilion end into informed batsman Faisal. याईमध्ये चेंडू जास्तच बाहेर होता. पंचांचा वाईटचा इशारा. स्कोर मूव्ज ऑन 35 धावा. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटचे 12 चेंडू खूप महत्वाचे आहेत. वालिद 11 दुसऱ्या बाजूला उडपी क्रिकेटर्स मध्ये हा अति महत्वाचा सामना या स्पर्धेतील दूसरा. टाइम के पास भी आपको ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखें. 2 ओवर आने बाकी 8.5. इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, अच्छी तरह से खेला. 1 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा. स्कोर मूव्स ऑन 36 रन. गेंदबाजी के लिए बात की जाए तो नई माए नए गेंदबाज है, नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. टीम उडपी क्रिकेटर्स प्लीज टाइम की ओर आपको ध्यान देना होगा. 8 मिनट्स और 24 सेकंड्स ये बाकी है. आपको 11 गेंदें अभी भी डालनी है, ये ध्यान रखें प्लीज, नहीं तो आपको पेनल्टी मिल सकती है, ये ध्यान रखें. स्कोर मूव्स ऑन 36 लॉस ऑफ 5. फरीद ऑन स्ट्राइक. इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश. गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. डॉट बॉल. Try for reverse, but he can't connect the ball. Naeem bowling superbly. Captain, please note, you have to complete your innings in 7.5 minutes. And Farid on strike. Naeem, long run up. Superb piece of bowling just towards long off region. One more added. And one more added total, and total moves to 37 for 5. 5th over is running. Walid 11 37 for 5. इकडे वालिद 11ला मात्र धावांची भूक वाढावी लागणार आहे. त्यांना मात्र मोठ्या धावसंख्येकडे जावं लागणार आहे. 37 लॉस ऑफ 5. इकडे मात्र 15 ते 20 धावा या नक्कीच आव्हानात्मक ठरतील, नो डाऊट. इकडे मात्र हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पॅटवर नीट आला नाही. 1 धाव मात्र पूर्ण केली. दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न आहे का नाही, 1च धाव. 38 ऑन बोर्ड. 38 लॉस ऑफ 5. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. अजूनही 5वं षटक मार्गस्थ आहे. वालिद 11ला मात्र इकडून कमबॅक करावा लागणार आहे. इकडे मात्र बॅट आणि चेंडू मध्ये तेवढा चांगला संपर्क नाही. डॉट बॉल. स्कोर अजूनही थांबलेला 38 वर. लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओव्हर. Superb piece of bowling. Batsman completely beaten. Naeem, he bowled superbly. He gave only 3 runs in 5 balls. One more to go in this over. 4.5 overs, 38 for 5. Once again, great piece of bowling straight towards cover region. There is a misfield running between the wickets. Superbly they complete 2. And yes is the call. But non-striker. And 2 more added. 40 for 5 in 5 overs. 5 ओवर की समाप्ति स्कोर कार्ड पे लगे. 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे. वालिद 11 क्या यहां से इस टोटल में 10-20 अगर जोड़ लेते हैं तो जरूर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, नो डाउट. दोनों टीमें बड़ी है तो मजा आने वाला है. 40 पे 5 और आखिरी 6 गेंदें किसके पक्ष में जाएगी. टाइम के ऊपर भी आपको ध्यान देना, ये ध्यान रखें. उडपी क्रिकेटर्स प्लीज नोट डाउन द टाइम, ये ध्यान रखना होगा. First match was 84 target and they scored, and the targeted score 84 in 6 overs. वालिद 11 के बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे एक प्राइज आया है. अगर 3 सिक्सर लगातार लगाते हैं तो यहाँ से 100 रियाल्स का यहाँ पे इनाम दिया जाएगा. क्या 100 रियाल्स का का ये इनाम किसके पक्ष में जाएगा, ये देखना होगा. आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें. आदिल, पहला ये सिक्सर आया है.
जैसे ही इनाम आया, जैसे ही सिक्सर आया सर जी, There is an offer for Walid 11. For 3 sixes, they will get 100 riyals. And Yeah. the first one came in the first bowl, and 2 more waiting. स्कोर मूव्स ऑन 46, 46 पे 5, ओवर नंबर चलता हुआ ये आखिरी, इसकी जरूरत है। हम हमेशा कहते हैं, मराठी में कहा जाता है, जसी मांगनी तसा पुरवठा। फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में इस बार हेलीकॉप्टर को खेलना चाह रहे थे, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी और ये दूसरे की मांग क्या पूरी होगी, और ये देखिए विकेट, सैक्रिफाइस किया विकेट को। स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 47 रन। फरीद यहां पे आएंगे लौट के, रिटर्न आएंगे 47, लॉस ऑफ 5। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, इंपैक्ट प्लेयर तलहा को यहां पे लाया गया है। क्या इंपैक्ट प्लेयर वो इंपैक्ट डालेंगे? यहां पे इंपैक्ट प्लेयर है, नवाज ने यही बताया कि वो इंपैक्ट प्लेयर है, लेकिन स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज। हम बात करें तो फैजल, जिन्होंने इस मुकाबले में जान डाली है, अकेले बल्लेबाज जो खेल रहे हैं, 26 की वो पारी अब तक लगातार अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 27 पे खेल रहे 11 गेंदों में। Yes, welcome out. Chirag, 47 for 6 from 5.2. 6 wicket gira hai all of a sudden. I just went for a coffee and you got 6 wickets, Chirag. Yes. That's a big one. Has he got enough? I don't think so. Straight to the man and is not making any mistake. Big man returns after a big display. At 47 for 7 and 3 legal deliveries left. And Walid 11 is really struggling to get runs. Udupi cricketers have put some real pressure towards the batting team. They got rid of the opening batters. They got wickets whenever they needed. That's a game number 2 progressing here of Asian Cricket League Season 3, brought to you by Premier Techno Media. Title sponsor Just Us and Auto. 24 teams will have the best 2 during the grand finale. Towards the end of this tournament, as you have seen, something very special. I request the 2 captains of Hanan CC and M3, please come for the toss. Swing and a miss, and we understandably it's the last over. He'll sacrifice his wicket, and Wu is going to walk back. Again requesting 2 team captains. Hanan CC is taking on M3 Tigers. Like the name, M3 Tigers. कैसा लगा वो टीम का नाम कैसे रखा है? टाइगर्स रखा है। यस, M3 टाइगर्स और हनान क्रिकेट क्लब को भी भूलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हनान क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो इमरान की बात करेंगे हम। इमरान आज आपको इन एक्शन देखने को मिलेगा। पिछले साल वो नहीं थे, लेकिन इस साल वो है, तो इमरान का बल्ला भी बहुत चलता है, क्योंकि सऊदी में उनका नाम का काफ़ी हम कहें कि जिस प्रकार से वो वहाँ पे बल्लेबाजी करके आते हैं, वो एक बड़े खिलाड़ी है। आज उनको देखने को मौका मिलेगा, ये देखना होगा। मैंगलोर से काफ़ी सारे दर्शक आज उस मुकाबले को देखेंगे, क्योंकि इमरान वहाँ के काफ़ी फेमस खिलाड़ी है सर जी। यस, सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो इमरान। Oh, brilliant, absolutely brilliant. And umpires raised his finger. That's the first ball. He wanted to go for a big shot, getting an edge, and keeper doing the rest. Another wicket goes here. They have been losing the wickets in regular intervals. Walid 11, 47 for 9. And have a look at the time. Umpires and the captains. 40. As we mentioned earlier, if you exceed 30 minutes, just 30 seconds left now to complete this inning. As per the timing what we have given, allotted time to complete the innings 30 minutes. Adil, 7 runs conceded, got 2 very important wickets. And last ball of this innings, game number 2. Can they get up to 50 runs mark? It's 47 for 9.
One big shot from the new man who just bucked in, Ganesh. Can he get one big shot? Oh, right to the middle some. That's the beauty of the delivery, Chirag. As you can see, the flash of the light right in the middle stump. You miss, I hit. नक्की इकडे मात्र ज्या पद्धतीचा चेंडू होता, व्हॉट अ बॉलिंग, अप्रतिम गोलंदाजी. विकेट जातोय, दांडी गुल. आपण पाहतोय इन पुन्हा एकदा रिप्ले मध्ये. परंतु गणेश हाही एक खूप चांगला गोलंदाज है. गणेश की बात करें तो एक काफ़ी अच्छी गेंदबाज है, लेकिन अब ये मिडल ऑर्डर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी नहीं हुई, और स्कोर की बात की जाए 47, और ये ऑल आउट होने वाली पहली टीमों की वाली 11 ये ऑल आउट हुई है, और 48 इज ए टारगेट. And the good thing about them is right on time. 30 seconds, they become all out. And this is also the first time to become all out in 30 minutes in the first innings. But we'll have to wait and see. The opposition team is going to bowl now. Yes, Udupi cricketers had a pretty easy job in their hand now to get 48 from 6 overs. It looks okay in the scoreboard, but we'll have to wait and see. Walid 11 has got some very good bowlers in their side. We'll be back right after 2 minutes. Get ready, guys, with your opening batters. Once again, welcoming everyone to Absolute Cricket Ground, Royan MS Dhoni Cricket Academy, to watch all this spectacular cricket action. This is being brought to you by Premier Techno Media. The title sponsor, just as an auto, there's a season 3 of Asian Cricket League. Plenty of sponsors, and look at the number of people who turned today to watch the cricket matches, being the day number 1. Thank you so much. You will be having a lot of surprises, the spectators as well, when we progress about this cricket tournament. We'll come back tomorrow, the day number 2. It'll be the Friday. Hanan 11, Hanan CC taking on M3 Tigers. Let's have the toss without wasting time. We're talking about one of the big player. He is going to play an important role in the next match. A lot of fans who have come here to watch this man, another than Imran from Hanan. He is going to flourish. He is going to be at his best when it comes to cricket ground, known for his reverse sweeping. Can't wait to see that match right after this. We'll take a short break and we'll be back with the chase.
तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं एशियन क्रिकेट लीग का ये भव्य दिव्य आयोजन और आए सारे फैमिलीज और सारे हमारे दर्शक, इन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उर्पी क्रिकेटर्स को एक छोटा सा हम कहें कि एक टोटल मिला है, लेकिन क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि ये छोटे टोटल काफ़ी बड़े हो जाते हैं और यही यहाँ पे देखने को मिल सकता है और मज़ा आएगा क्योंकि 48 भी बने, लेकिन 48 का भी टारगेट कभी कभी बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से क्या उर्पी क्रिकेटर्स इस टोटल को जल्दी चेस कर पाएगा या फिर यहाँ से वालिद 11 की टीम कुछ अलग करेगी, क्या विकेट की तलाश में जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इस बड़े टूर्नामेंट में जिसका नाम है एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये पहला दिन। यस, एंड माय को-कमेंटेटर नाम है चिराग जी, ऐसे तो इंडिया से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्वागत है एक और बार कतर में एक जबरदस्त क्रिकेट ग्राउंड। सर मैं हमेशा कहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे मुझे जो प्यार मिला है कतर से वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 2016 से मैं कतर आ रहा हूँ और ये मेरा 8वां ट्रिप है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कादर भाई को जिन्होंने पहला मुझे मौका दिया यहाँ पे, क्योंकि 2016 में हनन का जो टूर्नामेंट हुआ था एशियन क्रिकेट ग्राउंड पे, वहाँ पे मैंने कमेंट्री की शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार कतार से काफ़ी प्यार मिला, दुबई से प्यार मिला और मज़ा आता है जब हम इंडिया से यहाँ पे आते हैं अपना हुनर दिखाने, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमेशा मिलता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सर। As we have the impact player straight away to open Wazil in the impact player. And the equation looks pretty simple for the batting team. They just need to score less than 50 runs from 6 overs. It looks good in the book, but we'll have to wait and see. Opposition team has got some very experienced player. Talking about Saud Patel, who just arrived here in Qatar all the way from India. He is going to use all his experience here as well when they are trying to defend a low score which is less than 50 runs. मोइनुद्दीन होटे इनकी तरफ से सऊद पटेल के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर वो 2 ओवर में 10 से कम रन देते हैं तो उसके लिए 100 रियाल का यहाँ पे इनाम दिया जाएगा। मोइनुद्दीन सर की तरफ से धन्यवाद सर। 10 या 10 से कम रन यहाँ पे वो देंगे तो उसके लिए 100 रियाल का यहाँ पे प्राइस यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने हमारे पास अमाउंट जमा कर दी है, अगर वैसा कुछ होता है तो यहाँ से उनको वो दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहे क्योंकि हौसला बढ़ाना ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। हम हमेशा कहते हैं पैसे मायने नहीं रखेगा, हौसला बढ़ाना ये मायने रखेगा। वालिद 11 के वालिद भाई भी थोड़ा सा अब नाखून चबा रहे हैं, लेकिन मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि पलक झपकते ही परिस्थितियां बदल जाती है। मजा आने वाला है, मुकाबले में जान डालनी होगी, मुकाबले काफी तगड़े होने वाले, नो डाउट। 48 इज टारगेट। अब वहां पे कुछ अंपायर से बातचीत हो रही है, अंपायर कुछ बातचीत कर रहे हैं। All right, all set to go for the chase. 48 runs to win, and we have the opening batters all set. Umpires. Yes, welcome back everyone to Absolute Cricket Ground. Match number 2, and the innings will start
48 runs to win. Udupi cricketers have done a tremendous job in the last innings in terms of restricting the opposition less than 50 runs. Got to give credit to those bowlers for taking wickets in regular intervals. On the other side, you got the bowlers, the opposition team who can upset the opening batters. If you can get rid of 2 opening batters quickly in the power play, they can pretty much come back to this game. It's all up to the momentum, how he's going to start the innings. Come back to you very shortly. Just 48 runs to win from the allotted 6 overs. It's all set to go. 2 opening batters from Udupi cricketers. Okay, noted. Nisarale. Strike Nisar. Nisarale. Ansura. Yes, Wazil there, the impact player, alongside with him Nizar for Udupi cricketers. Straight away, up in the air, who wants it? 3 fielders underneath, and one have to take it. No! Almost everybody was underneath the bowler. It was a chase for 1 ball and 5 fielders, including Ifzal Bhai. He should have been the man who have taken that catch. It was his call. Call was very, very important. Almost everyone underneath the ball trying to get the first wicket. Now we have the impact player. And the bowling end. Zahid. Square leg. Finds the field on the edge of the circle. Just a single. They need to play smartly. They need to have good, smart cricket here. They are not chasing down a big target. It's just 48. A runner ball will take them through. We have the toss for the next game. Hanan is taking on M3 Tigers. The news from the center is Hanan. Hanan captain M3. Right in the block hole. He'll steal a single. Chance for a run out, and he reckon he has reached on time. Hanan and M3 Tigers, please come for the toss. Already late for the toss, guys. Need to complete the toss within this over. It's a big shot. There is a fielder. Can't reach to that. It's beaten the man in mid-wicket. Racing towards the boundary. So what a good shot. The ball was traveling like a Fraser bullet. And they got the boundary. What they needed. Yes, you are chasing under 50 runs. But still you need to get a good start in the power play. You have a packed leg side. You have a long on. There's one fielder deep mid-wicket. Fine leg is on inside the circle. Have a long on. It's a cow end of this ground. So 3 fielders and this power play. Now it's been pushed towards the boundary. I wanted to play towards offside, getting an edge. Stealing a single on this occasion. It's been a good over so far. Again, this left-hand, right-hand combination will trouble the bowlers. They have an easy job in their hand to chase down 48 in 6 overs. So game number 2 progressing here. Udupi cricketers are quite successful in terms of restricting the opposition team less than 50. It's played towards the mid-wicket, left-hand batter getting a single. A 10 for no loss already from the very first over. Udupi cricketers are in the chase pretty much now. The driving seat got an important 10 runs. Just a matter of scoring 10 runs per over. They can easily run through this chase.
And for the next match, the decision from M3 Tigers, they won the toss and elected to ball first. As expected, the fielder, the bowling, the captain will choose to bowl first in this ground. I've seen in other tournaments as well. शॉट पटेल आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर येतोय. आतापर्यंत धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर आहे 10 आणि येणाऱ्या 30 चेंडूत आतापर्यंत धावा हव्यात 38. 10 रन अब तक बने हैं. स्कोर कार्ड पे कोई विकेट नहीं. अच्छी शुरुआत कहूंगा उडुपी क्रिकेटर्स की तरफ से, लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पे आइकॉन खिलाड़ी आए हैं, आइकॉन खिलाड़ी को ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से बुलाया गया आइकॉन खिलाड़ी को, क्या वो यहाँ पे अपना वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये भी देखना होगा. मोइनुद्दीन सर की तरफ से भी नाम लगे थे वहां पे, जिस प्रकार से क्या वो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे. 10 रन ऑन बोर्ड, 38 रन रिक्वायर्ड इन 30 बॉल्स. आप देख रहे हैं एशियन क्रिकेट लीग का ये पहले दिन में दूसरा मुकाबला जहां पे उडुपी क्रिकेटर्स और वालिद 11 के बीच ये मुकाबला चलता हुआ. पटेल आज क्या वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे. टाइमर की ओर भी हमारी ध्यान होगा. पहली गेंद दिशा से भटके, थोड़ा तेज करने की कोशिश है, कंधे का ज्यादा यूज किया गया और गेंद दिशा से भटके और ये वाइड रन. सर जी. Yes, Pehla ball in this tournament has been taken from India as an impact player. Can he get an impact? Can he make an impact in this game? This is a low scoring game. He has to play an innings. He has to play really well. He has to bowl really well. Oh, beautifully executed, mid wicket, and the fielder was just a spectator there. It's all the way, stand and deliver into the stand. What a magnificent shot. सर जिस प्रकार से ये गेंद थी, पूरी तरह से बल्लेबाज को एक इनविटेशन मिला था कि भाई इस गेंद को बाहर फेंकिए, और बल्लेबाज ने कहा थैंक यू वेरी मच. स्कोर मूव ऑन 17. आपके पास बैंक बैलेंस कम है और आपको खर्चा भी कम करना होगा, क्योंकि आपको कंजूस वाली गेंदबाजी करनी है. लेकिन अब यहाँ पे बल्लेबाज के लिए ये मौका मिला और पटेल के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण किया वसील की तारीफ करूंगा सर. Yes, Wazil is an impact player as well, so he is to make some note here. I'm one of the best. Oh, this time he played with a straight bat, racing towards the boundary. Nobody can catch the ball. It's between long on and long off, and there's no fielder there. सर स्कोर भी कम है और जिस प्रकार से वसील की बल्लेबाजी हो रही है, वसील अब तक खेल रहे हैं 12 पे, और जिस प्रकार से आक्रमण किया गया है, एक चौका एक छक्का लगा चुके इस ओवर में. मुकाबला पूरी तरह से बदलता हुआ. पटेल के ऊपर किया गया वह आक्रमण. इस बार गेंद हवा में, फील्डर नीचे आएंगे. विकेट. पटेल ने कहा कि मुझे विकेट चाहिए और विकेट मिलता हुआ. वसील की पारी यहाँ पे समाप्त होती हुई. कैच आता हुआ, कैच हुआ है और इसका मतलब है कि ये पहला झटका लगा है टीम. Yes, if you look at the replay in that screen, Chirag, what you can see, he changed little bit of variation in the next game. It was swinging away from the left-hand batter, and Wazil has to repart on this occasion. Back of the length, he wanted to pull that, getting an edge and not enough power and timing. A safe pair of hand, not making any mistake. The fielder, the long off for the left-hand batter. A new batter walks into the middle. A score at this moment. 21 for 1. You're chasing down a target of 48. Already have 21 runs. And South Patel was not performed with the bat, but with the ball. Yes, he got an important breakthrough for his team. They need to complete this over. Get 1 dot. Oh, who wants it? Easy one. You cannot miss that. And he got it. Another wicket. Back-to-back wickets for South Patel. You might have a bad day with the bat, but with the ball, I am the best. सर मुझे इंडिया से क्यों बुलाया गया है इसका परिचय देते हुए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं आइकॉन खिलाड़ी के ऊपर मोइनुद्दीन सर की तरफ से यहाँ पे अगर हैट्रिक लेते हैं तो 100 रियाल का प्राइज यहाँ पे दिया जाएगा, और क्या वो हैट्रिक होगा इसके ऊपर भी सबकी निगाहें होंगे.
शिलदार भाई क्या लग रहा है जिस प्रकार से ये कमबैक हुआ है, क्योंकि पहले 2 गेंदों की बात की जाए, पहली गेंद पे छक्का था, फिर चौका था, फिर विकेट, यही हम कहते हैं कि पलक झपकती परिस्थितियां बदल जाती है क्रिकेट में. It's all about experience, Chirag. It's using his experience really smartly here. He's not a small-time player. He has been brought here to play in this tournament from India. And Saud Patel knows the situation. He read the situation. Now he is on a hat-trick. And if he gets an hat-trick, he is going to get reward here as well from one of our spectators here. Is it $100? 100 Qatari riyals. The reward for him if he gets hat-trick. Here we go. Hat-trick ball from Saud Patel, impact player. You have the new batter there. Oh, beaten! Swing and a miss, and it was almost looked like an edge. Wicket keeper Ifzal has a smile on his face. He is not going to appeal for this. Survived. Just for a fraction of a second. He thought that he got the 3rd wicket. Saud Patel. Up in there. Who wants this? An easy catch. You cannot miss that. Here we go. Another wicket. Take a ball. Saud Patel. Not done with the bat, but he is there with the ball. And the captain can easily, captain himself is the skipper as well for this team, taking a responsibility to bowl an important over here. As 48 runs was quite chaseable, but have a look at this one. The turnaround in this game. With those 3 wickets, it's an absolute turnaround. Yeah, that's given out. There's a bit confusion. As finally the batters have to depart. That's a 3rd wicket for Saud Patel. The beauty. This evening we have seen some brilliant cricketing action, but this is one of that. One ball is taken for a 6. And he came back very strongly. This is how you come back a champion player. He got a wicket. He got 3 wickets. 1, 2 and wicket number 3 for Saud. Well done. जिस प्रकार से ये अपील किया गया, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि बल्लेबाज थोड़े से खुश हुए थे, लेकिन कैच लेने के बाद थोड़ा सा समय गया था, उसके बाद गेंद को उड़ाने गए थे और उसी कारण वो गेंद हाथ से छूटा था सर जी. इसी कारण अंपायर ने कहा इट्स आउट, बैटर को लौटना होगा वापस. लेकिन पटेल क्या इन्होंने वापसी की है. 2 ओवर की समाप्ति, 21 रन. अब आने वाली 4 ओवर की बात की जाए तो 27 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले जीतने के लिए और रिक्वायर्ड रन रेट 7 के आसपास है सर. Saud Patel, the man, came from all the way from India. He took 3 wickets. The icon player for Walid 11. He can't do anything with the bat, but he bowled very well, superbly. He took 3 wickets in previous over and 21 for 3 in 2 overs. गेंदबाजी में परिवर्तन बशीर को अब लाया गया. बशीर क्या यहाँ से कुछ बदलाव करेंगे मुकाबले में, क्योंकि बड़ा मुकाबला है और हम हमेशा कहते हैं बड़े मुकाबले में आपको बड़ा काम करना होगा. 0-5 की जर्सी पहने हुए जिस प्रकार से पटेल ने गेंदबाजी की है तारीफ करूंगा. पहली 2 गेंदों पे सिक्सर और चौका लगा था, 1 वाइड था, लेकिन उसके बावजूद क्या वापसी की है गेंदबाज पटेल ने. लेकिन अब जहां पे बशीर और उनके सामने निजाम एंड फरहान, ये जोड़ी मैदान के अंदर. बशीर के पहली गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, पहला रन तेजी के साथ लिया. बॉलर खुद दौड़े हैं, दूसरे की कोशिश करेंगे, लेकिन एक पे ही संतुष्ट होना होगा. स्कोर मूव्स ऑन 22, 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पे. 3 विकेट हम बात करें तो पटेल ने लिए 11 रन देके 3 विकेट. उनके लिए इनाम जरूर आए थे, दोनों इनाम
नहीं उन्हें मिल पाए, लेकिन अच्छी वापसी कहूंगा वालिद 11 की। लेकिन अभी भी मुकाबला हम बात करें तो उडुपी क्रिकेटर्स के पक्ष में। लॉर्ड फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को कवर ड्राइव खेला, वहां पे फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अफजल भाई ने गेंद को कैरी किया, डॉट बॉल, यहाँ पे एक रन यहाँ पे जरूर आएगा। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। After the loss of 3 wickets, Udupi is playing very slow and steady. They are taking singles. इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से गेंद को गली के क्षेत्र में खेला, जब तक फील्डर फील्ड करे एक रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। एक एक के साथ आगे बड़ी गाड़ी बढ़ रही है रनों की उडुपी क्रिकेटर्स की। स्कोर मूव्स ऑन 24 रन। पिछली 3 गेंदों की बात की जाए 3 सिंगल यहाँ पे आए हैं सर, और थोड़ा सा ये स्लो मैच चल रहा है क्योंकि रन ज्यादा नहीं है, बल्लेबाज कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रहे हैं सर। इस बार गेंद थोड़ा सा पटका हुआ गेंद था, नवाज वहां पे है, नवाज ने गेंद को फील्ड किया, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 25-25। पिछले 4 गेंदों में 4 सिंगल। अब थोड़ा सा प्रेशर दोनों टीम के ऊपर है। मैं कहूंगा कि मुकाबला लो स्कोरिंग है, लेकिन ऐसे ही मुकाबले में गलतियां होती है, और यही गलतियां की रन होने के बावजूद 3 विकेट गंवाए टीम उडुपी क्रिकेटर्स ने। अच्छी गेंद थी, फिर से नवाज वहां पे खड़े हैं, लेकिन इस बार गेंद हाथ से छूटा, एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। पॉइंट के खिलाड़ी को चौकन्ना रहना होगा। स्कोर मूव्स ऑन 26-26। पिछले 5 गेंदों में 5 सिंगल। Yeah, absolutely. They are taking singles after the loss of 3 wickets. South Patel took 3 big wickets in last over, so they plan to take singles and doubles in coming 1 or 2 overs. After that, they will charge. 22 runs required in 19 balls. That's an easy target, I think, for Udupi cricketers. It's low scoring match. Bashir once again from Pavilion into Farhan. ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, और जिस प्रकार से गेंद बल्ले पे आई नहीं, दूसरे की कोशिश, खतरा हो सकता है, और ये डायरेक्ट हिट। अंपायर कहेंगे, थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे उच्च न्यायपालिका के पास। अब ये डिसीजन आता हुआ, डिसीजन पेंडिंग। डिसीजन पेंडिंग, और डिसीजन पेंडिंग क्या होगा? क्या ये काफी, क्या गेंद, ओहो, और ये डिसीजन ऑन स्क्रीन भी आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर के बाद। Yeah, that was the first time it has been given for a third umpire. Chirag, and taking the decision as under processing here. We'll have to just wait for few seconds to get the final result. I mean, as said, it was direct hit, or Ifzal Bhai has got a hands on the ball. इट्स नॉट आउट। यस, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, लेकिन रिक्वेस्ट टाइम आउट होने से पहले वहां पे थोड़ी हलचल मची थी, क्या वो रन आउट मिल सकता था? और अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनने वाली है। स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 28 रन सर। अब आने वाली 18 गेंदों में रन चाहिए 20। मुकाबला बॉल टू रन से, इसका मतलब है कि बहुत कुछ होगा, बहुत मजा आने वाला है, नो डाउट। Yes, it's a low-scoring game as expected. The bowling team came to the party and taken those wickets. Got to give credit to the man who was really good with the line and length. That's none other than the man who just flown from India as an impact player. Saud Patel has taken 3 wickets. That's the complete control they have taken since then. And this run out has just given not out. It was direct hit.
I would have gone with few inches if we had not missed it. It's all happening here in Absolute Sports Ground, Ryan, Amazoni Cricket Academy, when you're progressing with the day number 1 of Season 3 of Asian Cricket League, game number 2. And we can't wait for the next match to be between two very strong teams, two big players face to face. And one of them, Imran, is going to be walking into the middle with some powerful skills he has. He has a lot of fans on and around Qatar. 18 गेंदों में 20 की जरूरत. 18 balls 20 runs required. 18 balls 20 runs required. Yes, coming back to this match, 20 from 18, it's runner ball will take them through. The question is whether they can get one more wicket and put more pressure for the batting team. As expected, the bowling team have done a tremendous job. There's one man who have done all the damages for the batting team as skipper himself. I wouldn't be surprised if he comes to bowl again. One bowler can bowl 2 overs in the 6 overs match. And you can't ask a better man to bowl this over. He is into the attack again. He has decided himself to attack the batters. He's got 3 wickets. He's going to bowl again. 6 deliveries from Saud Patel. Will change the momentum. Will change this match completely into his control. We'll have to wait and see. And to face the song, that is Nizam, 11 from 7 with 1 boundary. Alongside with him, Farhan, 4 from 3. The equation is very simple. 20 from 18. नवाज खान को अब गेंदबाजी पे बुलाया गया है. नवाज खान इस टीम के काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उड़पी क्रिकेटर्स की बात की जाए तो निज़ाम और फरहान दोनों ने ये सोच लिया है कि अब सिंगल डबल से आगे बढ़ेंगे. इफ्जल भाई थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए 18 गेंदे 20 रन और ये मुकाबला अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि उड़पी क्रिकेटर्स के पक्ष में ये मुकाबला है क्योंकि रन ज़्यादा नहीं चाहिए शलदार भाई और मेरे हिसाब से विकेट भी उनके हाथ में 7 है. तो इस मुकाबले अगर जान डालनी है तो गेंदबाजों को दमखम लगाना होगा. Yes, just for a fraction of a second I thought Saud was bowling this over. Up in there. Who wants this? Saud himself underneath. He has got another field. Oh, that's a collision. That was an absolute collision. You should have called for it. It was Saud ball. That's what exactly he was telling. It's my ball, buddy. He was running towards his right. It makes much more easier for the fielder to run towards his right and collect the catch. Nicely driven, nicely driven. There is protection. And the long on just taking a single. Ifzal Bhai, as we know, he's one of the very senior campaigner playing in this game. He'll have a lot of words to be shared with his players, his teammates. He is behind the stump as he's one of the best wicket-keeper batter. This game is going to be another thriller like the first game we had. Trying to scoop, trying to play towards the square leg. It's 31-4-3, 17 from 15 deliveries. Going to go down to the wire for sure, Chirag. It's not going to be easy. जरूर यहाँ पे रन कम है लेकिन प्रेशर भी उतना बड़ा है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कम रन वाले मैच में प्रेशर ज्यादा होता है. इस बार गेंद को अल्टी पल्टी खेलना चाहा गेंद हवा में और विकेट. क्या ये स्ट्रोक खेलना जरूरी था? मेरे हिसाब से नहीं. बिल्कुल नहीं था. Absolutely no need to play this shot at this point of time in this match. सर मुझे अर्शदीप का वो स्ट्रोक याद आता है जहाँ पे 1 रन की जरूरत थी. अर्शदीप ने वहाँ पे ऐसा ही स्ट्रोक खेला और इंडिया वो मैच हारा जहाँ पे 14 बॉल्स में 1 ही रन चाहिए था. बिल्कुल. That is the presence of mind of the player. It's not only the skills. You need to think as well. Now he is trying to play something innovative. Shots are just not able to execute the way he wanted. Another wicket falls here. Now we'll have to say, Udupi cricketers, can they really come back to this game? मैं कहूँगा अभी भी पटेल का एक और आना बाकी है सर. तो यहाँ से मैच में कुछ बदलाव हो सकता है. स्कोर मूव्स ऑन 31. अभी भी 17 की जरूरत है और गेंदों की बात की जाए तो गेंदें आनी बाकी है इस मुकाबले में.
Here we go. Nawaz Khan got an important wicket. You have a new batter there, joined the middle. He needs to play sensible cricket here. This is the game number 2 progressing. Oh, straight away. What a good shot under pressure. It was never easy, Chura. You just came to the crease. You're facing one of the best bowler. Just look at the way he played. Flick of the wrist all the way to the mid-wicket boundary for a 6. सर इसके पहले वाली गेंदों की भी बात करें तो गेंद धीमा आ रहा था. इस बार थोड़ा सा तेज करने की कोशिश की गेंदबाज नवाज ने और वहां पे गलती कर बैठे. 6 रन. और इस बार गेंद और बल्ले में इतना अच्छा सबक नहीं. डॉट बॉल. अब 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर कार्ड पे लगे हैं 37. इफ्जल भाई पूरा दमखम लगा रहे और अब 12 गेंदे और रन चाहिए 11. 12 गेंदे 11 रन. ये छक्का, ये सिक्सर काफी महत्वपूर्ण था इस मुकाबले में. बिल्कुल सही बोला आपने. That 6 actually changed the momentum of this game. You got to give all the credit to the man who just walked in. Shakir, 6 from 2. And what that 6 has literally made this impact in this game. You'll have to wait and see whether they'll be able to defend this. 47 for 10, 37 for 4 now. Udupi cricketers need to play sensibly from now. They have lost 4 wickets. 12 गेंदे 11 रन मुकाबले में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है. अब पिछले ओवर में जिस प्रकार से 3 विकेट लिए थे पटेल ने, अब क्या वो यहाँ पे वो गेंदबाजी करेंगे? इफ्जल भाई यही बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन इसके बाद जो बड़ा मुकाबला आने वाला है उसकी तरफ भी हम ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि हनन क्रिकेट क्लब इन एक्शन आने वाली है, क्योंकि उन्हें पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण मिला है. एमटी टाइगर्स ने उन्हें आमंत्रण दिया है कि वो आके पहले बल्लेबाजी करे. नवाज ने वो 5वीं गेंद काफी तेज की थी, इसी कारण वो सिक्सर गया. लेकिन अब क्या यहां से पटेल कुछ अलग करेंगे? सामने बल्लेबाज निशा और इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे. गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं. डॉट बॉल. गेंद डॉट आई है और अब रन चाहिए 11 में 11. 11 गेंदे 11 रन. मुकाबला तगड़ा. Yes, that was a decision which was a bit of appeal from the batting team. Was there a wide delivery? Very crucial moments in this game. It's a low-scoring game. It was slowly drifting towards the leg side. Nip back in. One of the very experienced player. Ball have taken already 3 wickets. Now this is a moment. This is a big over in this game. Has taken already 3 wickets. Can he get one more and put more pressure? He is attacking the Udupi cricketers. And on the other side is Nizam. 14 from 10. He's got 1 boundary. He needs to play the remaining deliveries in this over from Saud Patel. And decided it is not a wide. It's a legal delivery. It was given for third umpire as a dot ball to start this. You cannot ask better start than this. A man who have taken 3 wickets. Dot ball to start the second over. 5 to go. 11 में 11. और इस बार ये गेंद खराब है. वाइड है. पिछली गेंद थोड़ा सा बचे थे वहां पे गेंदबाज, लेकिन इस बार गेंद ज्यादा ही बाहर चली गई. वाइड का यहाँ पे संकेत होता हुआ. अब रन चाहिए 11 गेंदे 10 रन. Score moves on 38. 10 from 11 deliveries. Who's going to be in more pressure? Is it Nizam or is it going to be Saud Patel? The good contest between bat and ball. Another one goes outside the off stump. बैंक बैलेंस कम और खर्चा ज्यादा है. अभी यही हो रहा है सर. आपके पास बैंक बैलेंस कम है, आपको खर्चा भी कम करना है. As expected, this man to bowl to the offside of the right-hand batter. He's probably missing his line on this occasion. Has 39 for 4, 9 to win from 11 deliveries. This is going to go down to the wire for sure. Driven nicely. There's no field inside the circle. Extra cover will cut it off just for a single. He's not going to run. Yes, no, and finally settle down for a single. 40 for 4 now. 4.2 overs. Udupi cricketers are chasing this. Can they sail through? You're facing one of the best bowlers in this tournament. Already proven that.
taken 3 wickets. Here we go. Oh, it's too early for the shot. Beautiful length and line. You take a ball. Saud Patel 1.3, 14 runs conceded, 3 wickets. साउथ पटेल की यही खासियत है सर, जिस प्रकार से गेंदबाजी करे, अंडर प्रेशर है, ऐसा नहीं आपके पास बहुत ज्यादा रन है, आपके पास कम रन है, फिर भी अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाजों की तरफ से. मजा आने वाला है मुकाबले में, नो डाउट. फिर से पीछे रखा बल्लेबाज को कह रहे हैं, बल्लेबाज यही कह रहे हैं, ढूंढो ढूंढो रे साजना. And he's just wondering where this ball is pitching and where it's going. It's pitching, it is using the surface of this pitch, you know, the hard surface in this 30-yard pitch, using the pitch, using the experience, and he is the man at this moment. 8 गेंदे 8 रन, मुकाबला बदल चुका है, मजा आने वाला है. ये नेल बाइटिंग वाला मुकाबला है सर, क्योंकि कभी इधर चला कभी उधर चला वाला मुकाबला है. Yes, the game is still on. It could be still 50-50. Could be anybody's game, Chirag. 2 to go. 40 for 4. You will expect an absolute silence here if he can get 1 wicket. This is what he is looking for. On the other side, Shakir is wondering what to do. Oh, brilliant! Absolutely brilliant. Look at the way he fielded his own bowling. सर क्यों मुझे इंडिया से यहाँ पे लाया गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं वलीद इलवन के पास, नो डाउट, लेकिन जिस प्रकार से पटेल ने गेंदबाजी की है, अब ये मैच में जा फूक रहे. 7 गेंदे 8 की जरूरत है. Have a look at this bowling now. Wide, started off with 2 wide, and he conceded a single. After that, 3 dots. Would you believe that? लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर, 7 गेंदे 8 रन, मुकाबला बदल चुका है, मजा आने वाला है. लास्ट बॉल, इस बार गेंद को अंदर आया, फिर वहां पे फील्डर मौजूद है, फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया. अब 6 गेंदे 7 रन, 6 बॉल 7 रन. साउथ पटेल के लिए तालियां बजनी चाहिए दोस्तों. व्हाट अ बॉलिंग. क्यों मुझे इंडिया से यहाँ पे लाया गया कि 2 ओवर में 15 रन, 3 विकेट यहाँ पे लिए. That's in a 6 overs match. It's not a 20 overs match, mind it. So this is, he has done his job, Chirag. उसका काम किया है. लेकिन the question है कि who is going to bowl the last over, and he has to defend 7 runs from the 6 deliveries. It's going to go down to the wire. This is game number 2 of Asian Cricket League Season 3. It's not going to get over unless a bowler comes and produce at least 2 dot deliveries. You need 7 runs from 6 balls. Here we go. वालिद भाई की तरफ से और एक इनाम आता हुआ. अगर इस मुकाबले को बॉलर जिताता है तो 500 रियाल यहाँ पे दिया जाएगा. अब आखिरी ओवर किसके पास है? 6 गेंदे 7 रन, मुकाबला तगड़ा है और 500 रियाल किसके हाथ में जाएंगे, किसके पक्ष में जाएंगे? So 500 real is going to be for the bowler or for the team? For the bowler only. वालिद भाई बॉलर के लिए? Yes. So bowler के लिए 500 रियाल का इनाम. That is something amazing. Now let's see who is the bowler. It is Samiullah. Same like my co-commentator Samiullah. He's also a bowler. Samiullah with the ball. Jersey number 99. Looks like a Pakistani pace bowler. Another offer. If you get a 6 of Samiullah, get 200 reals. Come on, batter. And Samiullah, you have a 500 real offer. If you can win this match from now, 6 balls to go, 7 to win. Oh, brilliant! Just above the fielder, the mid wicket. He tried his best, but not his best. 200 real. Somebody has offered him. Watch out. Declare 200, Ramzika. Another 200 for another 6. It's raining 200s and 500s here in absolute cricket ground.
What a cricket match we are witnessing. The day number 1 of Asian Cricket League. And Udupi cricketers just need a run to win from the 5 deliveries left. Oh, that may not be a six. That's a boundary to score the most important, valuable victory. And that's a beautiful executed chase by this team. Udupi cricketers 51 for 4. I need to pay Valid 11, 47 for 10, and convincingly winning this contest. But we have witnessed some very thrilling, exciting cricket actions. South Patel has given a lot of hopes by taking those 3 wickets, just considered 15 runs. But you got to give credit to the batters who kept their nerves towards the end and made sure that they play that important last shot which just needed, and 1-6 completely changed the momentum of this game. It is not very long for the 3rd game of the first day of ACL. We are going to watch some amazing cricketers in the next game. Coming back to you very, very shortly. Thank you, Shalzar. What a fantastic cricket. Udupi cricketers won the match by 6 wickets. There was a neck-to-neck match, a thrilling match in the Premier Techno Media presents Asian Cricket League ACL Season 3, sponsored by Just Us and O2. Associate sponsor BK Fright, Marbo Trading, Icon Trading Center, Gulf Plan Trading, Creative Edge, and bold sponsor Sixer Supremo, media partner Symphony, printing partner Printech, strategic partner Red Apple, support sponsor A Plus Contracting, trophy partner Tandoora King Restaurant, venue partner Absolute Sports, star of the day in every day Ibad Sports, gift partners EcoFresh, Wada Trading, Al Nool Trading, Food Art Restaurant, Gift Shop, MJ Sports, Motorola, ID Optics, Pranav Sports, Ibad Sports, DY Sports, Calicut Rahmat Restaurant, and Nayab Indian Attar. Thank you for all the sponsors. M3 Tigers won the toss and elected to field first.
Once again, welcome you all. The premier token media presence, premier techno media presence. Asian Cricket League Season 3. Today the day 1. Third match between Hanan CC versus M3 Tigers. ये मुकाबला काफी बड़ा है क्योंकि इस मुकाबले में मैं देख रहा हूँ रौब भाई वर्सेस इमरान। ये बड़ा मुकाबला है, कभी ये दोनों एक साथ खेलते थे हनान के लिए, लेकिन आज आमने सामने है रौब भाई वर्सेस इमरान भाई, तो मजा आने वाला है इस मुकाबले में। हमारे सारे दर्शकों का सारे दर्शक इस मुकाबले में अपनी निगाहें रखे हैं क्योंकि ये मुकाबला काफी बड़ा है। एक जगह पे कादर भाई जिनके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं क्योंकि कतार में अगर किसी ने बड़े क्रिकेट को अगर टेनिस क्रिकेट को अगर बढ़ाया है तो वो नाम है कादर भाई। और जिस प्रकार से हमने हमेशा देखा है हनान क्रिकेट क्लब ने जिस प्रकार से टूर्नामेंट का आयोजन किया 2016 में, ऑल इंडिया ओपन के टूर्नामेंट्स हमने देखे कादर भाई के पूरे मैनेजमेंट में, और मज़ा आता है ऐसे मुकाबले हमने देखे। और उन सभी टूर्नामेंट में हमें एक मौका मिला, उसके लिए मैं कादर भाई को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और आज भी हम यहाँ पे जो है उनका पूरा श्रेय कादर भाई और पूरी टीम को जाता है क्योंकि हमेशा हम पे उन्होंने भरोसा जताया है। लेकिन ये मुकाबला काफ़ी तगड़ा है, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर जा चुकी है और इस मुकाबले में मज़ा आने वाला है क्योंकि एक जगह पे हनान क्रिकेट क्लब, दूसरी जगह M3 टाइगर्स। मैं वही बोल रहा हूँ, ये बैटल है रौब भाई वर्सेस इमरान। ये मैंगलोर के काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं और जब मैंगलोर में ये खेलने आते हैं तो दर्शक भी अपने साथ लाते हैं। आज इमरान कोटेश्वरा किस प्रकार से खेलेंगे इसके ऊपर आज पूरी मैंगलोर की निगाह है और मैंगलोर से है, तो उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन मैच की बार और बढ़ेंगे इरफान, और इरफान के साथ हसरत। इरफान के ऊपर हमारी निगाह है क्योंकि इरफान के बारे में हम बातें करेंगे जरूर। पहली गेंद बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे इरफान, लेकिन गेंद और बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं। इरफान की बात करें तो इरफान ने भी वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। आज वो क्या हनान के लिए खेल पाएंगे, इरफान के ऊपर निगाहें होने वाली है नो डाउट। लेकिन गेंदबाज वैशाख, पिछले साल में इन्होंने अपना दमखम दिखाया था वैशाख ने। इस बार पलटी स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, अपील लाउड हो रही है लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम वाला अपील और गेंद आती हुई डॉट। हम देख रहे हैं जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट की बात करें तो टेक्नो मीडिया प्रेजेंट ये टूर्नामेंट है और हमेशा कहते हैं हमारे साथ हमेशा ही जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है जस्ट अस ऑटो, इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इस बार फिर से आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे हैं इरफान की गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, यहां से थोड़ा अपने आप को रोकना होगा, गेंद को बल्ले पे लेना होगा। वैशाख की बात करें तो वैशाख काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नो डाउट, वो लाइन और लेन पे मेंटेन कर रहे हैं सर, और यही होना चाहिए क्योंकि पावर प्ले हम कहते हैं जब पावर प्ले में गेंदबाजी होती है 6 ओवर के मुकाबले में तो गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होनी चाहिए सर। Absolutely right. Vaishak doing superb, very well bowling. 3 dot balls in power play. Vaishak into Irfan. Irfan, the man who hit the ball with यही बात कर रहा था, इरफान एक बड़े खिलाड़ी है और इनके पास वो दमखम है। और ये देखिए पहले 2-3 गेंद इतनी अच्छी नहीं खेली लेकिन जब खेला तो गेंद को आउट ऑफ द पार्क भेजा। 6 रनों के लिए सिक्सर का ये बॉल है। केतन भाई सेठ इस मुकाबले को वो भी देख रहे हैं इंडिया से, उनका भी तहे दिल से स्वागत है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस एशियन क्रिकेट लीग को। और स्कोर की बात की जाए स्कोर कार्ड पे लगे 6 रन। हनान क्रिकेट क्लब का जो खाता खोला है वो 6 के साथ खोला है सर जी। Yeah, with that 6 they open their scorecard. Hanan CC 6 without loss in 4 balls. यहाँ पे लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, क्या दूसरे की तलाश नहीं, सिंगल पे ही संतुष्ट।
सर मुझे 2017 याद आता है। 2017 में हनान क्रिकेट क्लब ने हनान क्रिकेट क्लब का ही वो टूर्नामेंट जीता था, टाइटल स्पॉन्सर। वहाँ पे हमने रायगढ़ के खिलाड़ी देखे थे और कादर भाई का वो हमने जो सेलिब्रेशन देखा था वो हमें अभी भी याद है। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 7 रन, 7 ऑन बोर्ड और ओवर नंबर चलता हुआ ये पहला। लेकिन वैशाख की तारीफ करूंगा, लाजवाब गेंदबाजी अब तक इन्होंने की है, 5 में 7 दिए। अब बल्लेबाजी के लिए हसरत और थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव। शेरिन को मैं देख रहा हूँ, शेरिन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और बहुत अच्छा क्रिकेट पर पिछले साल भी हमने देखा है उनके माध्यम से। प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस बाहर करना है, थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज। अब ये भी अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, ओवर समाप्त होता भाई। अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे हैं 7 रन। इरफान खेल रहे हैं 7 पे, जिन्होंने एक छक्का लगाया था और अब हनान सीसी का स्कोर 7 रन बिना कोई नुकसान। Yeah, Vaishak bowled superbly in the power play. He gave only 7 runs. 4 dot balls and 1 6. He given only. Irfan, the man, the big man on strike. 7 runs he scored. Hanan CC 7 without loss in first over. थोड़ा सा हम देख रहे हैं, थोड़ा मैच में रुकाव था, थोड़ा सा अब अपने ग्लोव्स को बदला। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन। इरफान के ऊपर नजरें होंगी, एचबीसी अलायंस के लिए इन्होंने क्रिकेट खेला है और काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है, नो डाउट। इनके पास वो क्षमता है, ये बड़े स्ट्रोक को तलाश सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बात करें एम3 टाइगर्स की, टाइगर दहाड़ रहे, क्योंकि पहले ओवर में टाइगर्स ने जिस प्रकार से पूरी तरह से शिकंजा कसा है, ओवर पे कहीं पे भी उन्होंने छूट नहीं दी है। काफ़ी अच्छी अब तक गेंदबाजी हुई है, एक छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से गेंदबाजों ने किए, खास करके वैशाख, तारीफ करूंगा। थोड़ा सा भी बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया, जहाँ पे खराब एक गेंद थी वो खराब नहीं थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन वहां पे रन बने थे। Yeah, previous 2 matches, the first over they took only 7 runs and the first match they reached 83 and the second match only 48. रमजी भाई हमारे जो दर्शक है वहां पे जो कैमरा के पास बैठे वो वहां से उठ जाए प्लीज। कैमरा वहां पे थोड़ा सा शेक हो रहा है, प्लीज आप थर्ड कैमरा के पास बैठे हो प्लीज। स्क्रीन के बाजू वाला वहां पे जो कैमरा है वहां पे बैठे हैं दर्शक, प्लीज आपको उठना है वहां से। वो जो कैमरा के पास बैठे उठ जाए प्लीज। Yes, those guys were sitting near to the camera. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Please move from that side. मफास। Yes, talking about Mufaz Ashuraq. He has plenty of experience, an experienced campaigner, senior player, and he can change this game. बहुत साल से क्रिकेट खेला है, बहुत अनुभव। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि चूना चावल है, काफी। Absolutely. यस, इनके पास भी वो क्षमता है। लेकिन सामने इरफान, ये फुल टॉस गेंद और ये नो बॉल भी है, इसका मतलब सोने पे सुहागा। Yes, that's a 6. That's it. A no ball. The free hit is coming up. He will be under pressure. Vishak is having a word with Mufaz. It was above the vest. It's clean hit, stand and deliver. It's a flat 6. Ball has disappeared from this ground again. How many sixes? How many sixes we have seen so far? सर अभी उसका कैलकुलेशन हमारे रॉब भाई बताएंगे कितने सिक्सर देखे, लेकिन ये 7 रन मिलेंगे। ये नो बॉल थी और फ्री हिट है, इसका मतलब भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना। अब यहां से कितने रन आएंगे, क्योंकि इरफान के लिए लाइसेंस टू किल ऐसा कहे सर। Yes, freedom to hit. Here we go. Has left it over outside the off stump. The free hit is still there. स्कोर मूव्स ऑन 15 रन। पहले ओवर में रन नहीं बन रहे थे, इस ओवर में अब तक एक भी गेंद नहीं हुई है, यानी एक नो बॉल थी और ये वाइड।
8 रन अब तक थोड़ा सा मफाज भाई कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, तेज करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर से भाई प्रेशर प्रेशर और ये प्रेशर है सर। आपने पूछा था कितने सिक्सेस हुए, अब तक 24 सिक्सर लगे इस पूरे, अभी ये तीसरा मुकाबला शुरू हो गए 24 सिक्सेस लगे, तो आप अंदाज कर दीजिए लास्ट दिन तक कितने हो जाएंगे। Absolutely, and we will talk about the sixes. Yeah, we got big six hitters in this tournament. This is Asian Cricket League. और We ये have the गेंद भी best- सिक्स, ये गेंद का नाम भी सिक्सर है सर, ये अलग चीज है। Mofaz under pressure. Can he come back strongly? ये Ah, low this full time toss गेंद, connects. गेंद को जिस प्रकार से खेला गेंद नीची रही। और मफाज भाई की बात करें तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है, हमने पहले कहा कि ये पुराना चावल है और उन्हें पता है कि कहाँ पे अंडर प्रेशर किस प्रकार से गेंदबाजी की जाती है। उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और बड़े स्ट्रोक से थोड़ा सा पीछे रखा बल्लेबाज इरफान को। स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 17 रन, इस ओवर की सब तक एक गेंद हुई है। पिछले मुकाबले में 48 रन का ही लक्ष्य था, लेकिन इस मुकाबले में अब रनों की गति को बढ़ा सकते हैं बल्लेबाज। मफाज थोड़ा सा अपने गेंदबाजी का मोर्चा बदल रहे हैं, वो छोर बदल रहे हैं, क्योंकि हम बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज वहां पे हैं। स्कोर कार्ड की बात की जाए 17 ऑन बोर्ड, ओवर नंबर दूसरा बीच मैदान के अंदर। Yes, around the wicket, Mofaz. But Up in there, up in there. Who wants himself is not going to drop that. He is not going to drop all those easy catches and is paid the penalty. Yes, he has given a few extras, but what a comeback. What a comeback from this experienced bowler. It's taken an important wicket. Left-hand batter has to depart on this occasion. And Irfan is still there, 14 from 7. And Hanan Sisi losing their first wicket in 1.2 overs, 17 for 1. 17 रनों पे लगा हुआ ये पहला झटका। लेकिन अब जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मैन जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, इमरान भाई, जिस प्रकार से पिछले साल ये नहीं थे और हनान का जो हम कहे कि टूर्नामेंट का सफर था वो जल्दी खत्म हुआ था, लेकिन आज इमरान आज टीम में है। क्या कहना चाहेंगे शेलदार भाई, ये टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है हनान क्रिकेट क्लब के लिए। Yes, Imran, I'm watching him after a long break in a cricket tournament. I just had a word with him, had a coffee with him. He is going to keep his cool head. He's not going to take any unnecessary risk. He is the man, he is an important factor in this tournament, in this match and in this innings. It's all about Imran, how he's going to keep his cool head. He's come out to bat after losing the first wicket for Hanan Sisi, 17 for 1. That's going to be Mofaz bowling to Imran. It's going to be a very good contest between bat and ball. ये दो बड़े दिग्गज हैं, मैं दिग्गज कहूंगा क्योंकि काफी साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों को पता है कि 19 क्या है और 20 क्या है, तो मजा आने वाला है इस मुकाबले में। हम हमेशा कहते हैं कि जो यहाँ पे दिग्गज है उनके बीच वाला मुकाबला मजा आने वाला है। मफाज टू इमरान, ये पहले ही मन बना लिया था, लेकिन ये धीमा गेंद, यही कह रहे थे कि इनके पास वो एक्सपीरियंस है, इन्हें पता है कि कहाँ पे वो गेंद करनी है, उन्होंने पढ़ लिया था और उसके बाद गेंद को किया। काफी अच्छी गेंदबाजी। Very well done, and he is so good when it comes to this kind of innovative shots, and his off the mark in style is one of his favorite shot. There is a man, it is precisely kept for Imran in the deep fine leg region. He's going to convert those. इरफान के ऊपर भी निगाहें होने वाली है। अब तक का स्कोर 18 मफास, ये लोअर फुल टॉस गेंद है, गेंद को खेला वहां पे खतरा हो सकता है, लेकिन वाटर फील्डिंग, ये हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कि गेंद कहां पे जाने वाली है, कब मुझे जंप करना है, उन्होंने वहां पे वो देखा, उसके बाद गेंद को फील्ड किया। शलधर भाई, Brilliant piece of fielding, and what a return. It's quick. And please note this card number which is blocking a spectator's car here. It is 215384. It looks like a Mitsubishi. It's a pickup. Please remove from the blocking area. Car number 215384. Left it over outside the off stump. Yes, the car number which is blocking the way, and other car 215384.
please remove from the blocking area. स्कोर की बात की जाए 20 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर मफाज थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज करेंगे। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, फील्डर वहां पे है और थोड़ा सा मिस फील्ड और फायदा उठाया। रौफ भाई है वहां पे। रौफ भाई की बात करें, मैंने सर पहले भी कहा कि रौफ और इमरान एक ही टीम के लिए खेल रहे थे, हनान के लिए, लेकिन आज आमने सामने वो M3 टाइगर्स में, वो हनान में है। Yes, Rauf and Imran, very good friends, playing in opposition teams. That's going to be very interesting. And Rauf fielding in that important person covers region. Oh, big shot! Has he got enough? I reckon he has. Out of the park again, and it's a magnificent 6 to finish this over. और अब तक टाइम देखिए, टाइम कितना लिया गया है। ये 2 ओवर के लिए 12 से ज्यादा मिनट लिए गए, अभी भी 4 ओवर करना है। अगर यहाँ पे टाइम के ऊपर भी निगाहें होनी चाहिए। मैं कहूंगा टीम M3 टाइगर्स को देखना चाहिए कि वो टाइम कहाँ पे जा रहा है। 2 ओवर की समाप्ति 27 रन। मफाज की ओवर की बात करें तो 20 रनों का वो ओवर, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे वैशाख ने, लेकिन यही तो क्रिकेट है। ये हमेशा कहता है कि पलक झपकती परिस्थितियां बदल जाती है शेलदार भाई। Yes, it's a difference of 13 runs between Vaishak and Mafaz. A huge difference, an expensive over, 20 runs, a champion bowler Mafaz. Now the question is the third bowler. This is going to be the third over, 27 for 1. And this is going to be Shafiq. शफीक की बारे में बात करें तो कतर क्रिकेट में इनका भी नाम काफी ऊपर लिया जाता है। शफीक एक बड़ा खिलाड़ी है, शफू के नाम से जाने जाते हैं, शेपू के नाम से जाने जाते हैं, और ये भी बड़ा नाम है। क्या आज वो कुछ कारनामा करेंगे? लेकिन सामने इमरान, मैंगलोर का हीरो, आज उनका स्टाइल कुछ अलग है। इमरान का बैटिंग स्टाइल कुछ अलग। इस बार खराब शॉट सिलेक्शन, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और बड़ा विकेट। इमरान, यहाँ पे शेबू आए और उन्होंने कहा बाय बाय टाटा। I'll tell you what, Chirag, absolute pandemonium. Now, how many people have come here to watch Imran's batting? Got fans all over Qatar, but just paid an unnecessary shot. As you rightly mentioned, Shafiq Chepu is another experienced campaigner. He knows how to bowl to Imran. He knows how to bowl to best batters at back of the length. He is going to go for his typical reverse sweep. Just not able to lift it. Just not able to have enough power and timing. Getting a leading edge and is given away his wicket. सर देखिए कितने दर्शक गायब हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ से भी दर्शक जा रहे हैं। जैसे इमरान लौटे, दर्शकों ने भी टाटा बाय बाय किया। वो भी कह रहे हैं कि हम इमरान की बल्लेबाजी देखने आए थे, लेकिन इमरान ने उनको खासा प्रभावित नहीं किया। As a big match player, he'll definitely come back in this tournament, but nevertheless, he has to depart on this occasion. And Hanan Sisi losing another wicket, 27 for 2 from 2.1. And Raniz walks into the middle in a tricky situation. They need to build a partnership. The middle order of Hanan Sisi will be tested here. And Tigers are roaring at this moment. This introduction of Shafiq into the bowling attack. He has taken an important wicket. ये तीसरा ही ओवर है, स्कोर आ रहे थे। मुझे लगता है इरफान को स्ट्राइक पे लाना ये काफी जरूरी था सर, लेकिन यहाँ पे खुद शिकार बन गए इमरान, और ये बहुत बड़ा झटका। 27 पे 2, ओवर नंबर 3, गेंदबाजी के लिए शफीक आए और विकेट लेके चले गए। शफीक के सामने अब चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, यही तो खासियत है। हम हमेशा कहते हैं आप टेनिस क्रिकेट में मिश्रण होने चाहिए। आप एक ही टिप्पे पे गेंदबाजी नहीं कर सकते, आपके पास वो मिश्रण होने चाहिए, और यही मिश्रण दिखाते हुए शफीक, व्हाट अ बॉलिंग। यहाँ पे थोड़ा सा गेंद पे उंगलियां फेरी थी उन्होंने, डॉट बॉल। इस बार थोड़ा सा तेज किया बल्लेबाज ने, उस गेंद को रीड किया, फील्डर है वहां पे, गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पे आएंगे इरफान। स्कोर मूव्स ऑन 28, गेंदे हुई है 3, ओवर नंबर 3। इस 3 गेंद के बाद हम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की ओर जरूर बढ़ेंगे, लेकिन अब ये 3 गेंदे शफीक किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे, और सामने इरफान का खड़े रहना ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है सर, क्योंकि अब इमरान का विकेट जाने के बाद क्या यहाँ से जिम्मेदारी कंधों के ऊपर होगी। Absolutely, they need to make a good partnership here in the middle order. Shafiq
Oh, brilliant. Another change of pace, but this time he was covering the entire stumps, and it's not a run, it's a dot ball. And this is what he can do. He can really put the pressure on the opposition. As an experienced campaigner bowling this third over. Gain number 1 for this team. Tigers have taken an important wicket of Imran. They are enjoying out there in the middle. Nicely played. Rauf will cut it off. Just a single. स्कोर कार्ड की बात कीजिए 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर में 27 थे सर। इस ओवर की 5 गेंदों की कहानी देखें तो 1 विकेट खोया है और सिर्फ 2 रन आए। क्या वापसी की है, ये वापसी वाली गेंदबाज है शफीक। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, इरफान ने कहा नो, और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट की ओर बढ़ेंगे क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ये स्ट्रैटेजिक टाइम आउट आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब रन बने हैं 3 ओवर में 29 रन, विकेट खोए हैं 2 और 3 ओवर का खिलाना बाकी। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी शफीक की तरफ से, और हम थोड़ी देर के बाद आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक समीउल्लाह सर हमारे साथ जुड़े। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Chirag and Shalzar. The big match between Hanan CC and M3 Tigers. Hanan scored 29 for the loss of 2 wickets. This is the Premier Techno Media presents Asian Cricket League 2024 ACL Season 3, sponsored by Gestas and Auto. Thank you for the title sponsor. Irfan, the dangerous man on crease, now 22 he scored with 3 huge sixes. One minute, umpire, 1 minute. Over to the match. After 3 overs, 29 for 2. Raniz and Irfan on strike. New bowler. Sherin, the new bowler from Pavilion, and in from batsman Irfan. Irfan scored 22 from 11. Once again, just push the ball to the long on region. Single run added to the total, and total moves to 30 for 2. Once again, Sherin. Into Raniz. Just push the ball the same region, long on, straight the hands of fielder. There's no mistake. Single added total. Total moves to 31 for 2.
Sherin with long run up into Irfan. Irfan tried for a big hit swing and a miss, but the ball hit on his body. Keeper took the ball and single added. One more added total, and total moves to 32. This is the third match of Asian Cricket League Season 3. Fourth ball, Sherin. Once again, try for a big hit. It's not connected well. The ball goes to third man region. Single added. 33 for 2. Fourth over in progress. Very good over so far. Sherin gives only 4 runs in 4 balls. 4 singles came so far. Irfan, the informed batsman, 24 he scored in 13 balls with huge 3 sixes. Irfan hit the ball up in the air. There is a man underneath and he took easily. Irfan, the dangerous man, back to pavilion with 24 runs in 14 balls. He hit 3 huge sixes, and that's a great loss for Hanan Cricket. सबसे बड़ा विकेट हम कह रहे हैं इरफान एक बड़े खिलाड़ी है, लेकिन आज थोड़ा सा अकेले वो खेल रहे थे। जिस प्रकार से 24 रनों का उन्होंने योगदान दिया। अब नए बल्लेबाज की ओर भी बढ़ेंगे। स्कोर कार्ड की बात की जाए 33, लॉस ऑफ 3। आखिरी गेंद आने बाकी, तालियां बज रही है क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की इरफान ने, नो डाउट। लेकिन अब यहां से क्या बल्लेबाज दोनों, क्योंकि 13 गेंदों का खेल आना बाकी है सर, और मेरे हिसाब से अगर 13 गेंदों में 20 या 25 आएंगे तो मजा आएगा। और ये मुकाबला ऐसा है कि दोनों ही बड़े दिग्गज आमने सामने, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक जगह रौब भाई, दूसरी जगह इमरान। ये जो बैटल है वो काफी बड़ा है। Absolutely, if the score reaches 60, it will be a good match. Now 13 balls to go. Fourth over is progressing, 33 for 3. Sherin into the new batsman, Lukman. लुकमान के बारे में भी हम चर्चा हमेशा करते हैं इस टूर्नामेंट में। और व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। शेरिन की एक खासियत है, और तेज तरार गेंद की 1 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। अंपायर ने कहा बाय के संकेत। स्कोर मूव्स ऑन 34, 34 रन। व्हाट अ बॉलिंग बाय शेरिन। शेरिन की इस ओवर की बात करें तो सिर्फ 4 रन खर्च किए और 1 विकेट इन्होंने हासिल किया है। अभी भी आने वाली 12 गेंदें, क्या हनान क्रिकेट क्लब यहां से वापसी कर पाएगी? 9 मिनट आपके पास बाकी है, ये ध्यान रखें टीम M3 टाइगर्स। ये लास्ट कॉल है आपके लिए। आपके पास सिर्फ 8.50 ये टाइम बाकी है, तो ध्यान रखें प्लीज। अब आखिरी 12 गेंदें, ये 12 गेंदों में क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन ये मुकाबला तगड़ा मुकाबला। हनान क्रिकेट क्लब जिस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की थी, पहले ओवर में 17 रन, 7 रन, फिर 20 रन, 27, फिर थोड़ा सा ब्रेक लगा, पिछले 2 ओवर में सिर्फ 7 रन आए। कहीं ना कहीं मुकाबला बदलता हुआ, लेकिन अब शफीक चेपू, सामने बल्लेबाज लुकमान। Shafiq into the big man, Lukman. पैरों पे गेंद करने की कोशिश, गेंद को खेला ऑन साइड के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर बहुत ही अच्छा फील्डिंग, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए। तीसरे की कोशिश नहीं, 2 पे संतुष्ट। व्हाट अ फील्डिंग, ये होना चाहिए। साजिद वहां पे गेंद को फील्ड करते हुए, तालियां बजती हुई, दर्शकों की तालियां बजनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा करते हो तो फिर वहां पे तारीफ करनी होगी। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लेंगे 36-36। Super piece of fielding by Sajid. Now Shafiq. Loud appeal for caught behind and umpire given. Lukman, the man, back to pavilion. Super piece of bowling by Shafiq, and the keeper took the catch easily. लुकमान जिस प्रकार से गए थे वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और यहाँ पे जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है, लुकमान की पारी यहाँ पे समाप्त होती हुई 36 पे 4, ओवर नंबर 5 बीच मैदान के अंदर। आप देख रहे हैं एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये डे 1 में ये मुकाबला नंबर 3।
लुकमान 3 गेंदे खेले, 2 रन बनाए। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। छत्तीस पे 4। लुकमान आए और लुकमान चले गए। नए बल्लेबाज की तरफ हम जरूर देखना चाहेंगे। रिमशान बल्लेबाजी के लिए स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे 36 रन। पहले ओवर में से रन नहीं आए थे, दूसरे ओवर में 20 आए थे, उसके बाद ये गेम पलटा है। इस बार फिर से गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे आएंगे और ये छोड़ दिया और ये 2 रन मिलेंगे। और ये हाथ में भी गेंद नहीं आ रही है। तीसरे की मांग, लेकिन 2 पे संतुष्ट। स्कोर मूव्स ऑन 38। पहले मुकाबले में रन आए, दूसरे मुकाबले में रन नहीं आए, तीसरे मुकाबले में भी रन अब तक बहुत कम आए। इसका मतलब है 38, लॉस ऑफ 4, ओवर नंबर 5। आप देख रहे एशियन क्रिकेट लीग, हनान क्रिकेट क्लब को यहां से वापसी करनी होगी। उन्हें कहना होगा कि ऑल इज वेल। अच्छी गेंद सिंगल की तरफ जाएंगे, दूसरे की मांग होगी या नहीं। एक पे संतुष्ट, दूसरे की मांग होनी चाहिए थी, लेकिन एक पे ही संतुष्ट। 39, 39 रन, ओवर नंबर 5। आखिरी 8 गेंदें आनी शेष। शफीक की बात करें, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नो डाउट। शफीक ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, नंबर 55 की जर्सी परिधान की है शफीक ने। शेफू 39, लॉस ऑफ 4। Absolutely, Shafiq bowled superb. 1.4 over, he given only 7 runs. Once again, swing and a miss, but the ball goes far outside the off stump. Umpire call is wide. Extra added to total, and total moves to 40 for 4. Fifth over in progress, 4.4 overs, 40 for the loss of 4 wickets. Review for the wide. There is some it's a fair delivery. Umpire, you change the decision. It's a fair delivery, and the score 40 for 4. One more to go in this over. Super piece of bowling straight to the block hole. Batsman can't do anything. Shafiq, the man who did superbly, 2 overs, he gave only 7 runs, and he took 2 brilliant wickets, 2 big fish he got. And after 5 overs, 39 for 4. This is the lowest score so far in the 5 over. This is a big match between Hanan and M3 Tigers. 2 ओवर में 27 रन थे सर, और उसके बाद जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, पिछले 3 ओवर में रन आए सिर्फ और सिर्फ 12। इसका मतलब है बल्लेबाजी नहीं चली है। इरफान ने विकेट अपना जल्दी गंवाया, और ये आखिरी ओवर ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, नो डाउट। और ये आखिरी ओवर लेके गेंदबाजी के लिए अब नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। And he is the man, the new bowler, into Rimshan. What a bowling! You miss me, I definitely hit you. Gain under और दंडी बाहर, wicket. Super piece of bowling by Anis. He took wicket in the first ball of his first over. 39 for 5 in 6th over progressing. The last over of the first innings. Hanan sees he's struggling. They scored only 39 for 5. Now new batters safe walking to the crease, joining with Renis.
This is the third match of Day 1 Asian Cricket League Season 3. Anis once again into safe. The new batter in crease. Once again, super piece of bowling. The ball hit in the chest of the batsman. Wicketkeeper collect the ball superbly. One leg by added. Total moves to 40 for 5. 40 पे 5 और अभी आखिरी 4 गेंदें आने बाकी है। हनान क्रिकेट क्लब को यहाँ से रनों की गति को बढ़ाना होगा, नो डाउट। नए बल्लेबाज रनीस ने गेंदों की बात की, 7 गेंदें खेली है, सिर्फ 3 रन बनाए अपने टीम के लिए अब तक। थोड़ा सा वहाँ पे मैच में थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे गेंद लगी थी कीपर को, थोड़ा सा वो जूझ रहा है। और अब तक का स्कोर 40 पे 5। 40 पे 5। अभी भी मैच रुका हुआ, थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चोटिल हुए थे खिलाड़ी और उसी कारण थोड़ा सा मैच को रोका गया। और यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रुके मैच में। ओवर नंबर की बात करें तो ओवर नंबर चलता हुआ ये आखिरी 4 गेंदे। अनीस into Renis. ये महत्वपूर्ण होगा। अनीस टू रनीस। अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई। इस गेंद को ऑन साइड पे खेला, वहां पे फील्डर है, वो गेंद को जब तक फील्ड करे और एक रन सैफ के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी। स्कोर मूव्स ऑन 41 41। 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी 3 गेंदें। इरफान ने अच्छी बल्लेबाजी की। आज इमरान से काफी उम्मीदें थी, इमरान उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे और फिर वहां से मुकाबला बदला। जैसे इमरान का विकेट गया, मैच बदला था वहां पे। बोल्ड सेफ आए और सेफ चले गए। विकेट नंबर 6। 41 लॉस ऑफ 6। What a bowling by Anis. Great piece of bowling. 2 ball he did already in 4 balls. He given only 1 run and he took 2 wickets. 2 big wickets of Hanan. And the scoreboard is 41 for 6. 5.4 overs. Only 1 minute remain. 2 balls to go. जिस प्रकार से ये मुकाबला आगे बढ़ा, उस मुकाबले के बारे में भी पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से गेंदें हुई, अब तक स्कोर की बात करें तो स्कोर कार्ड पे लगे 1-1। मंसूर, ये 1-1 है और क्या अपने टीम के लिए कुछ रन बना पाएंगे? स्कोर मूव्स ऑन 41। वो टाइम है भाई। Mansoor, the new batter on crease, joining with Renis. Anis with long run up. आए, अच्छा स्ट्रोक खेला, वहां पे फील्डर है, वो गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 42 42। आखिरी गेंद रनीस के लिए। अब ये मौका है कि भाई आखिरी गेंद पे कुछ बड़ा स्ट्रोक खेले और जो 8 गेंदें उन्होंने खेली है, जिसमें सिर्फ वो 4 बनाए, उसको वो थोड़ा एवरेज करे। ये इनको गेंद दिख ही नहीं रही है, मुझे लग रहा है। डॉट बॉल और विकेट। ये आखिरी गेंद भी आखिरी सेकंड पे गिरी है, वो भी एक अलग यहाँ पे रिकॉर्ड होता हुआ। 42 लॉस ऑफ 6। 43 इज अ टारगेट। 2 ओवर में 27 थे और उसके बाद पिछले 4 ओवर में सिर्फ रन आए 15। ये हनान क्रिकेट क्लब के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इमरान का वो विकेट और फिर इरफान का वो बड़ा विकेट ये मैच को बदलता हुआ। 42 ऑन बोर्ड, 43 इज अ टारगेट।
42 for 7. This is the lowest total of this first day of Asian Cricket League Season 3. Hanan, the big team, scored only 42 for 7 wickets. And 43 is the target for M3 Tigers. And this is the third match of Day 1 Asian Cricket League Season 3. Hanan CC versus M3 Tigers. M3 won the toss and elected to bowl first. As captain decided, the bowlers did well. They give only 42 runs in 6 overs. Irfan, the man only with double digit. He scored 24 from 14 balls with 3 huge sixes. And the bowler Anis and Shafiq took 2 wickets each. Shafiq bowled superbly. He gave only 7 runs in 2 overs and took 2 wickets. And Anis took 2 wickets in 1 over. Premier Techno Media presents Asian Cricket League 2024, sponsored by Just Us and Auto. Thank you for the title sponsor. The next match between EcoFresh versus Infotech Qatar. The last match of the Day 1. Yes, moving on quite nicely. The day number 1 of SEL Season 3 as the innings break between 3. Third game of this evening. Then we'll have one more match to be completed. Please have a look at the time taken between the innings. Just 2 minutes allowed. And bringing back one of those memories. Shakir, the man who hit those 2 sixes, he was rewarded 200 Qatari Riyal from his own team management. Udupi Cricketers team manager as rewarding him. That's 200 Qatari Riyal for that magnificent sixes he hit, and he's going to be rewarded right here. Shakir, well done, and you are going to get the reward as well from your own team manager. Udupi Cricketers is winning that match quite convincingly, in spite of having one of the best cricketer in the opposition team, Saud Patel, and convincingly winning that match. It was a cracker of the contest, a low score game, and chased down convincingly 51 runs. Yes, we have the impact players for these two teams. For Hanan, Shahrukh in and Hakim out, and for the opposition team, Jawad is being left out, and the impact player in is Rizni. All set to go. 2 opening batters, jersey number 15 and 18, very popular players in Qatar. Vaishak alongside with him, Mofaz. 2 very good powerful hitters up front to chase this down. It's a low score. 43 is to win from 6 overs. We have seen a low score game, the game number 2. And Udupi Cricketers have convincingly winning that. They got 51
4 ball to spare, and there's going to be another contest. South Patil was too good with 3 wickets, but still they were able to chase down. Can they repeat the same kind of performance from one bowler here? They need to defend 43 from 6 overs. It's going to be tough. It's an easily chaseable target in the books, but we'll have to wait and see whether the bowlers will come to the party and put the pressure straight away to the opposition team batting. We have 2 opening batters all set. Very experienced campaigners, Vaishak and Mufaz, will have to play sensibly. Yes, we have 2 impact players already announced. Hakim is out and Shahrukh is in. And for the batting team, here's Sampa, let's go. And Irshad, to start the proceedings, a very popular and experienced bowler. Here we go, Irshad, right arm over. 2 more fouls. Straight away driven through the gap. He finds the fielder deep extra cover. Off the mark in style, Mufaz. Have seen Irshad's performance in the last tournaments in Qatar. Was too good with that back of the length deliveries. He's a big match player. Need to maintain this line and length. He is bowling to 2 very important batters in the opposition team, Vaishak and Mufaz. The equation is very simple for them, just 43 runs. Can't take it so lightly and need to get a good start. This power play number 1. Is attempting for the reverse. It's quite successfully completed. Raising towards the boundary. That's Vaishak for you. He has got varieties of shots. He's going to try and do something very different. That's what exactly we expected from Imran in the last innings. Just getting a leading edge is dismissed. Some smart bowling by Shafiq. I got to give credit to Shafiq. Those 2 overs produced a lot of damages for the opposition team. Other side, Irshad need to be very careful when he bowls to Vaishak. Anything width is given, he's going to punish you. It's so strong on both sides. He's going to try and improvise these kind of shots as well. Very well executed, but equally well played. Just driven towards the mid-off. The mid-on region safe. As a fielder, deep extra cover. There is protection, boundary riders, and the long on. And on the offside, you have a boundary. To protect the boundary, there is an extra cover. Straight to the covers. Just get a single. The required run rate is very simple for the batting team. It's just 10 runs per over. They just need to play 1s and 2s. They can easily get through the target. Just 43 runs from 6 overs. We have to complete 1 more match. Request you to kindly speed up in between the overs, guys. Nicely played. Back foot, bit of fumble there. Raising towards the boundary. That is a fielder will cut it off, pull out. On time, 2 more to the total. Now these are important runs. They are not going to take any unnecessary risk. Just about 1s and 2s. It's a big ground. There's absolutely no wind flowing in any direction whatsoever in this absolute cricket ground. It's one of the best cricket ground in Qatar, and you are watching one of the best cricket tournament as Asian Cricket League. Season 3 brought to you by Premier Techno Media as the title sponsor, just as an auto.
Oh, that was something very different. He tried to execute. Vishak is a busy player. He's not going to stop in one set. He's going to try and do many things. That's a leg by call by umpire. That's end of the power play. 6 plus 3, 9 for Nolos. Kindly note the time taken between the overs and 30 minutes allowed per innings. We have to complete one more match this evening. It's 9 for Nolos. After the completion of the power play, I request the last match of the day number 1. Kindly request two teams get ready for the last match. Yes, welcome back everyone to Absolute Sports Ground, Qatar's. Now Hanan CC is taking on M3 Tigers. It's 43 runs to win. The last match of this evening, Eco Fresh is against N4 Tech Qatar. Ramshan into the attack. Second over. It's 9 for Nolos. 43 to win and Mafaz on strike. Yes, he got to reboot, he got to reload everything. Ramshan is bowling his first over. And this tournament is Asian Cricket League Season 3 progressing here in Absolute Pro Sports Ground in Qatar. Very nicely executed and equally well played by Mofad, just pushing for the single to the mid-on region. As long on and long off, deep mid wicket and deep square leg. Driven nicely Vashak. He is looking for a single. Is he looking for a double? A perfect all-rounder in the side you can have. Vashak is too good with the bowling and batting. And he was behind the stump as well. That's a wide. Kept it low outside the off stump. Need to reload this one. Oh, was there a sound? Was there a sound? And umpire says, you got to go, buddy. Mofaz has to depart. Wanted to play that pole start is one of his favorite region. Completely beaten, getting an edge, a genuine edge. And keeper making no mistake. That's Imran. It's a first wicket for Hanan. And need plenty of wickets now. It's a low score game. Just 43 to win. And they will celebrate this because they got a big fish. Mofaz has to depart. Vishak needs a partner there to be there at least for 2 to 3 overs. It's a big game. It's a low score game. And the big man walks in. Jersey number 77. That's Rauf. This partnership is going to be crucial for them. And Rauf is an experienced player. He knows
the situation. He can read the situation. And Vishak is going to go counter-attack as he is known for the power hitting. The anchor role has to be played by Rauf. Yes, moving on, Murimshan's got a big breakthrough for his team now. Rao walks into the middle as the beginning of the second over. Oh, they pack into the right-hand batter. He was driving towards offside. Now we'll have a man of the match prize distribution for that splendid innings. Absolutely superb innings by Shaheen Qatar. And Mr. Najmuka is going to give away. There's another one beaten. Yes, I request Mr. Najmuka, Mr. Najmuddin from Premier Techno Media is going to give away the reward for that superb batting performance. Outstanding innings by Shaheen Qatar. And he's going to receive the man of the match in the game number 1 of day number 1 of Asian Cricket League Season 3. Good looking shot. Oh, big fielding there. Very good fielding. And Rauf has no chance to run towards the other end. We are giving away one more man of the match. This time to Salman. If you can come and receive your man of the match. Game number 2. Mr. Razmi, if you can please give away the man of the match for Salman. Game number 2. And for that 3 wickets haul, Salman is getting man of the match for the game number 2. Coming back to this game, looking for a partnership between 2 experienced players. Rauf just walks into the middle and Vaishak still there. Score at this moment, it's 12 for 1. It's a shot in the air. Who wants a tough catch? It's a long way to cover. And there are 2-3 fielders. It's just not able to catch the ball. It's racing towards the boundary. A much needed one now. The runs started flowing. In spite of losing the first wicket of Mafaz and this partnership. 2 guys out there in the middle. It's a very good delivery. Right on the money. It's beaten completely, waiting for the umpire's call. It's bias. It's a leg by call by umpire. The score moved to 17 for 1. It's 43 runs to win from 6 overs. And Rauf and Voshak there in the middle. Up in the air. Who wants it? They got the height for sure, but not the distance
Two fielders underneath. That's what happens when you have two fielders. Irfan has moved towards and collided with another fielder there. An absolute fumble. Dropped an important catch that could have been a partnership. Should have been broken with this catch. Catches wins the match, especially when you are chasing or defending a target less than 50 runs in a 6 overs. Man, need to be very careful. Spot on in the fielding. And where are you running safe? This time he played really well. He found the gap and racing towards the boundary. He knew what exactly he was doing. He knew there was a huge gap between deep square leg and there is no deep fine leg. The fine leg is inside the circle and he deposited through the gap. It finds an important boundary. A score moved 22-4-1. They just need 21 runs from the remaining 20 deliveries. A runner ball will take them through. He got two very important players out there in the middle. Vaishak's role is very simple. He will be doing the counter attack. On the other side, Rauf will have to play the anchor innings. An easy score to chase down. Trying to go aerial, trying to go toward the square leg. Is very strong on that region. Vaishak has been sent up in the order. A true all-rounder on the side you can have. A busy player is not going to keep quiet. He is going to play all his shots under his belt. This time he connects, finds the fielder. Yes, well done. Very well. Good footwork. Good athleticism there and it's good return. 2 runs he saved for his team. And that's a strategic timeout after 3 overs. M3 Tigers moved to 24-1. They just need 19 from 18 deliveries. Thank you, Shalzar. There's a neck-to-neck match going on. 24 came from 3 overs. The target is 42 from 6. They need 19 more runs in 18 balls. The match is going with neck-to-neck. It's very interesting match. Vaishak's on the crease with 18 runs from 10 balls and Rauf with 1 run. Third, the last match of the day 1, Eco Fresh versus Infotech Qatar. Infotech won the toss and elected to bowl first. There is a strategic time out now. 48 seconds to go. M3 Tigers required 19 from 18 deliveries. 9 wickets in hand. It's a low score match in the day 1 tournament. Premier Techno Media presents Asian Cricket League 2024. Now the new bowler Rimshan with his second over. Rauf on strike. Rimshan. Huge hit from Rauf straight the hands of field and the square leg region.
Loud appeal for caught behind. Umpire given and batsman back to pavilion. Super piece of bowling. And wicketkeeper, no mistake, he took easily. Vaishak, the informed batsman, back to pavilion, and now Rizni walking to the crease. Impact player Rizni joining with Rauf. They required only 18 more runs from 16 balls. This is low score innings from Hanan. This is the lowest total of day one. 3.2 overs, 25 for 2. Once again, Rimshan into Rizni. Right time around into Rizni. There is a fielding change in boundary line. The fielder bring inside the circle. Straight to the hands of fielder. Nicely square cut fielder. Wicket keeper bring a fielder there, and he took the ball easily straight to the hands of same fielder. And one more added, total moves to 26 for 2. 17 from 15 required. Rauf on strike, Rimshan into Rauf. Huge hit from the humongous 6 from Rauf. That out of the park. 11 more required from 14 balls. Rauf shuffle in the crease and hit beautifully out of the park. Once again, Rimshan into Rauf. Straight the hands, low full toss. There is a misfield and the ball goes to the boundary. 7 required from 13 balls. Those fielders lazy on the field and they leave the ball easily. It goes to the boundary, and once again huge hit from Rauf straight to the hands of fielder, and they took single. One more added to total moves to 37 for 2. This is the third match of day one. After completion of 4 overs, 37 for 2. Only 6 runs required from 12 balls. Next match, the last match of day one, EcoFresh versus Infotech Qatar. Infotech won the toss and elected to bowl first. Both captains, please get ready for the next match. Premier Techno Media Asian Cricket League Season 3, Day 1 progressing. Third match between Hanan versus M3 Tigers. M3 required 6 runs from 12 balls. Arokia from Pavilion and into informed batsman Rauf. Rauf hit 1-6 and boundary in the previous over. Now Arokia into Rauf. Once again, very good bowling by Arokia. Super bounce. Batsman tried to hit, he misses completely, and wicketkeeper collected well. Arokia again into Rauf.
Only 6 runs required. And that is a hit from Rauf. Dugout was asking for 6 and the batsman Rauf hit the 6. The huge one from Rauf, the winning shot. And M3 Tigers won the match easily. The next match between EcoFresh and Infotech Qatar. Both teams, please get ready. Premier Technomedia presents the Asian Cricket League 2024 ACL Season 3, sponsored by Justus and Auto. Associate sponsors BK Fright, Marbu Trading, Icon Training Center, Gulf Paint Trading, and Creative Edge. Balls partner Sixer Supremo, media partner Symphony, printing partner Printech, strategic partner Red Apple, support sponsor A Plus Contracting, trophy partner Tandoora King Restaurant, venue partner Absolute Sponsor, star of the day Ibad Sports, and gift partners EcoFresh, Wada Trading, Alnul Training, Food Art Restaurant, Gift Shop, MJ Sports, Motorola, ID Optics, Pranav Sports, Ibad Sports, DY Sports, Calicut Rahmat Restaurant, and Nayab Indian Athar. Thank you for all the sponsors. Premier Technomedia presents the Asian Cricket League Season 3, the last match of the day 1. EcoFresh versus Infotech Qatar.
मैच की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। ये आखिरी मुकाबला होगा आज की रात का, और आखिरी रात का मुकाबला जहाँ पे दो टीमें आमने सामने होंगी और दोनों टीमों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम देंगे। एशियन क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का ये डे 1 और डे 1 का आखिरी मुकाबला जहाँ पे दोनों टीमें आमने सामने आपको देखने को मिलेगी। एक जगह पे है टीम इको फ्रेश और दूसरी जगह इन्फोटेक कतर। ये दोनों टीम आमने सामने। जीशान और समीर ये जोड़ी बीच मैदान के अंदर। तो पहला ओवर लेके अजमल। 6 ओवर का मुकाबला है, आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, ये ध्यान में रखें। और इस मुकाबले की बात करें तो हम फील्डिंग टीम में सबसे अच्छी खिलाड़ी को देखने वाले हैं। यस, मैच की ओर बढ़ेंगे। पहला ओवर लेकर अजमल, सामने जीशान। ओवर नंबर पहला, एशियन क्रिकेट लीग पेविलियन कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के लिए अजमल। पहली गेंद, इस गेंद को सम्मान दिया। काफी अच्छी शुरुआत होती हुई गेंदबाजों की तरफ से। पहली गेंद थोड़ा सा आगे रखा, डॉट बॉल। अजमल सामने जीशान। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी। इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, कलाई के सहारे थोड़ा सा हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेला, सिंगल से अपना और अपने टीम का खाता खोला जीशान ने। समीर ऑन स्ट्राइक। हम देख रहे हैं एक जगह इको फ्रेश और दूसरी जगह इन्फोटेक कतर, ये दोनों टीम ने आमने सामने। शेरिन एंड टीम बहुत अच्छा खेल के उन्होंने पहला मुकाबला जीता है। वेल प्लेड शेरिन भाई। इस बार इस गेंद को अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, व्हाट बैटिंग। जिस प्रकार से गेंद थी, गेंद को परखा और उसके बाद जड़ दिया। पहले देखा और उसके बाद जड़ दिया। 4 रन के लिए चौका आता हुआ। स्कोर मूव्स ऑन 5। समीर गेंद को देखा, फुल टॉस था और उन्हें पता है कि उनके लिए ऑन साइड में काफी सारी फील्डिंग लगाई गई है। उन्होंने देखा कि पॉइंट खाली है और इसी कारण उन्होंने अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक खेला। स्कोर मूव्स ऑन 5। ये ओवर नंबर 1। समीर आते ही अपना खाता खोला 4 के साथ। अजमल फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे। गेंद बल्ले पे आसानी से नहीं आ रही है। पहला रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी और ये 2 रन पूरे कर लेंगे। अच्छे रन बिटवीन द विकेट। स्कोर मूव्स ऑन 7। ओवर नंबर चलता हुआ ये पहला। 7 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर। एशियन क्रिकेट लीग एसीएल कमेटी जिस प्रकार से मेहनत हर साल लेती है, इस साल भी वो कड़ी मेहनत इन्होंने ली और एसीएल 3 का सीजन ये खास होने वाला है क्योंकि पहली बार कतर क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए, मैन ऑफ बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए स्पोर्ट्स बाइक्स जिसका इनॉग्रेशन हमने किया, वो एक सरप्राइज था। ये टूर्नामेंट अनाउंस होने के बाद कहीं पे भी नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ अलग करना है, इसी कारण वो काम किया है। और अच्छी गेंद, इस बार डॉट बॉल। हम ना धन्यवाद देना चाहेंगे जयसल भाई, रमजी भाई, रियाज भाई और पूरी एंटायर टीम जिन्होंने ये सरप्राइज दिया क्योंकि किसी को ये मालूम ही नहीं था कि ये सारे इंडिविजुअल प्राइजेस इस टूर्नामेंट में हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजर हमेशा ही कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। स्कोर मूव्स ऑन 7। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ पे खेला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 8 रन। पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 8 रन। आप देख रहे हैं एशियन क्रिकेट लीग। एक जगह पे हम बात करें इको फ्रेश पहले बल्लेबाजी करती हुई और इन्फोटेक कतर जो फील्डिंग करने वाली टीम, मैन इन ब्लू एंड मैन इन येलो। हम देख रहे हैं इको फ्रेश को। एशियन क्रिकेट लीग के MS धोनी क्रिकेट ये एकेडमी और वहां से सीधा प्रसारण लेके आते हुए एसीएल दोहा कतार यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ श्री लाइव पे आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हो। टोटल 16 टीमें, टोटल 24 टीम्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं।
एक हर टीम को 3-3 मुकाबले मिलने वाले हैं और फिर उसके बाद सुपर 8, सुपर 16, फिर सुपर 8, फिर सेमीज और आखिरी मुकाबला होगा जो फाइनल खेला जाएगा। दिसंबर 3 को फाइनल खेला जाएगा। आखिरी दिन में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद और लेग स्टंप के बाहर, वाइट। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, 9 रन, 1 विकेट, 9 रन, कोई विकेट नहीं। दोनों बल्लेबाज समीर और जीशान अच्छी शुरुआत करते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार यू मिस मी, आई डेफिनेटली हिट यू, और ये पहला झटका लगता हुआ टीम इको फ्रेश को। सिफान आए और सिफान ने इस बार स्टंप को बिखेर दिया। विकेट नंबर ये आता हुआ पहला। समीर की पारी होती हुई समाप्त। समीर की जगह लेने नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर जाएंगे। जीशान जिन्होंने 2 गेंदे के लिए 1 पे खेल रहे हैं। समीर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और विकेट। हमारे कोऑर्डिनेटर और हमारी हॉस्पिटलिटी जिनके नाम पे रहती है हमेशा, रियाज भाई हमारे सामने से गुजरते हुए, एक उनके चेहरे की स्माइल, ये काफ़ी बड़ी स्माइल हम कहते हैं हमेशा। आज थोड़ा सा थके हुए लग रहे हैं क्योंकि पहला दिन है, काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर हमेशा रहता है। अब कमेंट बॉक्स में शैलजार भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। Thank you, Chirag. It's over the midnight here in Qatar. Game number 4 of day number 1, 12:05 AM in Qatar, and the game is continuing at game number 4. As Echo Fresh 9 for 1. Sifan with the ball, as we know, is one of the expensive player during the auction. 1,600 points. Tried to pull, completely beaten. 2 more players share the same points, 1,600, along with Sifan. Is Irfan and Archer, Daniel Archer. So 3 very expensive players. Right in the block hall, on the money. I expect this man to come and ball up front. The big match player, Sifan. He plays for Doha Rockers in Qatar. This time catches the ball. Who wants this? 2 fielders underneath and making no mistake. That's a well-judged catch. In spite of having another player is about to collide, and he's taken its well-judged catch in the mid-wicket region, and another wicket goes. And as we was the field, 10-4-2 now. Echo Fresh is playing against Infotech Qatar. The last match of day number 1. Lost couple of wickets. And jersey number, is it 0-0, Rauf? And Prashant Nair, very popular cricketer in Qatar.
as having a word with his partner there. The right time for someone like Prashant Nair to walk in, especially when they lost 2 quick wickets. He is a kind of player who can really control the innings whenever he comes to bat. An experienced campaigner. He needs to be there. He's up against Sufan. Oh, that's what does is pushes towards the covers and off the mark in style. Yes and no. Finally settled down for a single. Retain the strike for the next over. After the completion of the first 2, Echo Fresh moved to 11 for 2. We saw 2 low scoring games, 48 and 43. And the first game was 85 runs to win. And we are into the second, in fact the last game of the day number 1. We'll have to wait and see what is the kind of score they will be looking at. We've got a strong bowling lineup in the opposition team, as Infotech Qatar had decided to bowl first. And this match is live in YouTube. ACL Doha brings all the live actions from Absolute Sports Ground, Ryan, Qatar. It's one of the biggest tournaments in Qatar, Asian Cricket League Season-3. Premier Techno Media proudly presents another big tournament. 13 days, 24 franchises. Najir into the attack, started with a wide. So more than 900 players have registered in this tournament. There's good connection towards the mid wicket. He finds the fielder just for a single. So big players in the fielding side. Infotech Qatar is one of the expensive players. Sifan right there in the long on region. Big shot. Has he got enough? Got the height. He got the distance. He got everything. It's a good catch there as he dropped. Chirag was the fielder there. Plenty of sixes already. Is going to be 50 plus sixes, Rauf, already in this tournament. Day number 1 produced so many big players. They had to reach for that delivery. Umpire said it's a legal one. That's Prince. Oh, chance for a run out here would have been bang. This time we've gotten in the first attempt. Wicket keeper Faizi. Its total number of sixes, we come to the right number, is 28 sixes so far in this tournament, being the day number 1. Connection, not enough. Edge and taken by Faizi. And Prashant has to work back. And this occasion, he's trying to go for an expensive drive towards offside. Getting an edge at the strategic timeout as well. Echo Fresh just 20 runs on the board. 2.4 overs. You can take a break. Make some new strategies. And the batting team needs to score at least 30 to 40 runs. All the scores, low scores, have been easily chased down in the last 2 matches. I need to get a very good partnership right there in the middle to get into a good score. It's all happening here in Absolute Sports Ground, Ryan, Qatar. MS Dhoni Cricket Academy.
This brings you another big tournament, the Asian Cricket League Season 3. Score at this moment, it is 24-3, 2-0. Having a little bit of break. Request the umpires and captains to have a look at the time taken. It's just 2 minutes. A short break between the innings. Now it's a strategic timeout. Let's continue here. Najir got a big wicket. He'll continue from the pavilion end. Oh, chance. Good fielding there towards the bowling end. Good throw. Sadaka. The new batter joined there in the middle. He has to give a good partnership there. It's good to give a good company out there in the middle for Prince. Prashant is already back in the dugout. Score at this moment is 21-3. 3 overs have been bowled. And as expected, captain brings his strongest weapon. Sifan into second over. All right in the block hole. Just managed to get an edge. Waiting for the umpire's call. Was it played? It's a very good delivery. Still managed to connection towards the mid-wicket, just stealing a single on this occasion. Captain Ajmal has really marshaled his troop, bringing the bowling changes in the right time. And he got one of the best in this tournament with 1,600 points during the auction. Sadak has decided to change his bat. Now let's move on. 23-3. Oh, it's a good lift. Very good shot. Has beaten everyone in the mid-wicket region. It's a 6. Number 29 in this tournament. Sadaka just walked into the middle and played a glorious shot. It's maybe drifting towards his pads and flick of the wrist. Good timing. Sifan has to come back. Oh, this time he played towards offside. He finds the feeder long off, will cut it off, just a single. You have all the best players playing in this tournament from Qatar. They all need to get up tomorrow morning to get ready for the morning matches. Swing and a miss, and it's a dot ball. As expected, the champion bowler to come back very strongly after being hit for a 6. Oh, brilliant. Absolutely brilliant. This is one of the best 6. There's nothing wrong with the delivery. Sifan was just stunned. Just a flick of the wrist, well timed. Very good timing.
And this flew away from this ground. I've seen some very good sixes, but this one is right there in the middle. Score this moment at 36-3 after the completion of 4 overs. 3-6-4-3. 2 more overs. They are looking for another 15-20 runs. Will put them in a good position, very strong position, if they continue with this partnership for the next 10 deliveries. At least quite capable. Prince looks good, and Sadaka has got a very good 6 as well towards the mid wicket now. Over number 5. Good shot, straight to the man, not making any mistake. Just few inches away from the boundary line. He didn't have to move at all. It's a well-judged catch, and Sadaka has to walk back. And Rizvi with safe pair of hand, making no mistake. Fielders there in the region has to be careful, and almost all the shots, majority of them will come to that region. There's a mid-wicket, deep square leg, long on. You have your best fielders there. Yeah, a little bit of cameo comes to an end. Sadaka with that huge 6. 36-4 now. Akhil was the bowler now. It's another good looking shot. Bit of good fielding. Sifan there. As Akhil around the wicket. Oh, that was a full toss. A long full toss. He played well. Oh, missed it. A bit of fumble. It's a powerful shot and dismissed the fielder there. It's all the way to the boundary. It's 41-4. Slowly moving towards the 50 runs mark. It's anything more than 60. They will be in a very strong position. 48 and 43 was quite convincingly chased down in this tournament. Oh, looked like an helicopter, but just not enough. A safe pair of hand again, making no mistake. That's Manzoor. Just losing the wickets in regular interval. Prince was trying to go for a lofted shot. Looks like a helicopter, but just not enough timing on this occasion. And Manzoor finished as a well-judged catch. Losing another wicket, half of the men back in the dugout. For Echo Fresh is struggling, 41-5. Our innings comes to an end. Prince played well, just not enough. I wanted to beat right till end of this innings. (41-5), penultimate over. He comes and wanted to play a big shot. His plays across the line. It was pretty much outside the off stump. Akhil continued to impress. There's 1 over to go after this. Oh, this time not enough timing. Catches the call, 1 bounce. Keeper, that's what he needs to throw. Big on, good throw. Waiting for the umpire's call. Has reached on time. The square leg umpire has said, yes, you have reached on time. After the completion of 5 overs,
It's 43 for 5. I've seen 43 and 48. Last two matches easily chased down. Manzoor has to bowl the last over. Rajmal decided to bring Mansoor, another very good bowler in the side. He needs to restrict the opposition team. It's less than 55 to 60 runs. They have a chance to win. Having seen the last two matches quite convincingly chased down. 43 and 48. It's all up to Ajmal how they need to restrict. Not more than 10 runs in the last over. This is going to be the key. They leak more runs. That's going to be an advantage for the batting team. That's a big shot. That's a biggie. Absolutely punished that. It's taken the aerial route and flourishes with the magnificent 6. First ball. It's a good start for the over. A move to 49. Echo Fresh is looking for a good score. Safwan. Oh, this time it's a good comeback by Manzoor have been hit for the 6. So what Mansoor has to do is very simple. Ball wicket to wicket. Anything which drifts towards the leg side is going to punish. Edge and taken. And as he got, umpire says no. He's shaking his head. Was it one bounce or? It's a good comeback. After being hit for the 6, it's a very good comeback. An experienced campaigner, Mansoor. Full toss, played well. There is the man, and he's not going to make any mistake. And he can just run towards, jog towards the dugout. Another wicket. It was a lawful toss. He wanted to clear the covers. There is a fielder who's waiting for that ball and making no mistake. Still on 49. And the new batter walks in. He is going to face the remaining deliveries in the final over. Another low score game. The team wants to be in the 50 runs desperately. A new man can just go for a single, gets the team into 50. Or is he going to go for a big shot? Echo Fresh is 49 for 6 and 2 deliveries left. As Fairoz walks into the middle. And Manzoor, so far so good in spite of having 1-6. Swing and a miss, and he's just managed to get somewhere in his body. It leaks a single. That's a team 50 for Echo Fresh from 5.5 overs, 54-6. It's one ball to go. If we can just get one out of the park, they'll get into 56. Swing and a miss again. He's going to steal a single. Oh, Mansoor has missed it, and that will give them an extra run. With that, they concluded this innings at 50 plus 2, 52. Oh, that's a big decision from the umpire. That's a wide has been called. That means they need another ball to face. They are on 53 now with that extra. And Sharat. As a review has been given for the wide delivery. Mansoor conceded 10 runs and a wicket in this final over. I will have to come back to you on this, whether it was a legal delivery or no. Just checking on, was it on the line of the wide delivery? It's a
Very, very close call. Was it on the line or just maybe 1 inch inside the white line? That's maybe the call. A third umpire will take it now. Was it a legal delivery? Yes, it's a fair delivery. Yes, it's as the third umpire rightly decided. It's a fair delivery to end this over. It's 50 plus 2, 52 for 6. It was a bias and 2 runs conceded in the last ball of the last over. That means Infotech Qatar needs 53 from the allotted 6 overs while they come out to bat. We'll have the chase very, very soon. Premier Techno Media presents Asian Cricket League Season 3, sponsored by Justus and Otto. This is the last match of day 1. EcoFresh versus Infotech Qatar. EcoFresh scored 52 from 6 overs, the loss of 6 wickets. And the target for Infotech Qatar is 53 from just 36 deliveries. 8.6 is the required target. And for EcoFresh, Prince scored 19. He is the only one with double digit, 19 from 9 deliveries. He hit 2 huge sixes. And Sifan and Akhil took 2 wickets each for Infotech Qatar. It's our pleasure to announce our sponsors for this Premier Techno Media presents Asian Cricket League ACL Season 3, sponsored by Just Us and Otto, and associate sponsors BK Fright, Marbu Trading, Icon Training Center, Gulf Plan Trading, and Creative Edge. Thank you for the sponsors. And this is the last match of day 1. EcoFresh versus Infotech Qatar. EcoFresh scored 52 for 6 in 6 overs. Infotech Qatar required 53 from 36 deliveries. In the inaugural match of Asian Cricket League Season 3, Black Cat CC scored 83 runs in 6 overs with the loss of 4 wickets, and GWC Arrows chased the target by 8 wickets. And in the second match, Walid 11 scored 47 and Udupi Cricketers chased by 6 wickets in 5.2 overs. Please stop practicing in the pitch. കളിക്കാർ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെമ്പിൽ എറിയരുത്. And in the third match, the low score match of day 1, Hanan CC scored 42
in 6 overs, and M3 Tigers chased in 4.2 overs by 8 wickets. And this is the last match of day 1, Ecofresh versus Infotech Qatar. The target for Infotech is 53 from 6 overs. Rizvi and Ajmal are the openers for Infotech Qatar, walking to the crease. Over to the match. Ecofresh versus Infotech Qatar. Infotech required 53 from 6 overs. Rizvi and Ajmal are the openers for Infotech. Rizvi on strike and Ajmal is on non-strike. Bowler Samir from pavilion end, right time around into Rizvi. Full toss delivery, punished it well. Appeal for no ball, but umpire hesitated it. Then the boundary started with boundary, scoreboard open with that boundary, and 4 without loss. Welcome boundary by Rizvi. Samir started with a full toss and Rizvi punished it well. Well piece of bowling by Samir. Batsman tried for reverse, completely beaten. Keeper collected well and back to the bowler. Samir again into Rizvi. Once again, a great piece of bowling. Loud appeal for caught behind. Umpire unmoved.
Super piece of bowling by Samir. There is a slight variation in the bowling. After 3 balls, first over in progress, the power play. Once again, full toss delivery. Tried for a big hit, but he can't connect the ball well. Straight towards the fielder, and he fielded well. One more added. 5 without loss. 2 more balls to go in this first over. Ajmal, left-handed skipper of Infotech Qatar on strike. Samir, right arm around into Ajmal. Straight towards the fine leg. Skipper Ajmal started with a single. Single for Ajmal and 1 for the total. 6 without loss. Last ball of the first over. Samir again to Rizvi. .53 is the target from 6 overs. 6 without loss in the first over. 1 more balls to go. Once again, tried for reverse and superbly bowled by Samir. And after the completion of first over, 6 without loss. For Eco Fresh, there is impact player, Nirban in and Nizam out. Infotech required 47 runs from 5 overs. Second over in progress. Sharath, the new bowler for Eco Fresh. Sharath from Pavilion End into Ajmal. Ajmal, the skipper on strike. Sharath with long run up to Ajmal. Straight towards the bowler. They complete a single. Umpire signals leg by. With that extra, scoreboard moves to 7. Sharath into Rizvi. Outside the leg stump, umpire called wide. 1 more extra added to the total. Total moves to 8. Sharath once again into Rizvi.
tried for a big hit, swing and a miss, but ball went far outside the off stump. Umpire call it's wide. One more extra. One more to total, and total moves to 9. The target for Infotech Qatar is 53 from 6 overs. Now it's 44 from 4.5 overs. Ecos Fresh scored 52. And now Infotech is 9 without loss. Second over in progress. 5 more balls to go. Sharath into Rizvi. Rizvi played superb towards fine leg region. There is no fielder to field the ball. It went to the boundary. Welcome boundary for Rizvi. That second from his blade. Rizvi moves to 9. Total 13 without loss. Sharath again into Rizvi. Rizvi finally he got the line. He played superbly. He reverse swing. And the ball goes to the boundary towards third man region. And the result same, boundary added. Total moves to 17 without loss. In previous overs, we tried 2 times for reverse sweep, but he can't connect the ball. Now he make it. And 13 from 7 balls, Rizvi playing with 3 boundaries. 36 required from 4.3 overs to win the match for Infotech Qatar. Sharath again. Superb hit from Rizvi. A big hit towards the pavilion. Huge hit from Rizvi. And the big 6 from the blade of Rizvi, and total moves to 23. Rizvi on 19 from 8 balls with 3 boundaries and 1 huge 6. Sharath with expensive over. He conceded 16 from 4 balls. 2 more balls to go. Second over in progress. 23 without loss. Sharath again into Rizvi. Once again, a beautiful hit. Maximum from the blade of Rizvi. Consecutive 6s. 25 he scored from just 9 deliveries, and total moves to 29. 1 more balls to go. Last ball of the second over. Sharath conceded 22 runs so far. Wow, what a piece of delivery. It's lawful toss. Batsman completely beaten. Rizvi, the man, scored 25 from just 10 deliveries, and they are in 29. Infotech Qatar 29 without loss. Required 24 from 4 overs. Premier Technomedia presents Asian Cricket League Season 3. This is the 4th match of day 1, the last match. EcoFresh versus Infotech Qatar. EcoFresh scored 52 in 6 overs. And now Infotech required 24 from just 4 overs. Zishan, the new bowler from pavilion end, into skipper Ajmal.
Huge hit from Ajmal straight to hands of fielder. In the long off region, he catches easily. Sadakat, the man who took catch easily. Skipper Ajmal back to pavilion. The new man walked in. Sifan walking to the crease, joining with informed batsman Rizvi. Required 24 from 3.5 overs. In the previous over, Rizvi scored 22. He hit 2 boundaries and 2 sixes. Now Zishan, he took the wicket, he break through. He break the partnership with that. And Zishan now to Sifan. Just push the ball towards long off region and fielder collected it well. Good return to the bowler. Single added. Sifan opened his scoreboard with that single. Total moves to 30 for 1. 2.2 overs, 30. 23 more required from 3.4 overs. 22 balls, 23 required. Zishan into Rizvi. The dangerous Rizvi on strike. Zishan ball superbly. Rizvi just pushed the ball. And very good run between the wickets. There is chance for run out. They completed two runs for Rizvi and 2 to the total. Infotech Qatar moves to 32 for 1. Very good run between the wickets. Rizvi and Sifan. Zishan again into Rizvi. Once again, great piece of bowling. Just edged towards fine leg region. Single to Rizvi and one more to the total. 33 for 1. 2 more balls to go. Zishan into the new batsman, Sifan. Zishan, right time around. Super piece of bowling. Appeal for wide. Umpire gives warning. 1 bounce. Last ball of the second over. 20 required from 19 deliveries to win the match for Infotech Qatar. Zishan again into Sifan. Just push the ball. He tried for a single. There is a chance for run out. Directly hit, but the batsman reached the crease. After completion of 3 overs, 33 for 1. There is a strategic timeout for 2 minutes. Premier Techno Media presents Asian Cricket League Season 3, sponsored by Just Us and Auto. Thank you for the title sponsor. And this is the day 1, the 4th match going on between EcoFresh and Infotech Qatar. Tomorrow we have 4 matches. First match is Orient Tech Kovic CC versus
Flamingos Creative Sports. And the second one, Icon CC vs CP Boys. CCRC Warriors versus Almir CC. And in the last match, Techno Media Strikers versus BT Gang. The match will start by 7 p.m. Orient Tech Kovic CC versus Flamingos. Infotech Qatar won the toss and elected to bowl first. EcoFresh scored 52 in the allocated 6 overs. Now Infotech Qatar required 20 runs in 18 deliveries. Rizvi, the man who scored 28 from just 12 deliveries with 3 boundaries and 2 huge sixes, on the crease now. New bowler Safwan is the new bowler into the dangerous Rizvi. What a piece of bowling by superb bowling. Safwan just missed the ball, inches away from the wicket. Rizvi tried for a big hit but completely beaten. Safwan into Rizvi. Full toss ball, tried for big hit. Single added to the total. Total now 34 for 1. Fourth over in progress. 19 required from just 16 deliveries. Safwan into Sifan. Superb hit by Sifan and the ball goes to straight towards the pavilion. Fielder in the long run region tried for field it, but he can't reach the ball. And it results boundary. Scorecard moves to 38 for 1. 15 required from 15 deliveries. Once again, wow! Superb piece of fielding by Sharath. Sifan tried for reverse, but it's straight to the hands of fielder. Brilliantly collected Sharath. And Sifan back to pavilion. Safwan took the wicket. Mansoor, the tall man walking to the crease, joining with Rizvi. Sifan played superbly, well connected, but the fielder Sharath, he took its brilliant, superb catch by Sharath. And now Safwan into Mansoor, the new man joining with Rizvi. 15 required from 14 balls. Well, piece of bowling, just
push the ball towards long on region and fielder collect it well. Single added, 39 for 2. Safwan into Rizvi, last ball. Just push the ball to cover region and single added. 40 for 2. 13 required from 12 balls. 13 from 2 overs is the target now. Manzoor and Rizvi on strike. Rizvi with 30 from 15 balls. There is some discussion between fielders in the middle. It's a thrilling match. Neck to neck now, 13 from 12. But there is a dangerous man on strike, Rizvi. Now new bowler. Zishan, the new bowler. He is he's with his second over. Rizvi on strike. Zishan, right time around into Rizvi. Once again, he correct. Sweep shot, it connected well, went to fine leg region. There is no fielder in the fine leg. Results boundary and 4 more added to the total 44 for 2. And Rizvi moves to 34 from 16 balls with 4 boundaries and 2 sixes. 9 runs required from just 11 deliveries. Zishan again into left-handed Rizvi. Wow. Great piece of bowling. Swing and a miss. Just a dot ball. 9 from 10. Once again, great piece of bowling by Zishan. It's a bounce ball. Very good comeback by Zishan. 2 dot balls after a boundary. 9 required from 9 balls. Run a ball. Zishan again to Rizvi. Rizvi the ball straight towards hands of fielder. Yes, there is no mistake. He collect the ball well. Prince the man took the catch easily. Rizvi the informed batter back to pavilion. He scored 34 from just 19 deliveries. 9 runs required from 8 balls. The match is going to a thrilling end. Neck-to-neck match now. 9 required from just 8 balls. Infotech Qatar lost his 3rd wicket. The informed batsman, the dangerous man, Rizvi back to pavilion. Mansoor took the catch from the boundary line. Prince took the catch from the boundary. Zishan took his 2nd wicket. Shafiq is the new batter, walking to the crease, joining with Mansoor. 2 more balls to go in this over. 9 runs required to win the match for Infotech Qatar.
Zishan, right time around into Shafiq. 2 to go in this over. There is some fielding changes. Shafiq tried for big hit, but he can't connect the ball. It hit on his leg. And they complete a single. Very good run between the wickets. Umpire result signaled it leg buys. 45 for 3. Just 8 required from 7. Last ball of the 5th over. Zishan into Mansoor. Mansoor hit the ball. It's up in the air straight towards the hands of fielder. Yes. He took it easily. There is no mistake. Mansoor back to pavilion. Raza took the catch easily. And Zishan got his 3rd wicket. Now 8 runs required from last over. Faisal, the new batter, joining with Shafiq. The match is going to a thrilling end. 8 required in 6 balls. Sadakat, the bowler, for Echo Fresh. This is the last over. Eight runs required in last over. Zishan, the man who bowled superbly, only 8 runs he given in 2 overs, and he took 3 brilliant wickets. Now Sadakat, the new man, the new bowler, into Shafiq. 8 required from 6 balls. Anything can happen. 8 runs required. Just 6 balls remain. Shafiq hit the ball straight to hands of fielder. Yes. One more wicket for the team. Echo Fresh. Infotech Qatar struggling. They're losing wickets one by one. Now the big man Shafiq back to pavilion. Sadakat took wicket in first ball. Shaji, the new batter, walking to the crease, joining with Faisal. Now 8 required from just 5 deliveries. Match is moving to an interesting end. It was in the hands of Infotech till the 4 overs. Now the match slowly. The bowlers did superbly. Zishan, the man who took 3 wickets and just gave only 8 runs in 2 overs. With that brilliant performance, Info Qatar now struggling with 45 for 5. Superbly he played towards the square leg region. There is a fielder. Single added to the total, and total moves to 46. 7 from 4. Faisal, the new man on strike. Sadakat into Faisal.
പ്ലെയർ മൂന്നാൾ സർക്കിളിലുണ്ടോ Sadakat into Faisal. Superbly played. The ball goes to the... Yes, the fielder in square leg fielded well. There is a mistake in the wicket keeper. Overthrows the... They completed 3 runs. 3 more added to the total. 4 runs required from 3 balls. Captain, please, not only 1.3 minute, 1.5 minutes remain. There is a penalty if you can't complete in the limited time. One more fielder should go inside the circle. Sadakat into Sajir. Sajir hit the ball straight towards deep extra cover. There is a misfield and they completed 2 runs. Very good run between the wickets. In previous ball they took 3 and now 2 runs. 2 runs required from just 2 deliveries. Interesting match. This is last match of the day 1. Ecofresh versus Infotech Qatar. Sajir on strike. Sadakat into Sajir. Superb piece of batting by Sajir. There's a call for second run, but they can't complete it. There is a run out. 1 run from 1 ball. The scores are level. 1 required and time over. 1 more fielder should go inside the circle. There should be 4 fielders inside the circle. Arshad, the new batter. Last ball, 1 run. Scores are level. Ecofresh 52 for 6 and the Infotech 52 for 6 in 5.5. Last ball of the innings. 1 run required to win the match for Infotech Qatar. It was an easy target, but in the help of Zishan's bowling, Ecofresh back to the match. Now it's a thrilling end. Last ball of this innings. Arshad on strike. Sadakat, the bowler. Faisal on strike now. He misses the ball, just push the ball towards the bowler. There is a chance for a run out. He misses it. And that's an interesting match comes to an end. Infotech Qatar won the match by 4 wickets. Very well played both team. Congratulations Infotech. Hard like Ecofresh.
That's the end of day one, the fourth match over. Infotech Qatar won by 4 wickets.